Chatarpur. Full stop. He prays for time to go through the affidavit. On his request, 7 days time is granted. List thereafter in the week commencing 31 July 2023. No, copy. Number two. Take the way. Chatarpur. Full stop. He prays for time to go through list thereafter. By this petition, the petitioner is challenging the legality and validity of FIR dated 15/6/2021, whereby offence under section 294 and 506 of IPC has been registered against the petitioner. But I challenge the FIR on the ground that the same has been maliciously instituted for taking vengeance from the petitioner. बताइएगा क्या है FIR में? The relevant part is page 22. जी May I read? मैं थाना कोतवाली छिंदवाड़ा उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत हूँ। आज दिनांक 15/6/2021 को नाइट ऑफिसर ड्यूटी के दौरान प्रार्थी देवी सिंह राजपूत पिता स्वर्गीय रतन सिंह राजपूत उम्र सोएनसो निवासी सोएनसो छिंदवाड़ा थाना कोतवाली जिला छिंदवाड़ा द्वारा एक लिखित आवेदन इस आवेदन हृदय श्रीवास्तव के विरुद्ध दिया गया, जो आवेदन पद मजबूर की धारा 294-506 के तहत घटित करना पाए जाने के अपराध से पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। नकल आवेदन पत्र जेल से है। सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय कोतवाली छिंदवाड़ा। विषय हृदय स्वास्थ्य के द्वारा मुझे गंदी गंदी गालियां देने एवं जान से मारने की धमकी देने बाबत महोदय, मैं देवी सिंह राजपूत पिता स्वर्गीय रतन सिंह राजपूत उम्र सोएनसो निवासी सोएनसो हृदय पिछले कुछ वर्षों से जानता हूं। दिनांक 11 जून 2021 को शाम लगभग 5:15 बजे के आसपास हृदय श्रीवास्तव ने उनके मोबाइल नंबर सोएनसो से मेरे मोबाइल नंबर सोएनसो पे फ़ोन करके खजरी चौक LIC हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के सामने रोड पर बुलाया। उस वक्त मैं घर पे था, मुझे लगा कोई काम होगा। मैं घर पर था, मुझे लगा कोई काम होगा। मैं खजरी चौक में लगभग 5:15 बजे 5:45 बजे खजरी चौक पे पहुंचा। रुक जाइए। Who is appearing for respondent number 6? My lord, I am appealing for respondent. हाँ बताइए क्या है ये? I submit that one thing, my lord, before my lord. CCTV footage is there, my lord. And call detail before my lord. Hot talk and गाली गलौज और हाथापाई से रिलेटेड my lord CDR भी है, उनकी बात हुई है। उन्होंने फोन करके बुलाया है at that incident place, my lord. And CD specific इन्होंने अपने SP को इन सबको बाय नेम पार्टी क्यों बना लिया? Because we have alleged malified intention against them, they have formed a cartel. Who are you? जो कि आपके खिलाफ आपके बहुत 8 मुकदमे इनके खिलाफ चल रहे हैं। इनकी वाइफ No, my lord, this is a false statement, my lord. 6 मुकदमे इनकी वाइफ की क्रिमिनल हिस्ट्री है। इनके खिलाफ 8 शिकायतें हैं। We have enclosed the reply. My lord, they have filed certain complaints, my lord. I have filed a rejoinder, my lord, disputing those complaints, my lord, that no such complaint has been is still pending against me, my We lord. got for interim. My lord, what has happened in this? Any charge sheet, my lord. चार्ज शीट में पूरा क्लियर हो जाएगा साहब। मतलब जाके इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया, चार्जशीट फाइल हो जाने दीजिए। मतलब my respectful submission is this, मतलब that अरे आप हैं क्या पिटीशन? ये तो बताइए। I am the मतलब आप क्या हैं? मतलब I am the पब्लिक पर्सनालिटी हैं क्या? मतलब I am the upper division teacher, मतलब I have been Upper division retired मतलब from the post of BRS ले लिया। BRS लिया, that has also been मतलब forcefully मतलब given to me. I'm not dealing with that VRS. I am just pressing this petition on the ground that this FIR has been maliciously instituted. Secondly, that no cognizable offence is made out against the भजन लाल के किस प्रोविजन में आपकी FIR क्वैश होगी? आइए for clause number 3 and 7 पढ़िए 3 and 7 पढ़िए। I am relying two clauses, my lord. First, my please. lord, 4th one, where the allegation in the FIR do not constitute a cognizable offence, but constitute only a non-cognizable offence. भजन लाल ये तो हमारा है कि और भजन लाल कोर्ट किया आपने, ये डिस्मिस किया था। And my lord, I am reading आपने पूरा पढ़ा? भजन लाल नहीं पढ़ा? पहले ये तो बताइए। पढ़ा है सर। उसमें मैं पैराग्राफ नंबर 105 में मतलब जो कैटेगरीज बताई गई हैं उसमें मतलब मैं क्लॉज नंबर 4 and 7 आई एम रिलाइंग क्लॉज नंबर। प्लीज बताइए 4 and 7। 4 में मतलब वेयर द एलिगेशन इन द FIR डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस बट कॉन्स्टिट्यूट ओनली अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नो इन्वेस्टिगेशन इज परमिटेड बाय द पुलिस ऑफिसर विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट एज कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन
155 2 of the code. And my lord, seventh one, where a criminal proceeding is manifestly attended with malafide, or where the proceeding is medically instituted with ulterior motive for wreaking vengeance, my lord. With regard to my lord, fourth clause, my lord, where the when the offense does not constitute a cognizable offense, my lord. My submission is this, my lord, there are two offenses, my lord, 294 and 506. Only 294 is cognizable offense, my lord. And my lord, from plain reading of the FIR, my lord, it can be seen that, my lord, though no offense under section 294 is made out, my lord. अच्छा, पढ़िएगा 294 पढ़िएगा. My lord. जी. To an obscene act and song. Whosoever to announce of others does any obscene act in public place, or sing, recites, or utters any oblique songs, bad words in or near any public place, shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 3 months, or fine, or with both. Malad, I would like to read Hindi version also, Malad. हाँ पढ़िए. हिंदी में क्या हुआ? अंग्रेजी में आपको क्या लगता है हम इंग्लिश समझते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं सर, मैं उसको समझा और नहीं. ऐसा. Language of the High Court is English. ठीक है? So please. And if you have a perception that I do not understand English, then you can take this matter to some other court. No sir, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता. आपके ध्यान में जिसको अंग्रेजी आती है वहाँ ले जाइए. नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं. तो फिर इंग्लिश में ही पढ़िए. जी सर. ये प्रोविजन है सर, तो as per the contents of the FIR, my lord, it was nowhere mentioned that, my lord, I have does any obscene act, or I have signs or recites or utters any obscene songs. ये FIR पढ़िएगा फिर से, उसमें क्या लिखा हुआ है? My lord, page number 18 of the reply in handwritten given by the complainant, my lord. Sir, even there is a delay of 4 days, my lord, in lodging the FIR. That is different. It is a counter blast, my lord. In fact, it is a counter blast, my lord. What has happened, my lord? This private respondent number 8, my lord, has pressurized me, my lord, to get open an RD account in the post office, my lord, so that his wife, my lord, who is an agent on post office, would get commission, my lord. He has लिखा दिया है. My lord, I have mentioned in my writ petition, my lord. अच्छा. In paragraph, my lord, paragraph 5.10, my lord. जी. आपने इनकी वाइफ को पार्टी बनाया है? वाइफ को पार्टी नहीं बनाया सर. जब फिर इन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर लगाया, my lord, then I made a complaint before my disciplinary authority that during official timing, my lord, he is pressurizing me, my lord, or harassing me. On same day, my lord, when the FIR was lodged, my lord, and immediately thereafter, my lord, this impugned FIR has been, or even the alleged incident, my lord, was taken place on. When did he pressurize you to open a RD account in the post office? My lord, the complaint is page 40 P10, my lord, annexure. Page 40 P10. Date क्या है? Date, my lord, 11/6/2021. Same date, my lord, of the alleged incident. इसमें लिखते हैं सर, उपरोक्त विचारासन के अंतर्गत आपसे निवेदन है कि अनावेदक द्वारा जबरन आरडी खाता बनाने दबाव डाला जा रहा है, और यदि आरडी ना बनाई गई तो यह धमकी कारित करता है. कृपया संबंधित के अनावेदक के विरुद्ध कार्रवाई करने का कष्ट करें. साथ ही शाला में निलंबित. लोग पढ़ाते कब थे? उच्च श्रेणी शिक्षक आप लोग पढ़ाते कब थे? पूरा टाइम तो आपका इन्हीं सब चीजों में. Are you teaching in school? I was teaching, my lord. I don't know how you were teaching. पूरा टाइम तो आप लोगों का शिकवा शिकायत में ही है, प्राइवेट काम करने में. Only after this, my lord, this FIR. Now, my lord, I would like to, my lord, point out with regard to section 294, my lord, I am relying upon a judgment of Supreme Court, my lord. जी दीजिए. Recent judgment. जी दीजिए. On section 294, my lord, where the Apex Court has held that, my lord, mere abusive, humiliating, or defamative words, my lord, by itself cannot attract the offense of section 294, my lord. बताइएगा. My lord, I have tagged it the relevant paragraph, my lord. पढ़िएगा. My lord, it is to be noted that the test of obscenity under section 294B of IPC, whether the tendency of matter charged as obscenity is to deprave and corrupt those whose minds are open to such moral influences. The following passage from the judgment authored by Justice K.K. Matthews, as his lordship was reported in P.T. Chaco versus Narayan, explain as follows. The only point argued was that the first accused has not committed any offense punishable under section 294B of IPC by uttering the words above mentioned. The court below has held that the words uttered were obscene and the utterance
caused any annoyance to public. I am not inclined to take this view. In the Queen versus Hink, so and so, let down the test of obscenity in these words. The test of obscenity is this: whether the tendency of matter charged as obscenity is to be depraved and corrupt those whose minds are open to such immoral influences. This test has been uniformly followed in India. The Supreme Court accepted the correctness of the test in Ranjit D. Udesi versus State of Maharashtra, AIR, so and so. In Samuel Roth versus UAE, so and so, Chief Justice Warren said that the test of obscenity is the substantial tendency to corrupt by the arousing lustful desire. Mr. Justice Harlian observed that in order to obscene, the matter must tend to sexually impure thoughts. I do not think that the word utterance in this case have such a tendency. It may be the words and defamatory of the complaint, but I don't think that the words are obscene and the utterance would constitute the offense of Section 294B of IPC. It has to be noted that in the instant case, the absence of word which will involve some lascivious element arousing sexual thoughts or feeling or words can attract the offense of Section 294B. None of record disclosed that the alleged word used by the accused. It may be the only requirement of law to reproduce in all cases the entire obscene words if it's lengthy, but in the instant case, it is hardly anything on record. Mere abusive, humiliative, or defamative words by itself cannot attract an offense under Section 294B of the IPC. To prove the offense under Section 294B of IPC, mere utterance or obscene word are not required to sufficient, but there must be further proof to establish that it was annoyance of other, which is lacking in this case. No one has spoken about the obscene word they felt annoyed, and the absence of legal evidence to show that the words uttered by the applicant accused annoyed others. It cannot be said that the ingredients of Section 294B was made out, my lord. In this case also, my lord, the ingredients of Section 294 is not made out, my lord. Yes, who is appearing for respond number 8? हाँ क्या? इसमें देखेंगे आप ये पेज नंबर 9, इसमें एफआईआर में ही जो है पुरानी बातों को लेकर लास्ट सर एफआईआर में पढ़ेंगे सर लास्ट 4-5 लाइन पुरानी बात को लेकर साले कहा फिर जो है गाली दिया स्पेसिफिक। हाँ सेकंड चीज सर इसके पहले भी इनके खिलाफ जो है क्राइम नंबर 296 2021 में ये प्रेजेंट केस का इंसिडेंट है सर 3/9/2021 का, और इससे पहले भी जो है डेट ऑफ इंसिडेंट ये 11/6/2021 को इन्होंने जो है पिटिशनर नंबर 8 देवी सिंह ने इनके अगेंस्ट जो है एफआईआर कर चुके हैं सर। ये 11/6/21 ही तो चैलेंज है सर इसमें, ये सब्सिक्वेंट 11/6 जी हाँ 11/6 और 11/6 के बाद फिर ये जो है ये काउंटर एफआईआर में दोनों की जी जी और जिसमें इन्होंने जो है स्पेसिफिक जो है वर्ड अटर किया है। Even Section 506 is also, my lord, not made out, my lord. इनका इनकी पत्नी से भी विवाद है ऐसा लगता है। जी हैं? हाँ सही लगा हुआ है ना। In fact, she was my lord earlier a reporter, my lord, in the DD News channel, my lord. And she has my lord exposed certain officials, my lord, who have committed misappropriation and irregularities, my lord. Therefore, they have, my lord, made certain complaints against them, my lord. Those complaints they have filed along with their reply, my lord. And no such complaint is pending, my lord. Okay, My lord. okay, चल।
my lord, further, my lord, the malafide is further seen from the on the part of the respondents, my lord. In fact, my lord, the main purpose of the lodging this FIR, my lord, is to, my lord, to ruin my service career, my lord. आप तो ऑलरेडी वीआरएस ले चुके हैं। मतलब उसके उसमें मैं बताना चाहूंगा साहब कि हमको प्रेशराइज किया गया है, आपने वीआरएस कब लिया? इट हैज बीन मतलब आई फाइल्ड अलोंग विद माय रिजॉइंडर हाँ बताइएगा प्लीज। वीआरएस की ऑन मतलब 24/9/2021 कहाँ है वो वीआरएस? मतलब अलोंग विद माय रिजॉइंडर पेज 15 मतलब। हाँ क्या लिखा है उसमें? मतलब इट हैज बीन सेड दैट आई हैव अप्लाइड फॉर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मतलब बट पिटीशन मतलब इज पेंडिंग चैलेंजिंग दिस ऑर्डर मतलब आई हैव वो तो आपने किसी और पिटीशन में चैलेंज किया मतलब यहाँ तो चैलेंज but नहीं। I have been forced मतलब to apply for the VRS मतलब otherwise threatening issued for मतलब further consequences मतलब what is happened मतलब this FIR was lodged मतलब only with intent to ruin my service career मतलब which is evident from page 44 मतलब after registration of this FIR मतलब 44 of the petition 44 of the writ petition मतलब annexure P12 मतलब after registration of this FIR मतलब the local police has sent a information to the collector Chinwada मतलब and on the basis of that information the collector has placed me under suspension मतलब so this action is मतलब wholly illegal on the part of मतलब admittedly मतलब the collector can place me under suspension मतलब there is no but the conduct of the मतलब prosecution is मतलब totally illegal मतलब only on the basis of complaint information of local police thana मतलब the collector has placed me under suspension मतलब even my disciplinary authority मतलब that is DEO Chinwada मतलब has not taken into confidence मतलब before initiating this step मतलब My lord, P7 kindly see also, sir. Page number 35. Competent authority has suspended also. Before that one. ये तो मतलब प्राइवेट रिस्पोंडेंट नंबर 7 का सस्पेंशन ऑर्डर है मतलब व्हाट इज हैपेंड मतलब इन दिस एलिगेशन लगाए थे वो देखना चाहते ही वाज मतलब अनऑथराइज्डली एब्सेंट मतलब फ्रॉम हिज ड्यूटी मतलब एक सेकंड जी जी R3 में इसी से शिकायत से लेके पूरे समस्त इनके विभाग के कर्मचारियों ने इनके खिलाफ शिकायत की थी पेज नंबर 33 जी रिप्लाई मानो जी पर ये विभाग के कर्मचारियों ने नहीं की सर ये अदर वो है व्हेन माय वाइफ इज मतलब highlighted the मतलब news about the misappropriation of fund मतलब thereafter मतलब ये complete information there is advocate also my law graduate my lord and in ये बीजेसी भी किए हैं इनका पत्रकारिता भी करते हैं और वकालत भी करते हैं आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं my lord so many complaint against the petitioner my lord then और ये इसके खिलाफ तो साहब प्राइमा फेसी there is 4 statement independent witness has been examined sir वो statement is there now with my reply my lord और सीसीटीवी फुटेज भी है साहब इनके खिलाफ और सीडीआर भी है कि इन्होंने फोन करके उसको बुलाया मैंने लगाया रिप्लाई के साथ साथ सर ये जो प्राइमा फेसी तो जांच का विषय साहब सर ये जो स्टेटमेंट्स भी है सर और अगर चार्जशीट में नहीं पाया जाता तो ये चार्ज में फ्री हो जाएंगे चार्ज से my respectful submission मतलब with regard to the statement मतलब as my senior is pointing out मतलब these statements of were मतलब recorded मतलब after a delay of 10 days मतलब and as per the initial version of FIR मतलब nobody has was present मतलब I would like to मतलब give some judgment अभी तक क्या सर कर रहे थे 506 के उसमें सर एक जजमेंट आप दे दीजिए इसका सर पैरा 24 to 27 मतलब फर्दर आई एम रिलाइंग अपॉन मतलब निहारिका मेजर्स निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर्स वो भी दे दीजिए इसका मतलब क्लॉज 2 मतलब wherein Supreme Court held that it is only a case where no cognizable offense or offense of any kind is disclosed in the first information report, the court will not permit an investigation to go on मतलब श्री प्रतीक Ruben, learned counsel for the petitioner. Shri Manas Mani Verma, learned government advocate for state.
Shri Manan Agrawal for respondent number 6. Shri Ashish Tiwari for respondent number 8. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. 9, 10. Okay. This writ petition under Article 226 of the Constitution of India is filed by the petitioner seeking quashing of the FIR dated 15/6/2021, annexure P1, lodged by the private respondent number 8, registering case crime number 296 of 21 under the provisions of section 294 and 506 IPC. Next paragraph. Learned counsel for the petitioner submits that petitioner is an upper division teacher and he is being harassed by the private respondent. He submits that his case squarely falls within subpara 4 and 7 of the decision of Supreme Court in State of Haryana versus State of Haryana and others versus Chaudhary Bhajan Lal and others, AIR 1992 SC 604, full stop. It is submitted that the allegation in the FIR do not constitute a cognizable offense, and secondly, the criminal proceedings are manifestly attended with malafide, full stop. It is submitted that recently Supreme Court in case of N.S. Madana Gopal and another versus K. Lalita, criminal appeal number 1759 of 2022, decided on October 10th, 2022, has pointed out that under what facts and circumstances charges under section 294 within bracket B will be made out, full stop. It is submitted that it is held that charge under section 294 within bracket B of the IPC will be made out when it has the potential to corrupt the minds and are open to such immoral influences, full stop. Similarly, reliance is placed on the judgment of Supreme Court in Vikram Johar versus State of Uttar Pradesh and another, decided on April 26, 2019 in criminal appeal number 759 of 2019, wherein Honorable Supreme Court in para 24 has observed relying on the judgment of another judgment of Supreme Court in Manik Taneja and another versus State of Karnataka and another, within bracket 2015 bracket close 7 SCC 423, that definition of criminal intimidation as given in section 503 IPC it is held that mere allegation that the accused had abused the complainant does not satisfy the ingredients of section 506 IPC. Next paragraph. Similarly, reliance is placed on the judgment of Supreme Court in Messrs. Niharika Infrastructure Private Limited versus State of Maharashtra and others, full stop. Reading from the conclusions, which are by and large the same which have been noted by Honorable Supreme Court in case of Bhajan Lal, it is pointed out that FIR should be quashed because no cognizable offense is made out, full stop. Next paragraph. Shri Manas Mani Verma, learned government advocate, in his turn submits that there is a criminal history of 8 cases against the applicant or petitioner, full stop.
8 There complaints, is my lord. huh? 8 complaints. 8 complaints against the petitioner. Full stop. They are being investigated. There is a telephone record of the petitioner to support the complaint of the petitioner and the complainant to support his contention that he was called over his mobile phone and then called to meet at a particular place. Full stop. Besides this, there are CCTV footage of the Incident place. altercation which took place between the petitioner and the private respondent. Full stop. It is submitted that since this High Court coordinate bench of this High Court state the police authorities to take any coercive action against the petitioner in pursuance to the FIR registered against him, charge sheet could not be filed. Full stop. It is submitted that this investigation in the name of quashing of the charge sheet or interim orders to not to take coercive action is not permissible under law. Full stop. In Niharika Infrastructure Private Limited itself, Honorable Supreme Court has deprecated such practices in the hands of the courts. Full stop. It is submitted that petitioner should not be shy of cooperating with the investigators, and once investigation is complete, then true picture will be out. Full stop. Shri Manan Agarwal submits that there is no mala fide on behalf of the respondent number 6. Full stop. He has been inappropriately impleaded as a party. There are no direct allegations against respondent number 6 in the petitioner. Full stop. Only allegation is that he is misusing the power. But the fact is that petitioner himself is indulging in several other activities other than teaching. Full stop. His wife is a journalist. Petitioner himself indulges in journalism and advocacy as he is possessing degree of law and in journalism. Full stop. When these extracurricular activities which are not permissible under the service jurisprudence are obstructed, then he tries to exert his influence by virtue of his wife being a journalist. Next paragraph. Shri Ashish Tiwari, Learned Counsel for the private respondents number 8, 9 and 10 supports the action of the state and submits that no indulgence is required. It is not for the first time that applicant is has tried to intimidate with the petitioner, but he is in habit of threatening and intimidating parties from time to time. Next paragraph. As far as first submission of the petitioner that no cognizable offence is made out is concerned, that is contrary to the contents of the FIR. Prima facie offence under section 294 within bracket small b bracket close of the IPC is made out. Therefore, the first submission and reliance on the judgment of Supreme Court in N.S. Madana Gopal is misplaced. Facts of that case are different. Similarly, section 506 IPC deals with punishment for criminal intimidation. Full stop. Criminal intimidation is defined in section 503 IPC. Full stop. It provides that within inverted commas, whoever threatens another with any injury to his person, reputation or property, or to the person or reputation of anyone in whom that person is interested with intent to cause alarm to that person or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do, or to omit to do any act which that person is legally entitled to do as the means of avoiding the execution of such act, commits criminal intimidation. Full stop. Thus, when this definition of criminal intimidation as provided under section 503 IPC is examined, then in the present case,
there is not only a threat to extended to the petitioner as is evident from annexure P1, but also he has been asked to not to show indulgence in the matters of one Shri Sanjay Guha, full stop. Thus, prima facie, it cannot be said that ingredients of section 503 IPC are not made out so to constitute an offence punishable under section 506 IPC, full stop. Therefore, this judgment of Supreme Court in Vikram Johar versus the state of Uttar Pradesh and another two has no application. Next para. As far as judgment in case of Bhajan Lal is concerned, first requirement as argued by Shri Pratik Dubey that no cognizable offence is made out is not available. Full stop. As far as para 7 is concerned, comma, it is provided, subpara 7 is concerned, it is provided that where a criminal proceeding is manifestly attended with malafide. Full stop. Next para. The allegation of malafide as made by the petitioner is that respondent number 8 has a agency of post office in the name of his wife. Full stop. Respondent number 8 was pressurizing the petitioner to invest in a recurring deposit account of Indian Post Office. And when the petitioner refused, this FIR came to be lodged. Full stop. However, petitioner has not been able to substantiate that when he has impleaded respondent number 6, Shri Vivek Agrawal, Superintendent of Police, Chhindwara, as a party in his personal capacity, then what is the relationship between the complainant and said Vivek Agrawal, Superintendent of Police, so to bring out the aspect of malafide? Full stop. In absence of there being any material to show correlation or nexus or collusion between the complainant and the Superintendent of Police, prima facie, such bald arguments without backed by any documentary evidence to support that wife of respondent number 1 is a post office agent and she has interest in opening of RD accounts, this court is of the opinion that even plea of malafide is not prima facie established. Therefore, when all these aspects are taken into consideration in the light of the decision of Honorable Supreme Court in Niharika Infrastructure Private Limited Supra, then such kind of interim orders directing the authorities to not to take coercive measures in fact amounts to giving protection to the accused, causing hindrance in the investigation. Full stop. If petitioner has any apprehension or reason to believe that he is innocent, then the remedy to him is available under section 438/439 CRPC. Full stop. It was for the petitioner to have approached the court concerned with an application for bail. Full stop. But petitioner, in place of approaching the concerned court with an application for bail, has stalled the complete procedure of investigation which would have revealed the correctness or otherwise of the allegations, this practice cannot be given a seal of approval. Full stop. Thus, taking overall facts and circumstances of the case, no material is available to show indulgence in the matter of quashing of the FIR when tested in the light of the judgment of Honorable Supreme Court in Bhajan Lal as well as Niharika Infrastructure. Thus, petition fails and is dismissed. Interim order shall stand vacated. All right. Number 3. My lords, in compliance with the last order sheet of this honorable court, my lords, during the course of the day, I shall be filing an affidavit of the concerned officer. Why during the course of the day? क्या order है? Order पढ़िएगा पहले. This petition is pending since 2022.
My lords, the last. You were granted time on 5/7/23. Why reply could not be filed in time? My lords, I had conveyed the OIC that. So let OIC pay cost. लिखिएगा श्री गिरीश श्रीवास्तव, learned counsel for the petitioner. श्री अमित साहनी for respondent number Five. I Five. filed the TNCP layout. हाँ ठीक है, तो respondent number 5. श्री सिद्धार्थ शर्मा for respondent number One more. 1. Full stop. Who is appearing for the state? Shri GP Singh for respondent number 2, 3 and 4. Next. Shri Siddharth Sharma prays for time to file to make compliance of the order dated 5/7/2023. My lords, I'm He also submits praying, that it will be made during the course of the day. my lords, also praying for permission. हाँ ठीक है, ठीक है. परमिशन ले रहे हैं क्या आप? Yes, my lords. तैयार है आपका एफिडेविट? Yes, my lords. अच्छा ठीक है फिर. He is permitted to file the affidavit. दे दीजिएगा परमिशन इनको. It be taken on record. You will like to go through it. Copy तो हम copy नहीं दिए. अच्छा, with a let copy of the affidavit be supplied to the rival parties. List after 7 days. Lordship, respondent number 5 has filed a map, TNCP map. He should also be directed to submit an affidavit in that regard. Covering memo में दे दिया उन्होंने. I'll- उसका affidavit जरूर दे दे Lordship. ठीक है, Your Lordship, I will argue how it is maintainable. ठीक है, ठीक है, ठीक है. List in the week commencing 7 अगस्त 2023. Okay. Serial number 76. No, this is a tender matter. Principally, two issues were raised by us, my lord. That at the time of, नंबर my lords had kept मैंने it. कहा 4 नंबर तो बेल है, बेल में टेंडर कैसे आ गया? नहीं, 76. बेल में भी टेंडर चलने लगा है क्या? हैं? 76. ऑक्शन प्रोसीडिंग्स. चलिए. हाँ. My lord, I have complied the order passed by. I will come to that, lord. I'll respond to that also. Filed the affidavit of the वो managing false director. affidavit हम बताते हैं कैसे. हाँ. सर दो प्रिंसिपल ग्राउंड्स है हमारे. I participated in the tender for the transportation along with the private respondent. Lord, we both submitted the bids. At the stage of evaluation of technical bids, both the tenders were cleared as technically okay. आपने शायद कहा है कि बाद में डॉक्यूमेंट लिए वो हुए उसी एक- केस है क्या? एक ग्राउंड था. तो माय लॉर्ड्स देन डायरेक्टेड देम. Petition में ground नहीं नहीं, है. वो जैसे इसलिए- इन्होंने reply file हाँ, की है. ठीक है, नहीं, ठीक है. जैसे ही इनका रिप्लाई आया ठीक है, ठीक है. तो उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने, जब हमने ऑब्जेक्शन लिया था बिफोर द स्क्रीनिंग कमेटी दैट द प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स बिड इज फेलिंग ऑन दीज पॉइंट्स, सो इन द रिप्लाई दे ब्रॉट द एक्सप्लेनेशन which was submitted by private respondent before screening committee. जी. उस explanation को जब पढ़ते हैं तो हर point पे उन्होंने ये लिखा है कि ये डॉक्यूमेंट संलग्न है, ये डॉक्यूमेंट संलग्न है. तो we then took an नहीं, objection. हमने तो सिर्फ ये कहा था पिछली Yes. बार, अगर ये वही केस है जी. कि आपने जो अपलोड किया था वो फाइल करें. वो उसका पूरा डॉक्यूमेंट फाइल कर दीजिए. फाइल सबको कर पता है कि फाइल कर दी, फाइल कर दिया दी. ना. Now- ठीक है, now- एक हाँ. वहीं से आगे बढ़ेंगे. हाँ तो अब ये देखना है कि जब ऑनलाइन बिड उन्होंने अपलोड की थी, जी. उसके साथ साथ जो दस्तावेज पेश किए थे, उसके अतिरिक्त तो कोई दस्तावेज तो पेश नहीं किए इन्होंने कोई टेक्निकल भी बिड. कोई हाँ, भी. इन्होंने उतना ही सर, देखना अब है. मेरा एक बार सुन लेने विधान, हाँ. मैं क्रोनोलॉजिकली चल रहा हूँ. तो इन्होंने वो फाइल किया अभी आपके ऑर्डर के कंप्लायंस में, वो पूरा कंप्लीट ऑनलाइन बिड. बट जब स्क्रीनिंग कमेटी बैठी थी वो लेटर स्टेज था, तो प्राइवेट रिस्पोंडेंट ने अपना एक्सप्लेनेशन पुटअप किया. वो एक्सप्लेनेशन भी इनके रिप्लाई में लगा है. उसमें हर पॉइंट पे लिखा है कि हम ये डॉक्यूमेंट संलग्न देख कर रहे लेते ना जो डॉक्यूमेंट संलग्न करना हैं. लिखा. नहीं किए, वो डॉक्यूमेंट नहीं अभी आए हैं. अरे भाई वही तो आपका आर्ग्यूमेंट है वो ना. डॉक्यूमेंट फाइल नहीं होगी. वो डॉक्यूमेंट फाइल नहीं हुए. वो मैं वही कह रहा हूँ कि दिस इज द मिस्ट्री मैजिक, कि वो एक्सप्लेनेशन के साथ जो डॉक्यूमेंट है क्या है ये? ये जो रिप्लाई के साथ जो डॉक्यूमेंट्स फाइल किया था, ऐसे वही- एफिडेविट पे देना नहीं चाहिए. वो एफिडेविट पे नहीं, हम बता रहे हैं ना. रिकॉर्ड पे नहीं है पेश कर दीजिए ना. पेश कर दीजिए with affidavit. पेश कर दीजिए. कि ये वो एक्सप्लेनेशन के साथ अटैच हाँ, डॉक्यूमेंट्स. कि इन्होंने एक्सप्लेनेशन के साथ ये दस्तावेज दिए बस- थे, ये दस्तावेज ऑलरेडी अपलोड बस- थे, इनको अभी बाहर हो जाएंगे. हम आई बी आउट कंपैरिजन हो जाएगा, बिकॉज वो एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो समझ में आ रहा है कि नया देखिए डॉक्यूमेंट है. ठीक फाइल. लिखिएगा. ठीक है. हाँ आप तो बड़े कूल काउंसिल हैं. नहीं नहीं, जस्ट इट वाज टॉप ऑफ द लिस्ट. टॉप ऑफ द लिस्ट इसलिए यू आर एक्साइटेड. इनका केस सबसे नीचे लगाना है इस बार. श्री सिद्धार्थ गुलाटी, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर. श्री जीपी सिंह, लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 1 and 2. जी. है 2.
1 and 2. One Next. Petitioner's contention is that though the respondents have filed complete set of the documents which were uploaded by the private respondent, but have not filed set of the documents which were accepted by the evaluation committee while evaluating the technical bid of the petitioner vis-a-vis private respondent. Full stop. It is submitted that if the documents which were given by the private respondent at the time of meeting of the evaluation committee, then it will be comparable. It will be possible for anybody to compare that whether the documents which were supplied at the time before the evaluation committee were the same which were already part of the record which was uploaded by the private respondent while making his bid. Full stop. Shri GP Singh prays for and is granted 7 days time to bring those documents on record along with affidavit of the officer in charge. Full stop. Let the proceedings be completed within 7 days. List on 1 अगस्त 2023. IR में भी IR if any to continue. published. 77. Deepak Tiwari. My lord, I am for respondent number 6, lordship. Petition of copy to be supplied to me, lordship. Lordship, the case is against the inertia of the respondents in filing the challan. And on the last date of hearing, lordships have directed the state to seek instructions so as to what is being done. And I rely on the STSC rules. Just a minute. ये फाइनल रिपोर्ट फाइल हो गई आपकी नहीं हुई? नहीं. हैं? क्यों नहीं हुई? ये FIR है 13/6/2022 की. जी क्या हुआ? क्या लिखा? Accused my lord has absconded. तो उससे क्या हुआ? ऐसा चार्जशीट जो अवेलेबल एक्यूज उसके खिलाफ फाइल होने का प्रावधान नहीं है क्या? खत्म हो गया CRPC में प्रावधान? अमेंड हो गई CRPC. फिर व्हाट इज योर इंटरेस्ट इन नॉट फाइलिंग द फाइनल रिपोर्ट? ये आना चाहेंगे क्या? नहीं, मैं लास्ट के 4 लाइन पढ़िए ना. दौरान विवेचना प्रकरण में आरोपी सतीश शर्मा पिता स्वयं 32 वर्ष राकेश शुक्ला स्वयं निवासी बिजली के विरुद्ध चालान क्रमांक स्वयं 20/23 का तैयार किया गया है, जो आरोपी सतीश शर्मा के अपराध क्रमांक स्वयं में आरोपी फरार होने से उसके चालान बन रहा है. ठीक है, तो नहीं मुद्दे की बात बताइए. क्या फरारी में चालान पेश नहीं होता क्या? हम समझना चाहते हैं भाई. आप 2/6/23 का था. अरे उसके बाद तो 1.5 महीना हो गया. आज 21/7/2023 है. फरारी में चालान पेश होना बंद हो गया क्या? नहीं होता है. फिर इतनी मेहरबान क्यों है पुलिस आप इनके ऊपर? 7 days टाइम टू. जो 7 डेज टाइम. कल चालान पेश करिए, परसों मंडे को रख रहा हूं मैं. My lord, देखिए आपको कॉपी मिल जाएगी. अभी तो सिर्फ हम इतना इंटरेस्टेड है, ये चालान फाइल करें, इनकी पिटीशन खत्म हो जाएगी. my lords, for same crime number, lordship, today itself serial number 97 is pending, lordship. व्हाट इज दैट? For fair investigation, I am for accused, lordship. वो भी साथ में क्लब कर देंगे. लिखिएगा, लिस्ट दिस केस अलोंग विद MCRC नंबर. फेयर इन्वेस्टिगेशन में मजिस्ट्रेट को जाकर बताइए. आप बोले तो उसको अभी डिसाइड कर देते हैं. My lords, but if चालान is WP number 15886/23 within bracket CR राकेश शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ MP. फुल स्टॉप. श्री धीरज तिवारी, सॉरी दोनों धीरज तिवारी हैं. No, lordship. who is junior, who is senior? किसको सीनियर लिखना है? lordship, he I am is Dheeraj senior. Kumar मेरे में Tiwari and I कुमार am only में- Dheeraj. अच्छा, श्री धीरज तिवारी appearing for the petitioner Rakesh Shukla submits that he has filed a petition for fair investigation. Next para. श्री मानस मणि, दोनों अभी डिस्पोज ऑफ कर दे रहा हूँ. मानस मणि वर्मा has produced a communication dated 20/7/2023 sent by the SHO Police Station Bijuri District Anuppur, mentioning therein that during investigation, after investigation, चालान is charge sheet ना?
Charge sheet has been, charge sheet number 122/23 was prepared on 2/6/23 against the accused persons Satish Sharma, son of T.P. Sharma, and Rakesh Shukla, son of Chetani Prasad, both resident of Mines Colony, Bijuri, but since Another crime. but in another crime number 39/23 under section 7 within bracket C bracket close comma 13 within bracket 1 bracket close A comma 13 within bracket 2 bracket close PC Act and section 409 comma 420 467 468 471 120B IPC. Since they are absconding, therefore charge sheet could not be filed in the court. Full stop. Since charge sheet is ready and there is no prohibition from filing the same in the absence of the accused persons if they are absconding, then therefore Shri Manas Mani Verma submits that charge sheet will be filed within 3 working days before the concerned court. In view of the aforesaid undertaking given by Shri Manas Mani Verma, comma, as far as petition filed by Shri Sanjay Mehto is concerned, his grievance stands satiated and no further action is required. Full stop. Therefore, petition is disposed of accordingly. Next para. As far as Shri Dheeraj Tiwari is concerned, comma, since investigation is complete, charge sheet is going to be filed within 3 days, comma, he will have an opportunity to argue before the competent court on the aspect of framing of charge. Full stop. Therefore, at this stage, no indulgence can be shown to give directions for any further investigation or fair investigation. That will be within the domain of the concerned magistrate in terms of the provisions contained in section 173 within bracket 8 CRPC. ठीक है ना? My And lords, therefore, this petition too is disposed of. my lords, my grievance is that lordship, no investigation is हाँ, ठीक ever done, lordship. वो वहां जाके मालूम पड़ेगा आपको. Lordship, if challan is filed without investigation, lordship, then it will be prejudice to the हाँ accused. मजिस्ट्रेट को बोलिएगा ना, मजिस्ट्रेट को सारे अधिकार है, इसीलिए 173(8) लिखा दिया. वही होता है ना, 173(8) में ही है ना, लिखाइएगा. So, my lords will not give direction for filing of challan, lordship, for नहीं, वो तो डायरेक्शन देंगे. आप फरार रहेंगे, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद कर रहे हैं. आपका कंडक्ट नहीं लिखा है, आपको इस बात से खुश होना चाहिए. Criminal case of Rakesh. उसमें और लिख लीजिएगा, श्री Lord, Manas Mani Verma informs that there is criminal history of 7 cases against the petitioner Rakesh Shukla lordship, and but is not cooperating with the IO and is absconding. चलिए. Lordship, liberty may be reserved to me in case they do not हाँ comply ठीक with. है, वो तो है ही, अंडरस्टूड है वो तो. Lordship. You always have a liberty to come back. हाँ दोनों. In fact, if I may submit, the other MCRC which has been attached, in that also the Rakesh Shukla was the party. MCRC So, कौन सी अटैच हुई है? the other that is there in the cause list, Lordship mentioned MCRC. In that also Rakesh Shukla is a party number 2. And Unlisted- therefore the WP unlisted would be नहीं- not maintainable. Eh? Because that was filed on earlier occasion seeking coasment, the 2022 Lordship. 38630. Yes, Lordship. In वो this आज one, लिस्टेड है क्या आज? no, no. In this one, the देखिए एक सेकंड. श्री धीरज कुमार तिवारी submits that in fact WP 15886 of 23 is not maintainable in as much as earlier petitioner Shri Rakesh Shukla had filed MCRC 38630/22 under section 480. उनका कंटेंशन लिख रहे हैं, आपको उसको डिसाइड थोड़ा ना कर रहे हैं. The thing which is not in my cause list, how can I decide it? क्या हुआ? 482 for quashing of the FIR now on the same grounds and seeking almost identical relief of further investigation, comma, petition is since disposed of on the statements given by the learned government advocate, even MCRC 38630 of 22 stands infructuous, full stop. However, since MCRC 38630 of 22 is not listed today, registry is directed to place a copy of the order being passed today
in WP 16598/23 bracket में CR and WP 15886/23 bracket में CR in the said MCRC for decision by the appropriate court wherever that said MCRC is listed. चलिए. Chaliye, obliged lordship. 157. Please, your lordship. जी. But before I address on the arguments, I'll just point out one thing. The private respondent, though he has been made a party, he has not been served. Notices have been issued twice. The state has filed a reply. They have Notices have been issued to him. Yes, my lord. Notices क्या have. है कि इनकी जमीन के ऊपर कुछ बना रहे हैं हाँ, आप? टावर का इशू है. The state सर्व नहीं हुए नोटिस. notice serve. I can हमदस्त कर दीजिए और क्या है. एक बार और कर देते हैं. देखिएगा श्री सौरभ सुंदर learned counsel for the petitioner, Shri Manas Mani Verma for respondent number 1, 2 and 3. Full stop. It is pointed out that notices sent for service on respondent number 4 are not being returned or returned with any report to show as to whether service is made or not. They have been returned unserved. Full stop. Petitioner is permitted to take fresh steps to serve the respondent number 4 through the process of district court Satna Manoj. as well as through Hamdast mode. Full stop. Let steps be taken within 7 days, returnable in 3 weeks, list in the week commencing 21 August 2023. Manoj, the interim order passed. Interim order, if any, to continue. More than obliged, Manoj. Number 4. कितनी सारी हैं? चलने दो, देखेंगे शाम को कितने बजे देंगे. 4 बजे से डाल दो. Number 4. Lordship, in this case, report is awaited, Lordship. Report of Special, there is a direction by this honorable court. Affidavit of official director is filed, madam. हाँ, क्या एफिडेविट फाइल किया आपने? Lordship, my submission that एक not मिनट रुक जाए, 1 मिनट. There is 2 reports, my lord. One is the biology report on submitted to the SP on 8/7/2022, my lord. And physics report after examination has been sent to SPCO on 27/4/23. हाँ. Both are, my lord, presented before the learned trial court. This is the one. वो डायरी में नहीं था साहब, इसलिए आपको थोड़ा सा न्यायालय में प्रस्तुत करने का दिनांक लिखा था उसमें. तो दोनों रिपोर्ट तो आ गई, फिर ट्रायल कोर्ट ने क्यों लिखा कि ये ट्रायल कोर्ट पढ़ नहीं रहा क्या? 27/4/23 वो उसके बाद आई साहब. एक सेकंड, ये ऑर्डर कब किस तारीख का है? ये यूडी कब की है इनकी? कोर्ट ने कब लिख के दिया था? Last date of hearing, my lord, है. देखने जरा कहाँ से आया है ये, कहाँ से आया है ये? शीट में आया था सर, ये ऑर्डर. ये हमारी ऑर्डर शीट में तो आया है. हाँ नहीं, पर इन्होंने जो फाइल की उसमें लिखा था सर. किस पेज पे लिखा, वही तो पूछ रहा हूँ मैं. पेज नंबर 18, my lord. 13/4/23 13/4/23 प्रकरण में जब सुलह 13/4/23 की ऑर्डर शीट. हाँ, पेज नंबर 18 पे साहब. पेज नंबर 18. प्रकरण में जब सुधा मुद्देमाल जमा नहीं, पुनः थाना प्रभारी इच्छावर को पत्र प्रेषित कर मुद्देमाल जमा करवाया जाए. मुद्देमाल जमा होने पर साक्षियों को पूर्व आदेशानुसार आहूत किया जाए. हाँ, एफएसएल रिपोर्ट की बात कहाँ से आई? प्रकरण के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रभारी अधिकारी पुलिस थाना इच्छावर द्वारा प्रकरण में जब सुधा मुद्देमाल प्रदर्श सी एवं प्रदर्श एफ जो कि एफएसएल सागर परीक्षण हेतु भेजा गया था, जो आज दिनांक तक न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही उक्त मुद्देमाल की जांच. इसके बाद साहब आपने थोड़ा सा लिखिए. In compliance of the order of this court dated 11/7/2023,
Shri Manasmani Verma has submitted a communication from the SHO Ichhawar District Sihor pointing out that FSL report in case crime number 455/21 was produced before the court concerned on 15/5/2023. Another report was filed on 26/7/2022. And prior to that, another report was filed on 26/7/2022. Therefore, it is evident that now there is no hindrance for the trial court to conclude the trial. Trial court is directed to conclude the trial within 3 months of receipt of certified copy of the order, without affording any adjournment to any of the parties. But sir, my submission is that Any undue adjournment. तो मेरा निवेदन था इसको पास ओवर कर दें. My senior will. अरे आप चौबे जी पर्याप्त सीनियर हैं, कोई सर, फर्क नहीं पड़ेगा इसमें. सर मेरा निवेदन ये है, बेल है सर, और इसमें रिपोर्ट के लिए था, तो माय सीनियर रिपोर्ट आप उनको बता दीजिएगा, उनको कुछ और कहना हो तो आके बता दें आपके सीनियर. ठीक है, तो इसको होना यही है. सर पास ओवर राउंड है जैसे लॉर्डशिप, बिकॉज़ 3 महीने का समय दे दिया, 3 महीने में ट्रायल कंक्लूड करने का बोल दिया. चलिए नेक्स्ट केस. पॉजिटिव आई है. हाँ ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दिस. सर बिकॉज ऑफ दैट सर मेरा छोटा सा अरे भाई वो आ जाए, लंच के बाद आ जाए, बता दें मेरे को. ठीक है, कोई चेंज सर्कमस्टांस होगा तो सुन लेंगे. जी. My lord, this is second bail application, lordship. हाँ. First bail was withdrawn, lordship. हाँ. And I am on the ground of lordship, date of arrest, lordship, that is changes circumstances, that date of arrest is lordship 28/10/2020, and lordship offences are under section 294, 323, 506, 326 है बस. 326 of IPC, lordship. हाँ. And there are 3 accused, lordship. किया क्या है? Lordship, allegations against me is that lordship, I assaulted Chandrika Mishra on head with tangi, lordship. चंद्रिका मिश्रा. Yes, lordship. And lordship, there are 3 accused, and lordship 2 has been already granted bail, lordship. Therefore, I am. चंद्रिका मिश्रा एग्जामिन हो गई? अभी नहीं हैं? चंद्रिका मिश्रा, वो शीतेंद्र मिश्रा एग्जामिन हुए. हाँ, क्या कहा उन्होंने? शीलेंद्र मिश्रा एग्जामिन हुए. क्या कहा उन्होंने? उन्होंने सपोर्ट किया प्रोसिक्यूशन. एक सेकंड. आपका जो अर्लियर ऑर्डर था उसमें एक सेकंड. पेज 36 पे है लड़से. तो ये तो सुजीत शीलेंद्र मिश्रा तो आई विटनेस ही नहीं है, इनको एग्जामिन होने का कोई मतलब नहीं है. इंजर्ड लड़से चंद्रिका है. चंद्रिका है. चंद्रिका मिश्रा. क्या है मेडिकल रिपोर्ट चंद्रिका मिश्रा की? मेडिकल रिपोर्ट में एक्चुअल लड़से सिटी स्कैन रिपोर्ट से तो लीनियर फ्रैक्चर है लड़से. लीनियर फ्रैक्चर राइट फ्रंटल बोन. हाँ. और डिस्प्लेस द. आपने क्यों नहीं एग्जामिन करा रहे अभी तक इंजर्ड को? साल भर तो हो गया इनको कस्टडी में, ऑलमोस्ट 10 months. Why injured is not being produced in the court of law? Yes, lord. बताइए ना थोड़ा सा. The present applicant assaulted by Tangi or head. Assaulted. तो विक्टिम को एग्जामिन कराइए, इसको 15 दिन बाद रखते हैं. विक्टिम को एग्जामिन कर, विक्टिम के स्टेटमेंट्स पेश करिए. श्री धीरज तिवारी प्रेस फॉर टाइम टू प्रोड्यूस स्टेटमेंट्स ऑफ द विक्टिम इन द कोर्ट बिफोर दिस कोर्ट. On his request, list this case in the week commencing 14 अगस्त 2023. विक्टिम के स्टेटमेंट ले आओ भाई. Lordship, I am praying for passover. अरे आप अच्छी बहस तो करते हो, उसमें पास ओवर क्या होगा? Lordship, I have to bring certain judgments, lordship. अरे जजमेंट. Lordship, POXO matter I have to bring judgment, हाँ lordship. हाँ बताओ. 3 month की आपने वो दिया सर. ट्रायल का देखते हैं इसमें क्या स्टेटस रिपोर्ट आई है. ये है लड़शिप ऑर्डर है 2 नवंबर 2022.
धनात्मक मतलब पॉजिटिव। Positive. Yes, Lord. DNA और FSL Lordship, I have to bring that judgment, ले Lordship. आओ, ले आना। सुन लीजिए, सिर्फ 3 विटनेसेस बचे हैं, चिकित्सक एवं विवेचक के कथन होना शेष है। ये 8/7 की रिपोर्ट है। 30 दिन में बोलते हैं ट्रायल पूरा करने के लिए, खत्म हो गई, 31 अगस्त तक ट्रायल पूरा हो जाएगा। 9 witnesses in exam. हाँ, दे भी एग्जाम आ गया ना, ये आ गई, रिपोर्ट आ गई है, वो भी ठीक है ना। लिखिएगा, श्री धीरज तिवारी फॉर द एप्लीकेंट रामचरण अहिरवार। Status report received from the Court of Learned Third Additional Session Judge District Seor is available on record. Full stop. As per this report dated 8/7/23, only 3 prosecution witnesses, namely the doctor and the IO, are left to be examined. Full stop. It is mentioned that the DNA report is positive. Full stop. Let these witnesses be examined and trial be concluded within on or before 31st August 2023. Full stop. Shri Dheeraj Tiwari for the present prays for withdrawal of the application. However, he will be free to renew the prayer if trial is not completed on or before 31st August 2023. Number 7, TNP Tripathi. काइंडली पास हो। हाँ? क्या पास ओवर, क्या मैटर है बताइए ना। लॉर्डशिप एंगेज काउंसिल चलेगी अदर कोर्ट में तो पास ओवर रखिए। Number 8. क्या मैटर है ये? सर एक्सपर्टी अवार्ड पास हुआ था, उसको सर्टिफाइड कराने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, दैट हैज बीन डिसमिस अगेन दिस आई विजय कॉलेज। और इसके साथ सर इन्होंने कुछ पॉलिसी पेश की है, पॉलिसी का नंबर ही नहीं समझ में आता। इंटरनल पेज नंबर 25। आप ओनर ड्राइवर हैं, आपका कहना है गाड़ी इंश्योर्ड थी, कहाँ है पॉलिसी आपकी एनेक्सर? ये क्लेमेंट है, हम इंश्योरेंस। अच्छा, आप दोनों एक तरफ हैं। पिटिशनर के वकील आए नहीं है, अपीलेंट के वकील आए नहीं है, वो ओनर है। हाँ, कौन सी पॉलिसी लगाई उन्होंने? इंश्योरेंस कंपनी को एक्सोनरेट किया है इसमें? हाँ, क्योंकि जो एप्लीकेशन लगाई थी पॉलिसी ने पेश की, एनेक्सर A4 देखेंगे। एक तो है जो 23/1/2009 9/13 सेटिसाइड करने का रिजेक्ट किया है। हाँ, पॉलिसी कौन सी है? एक उन्होंने लगाई A4। हाँ, देखिए अब ये है 23/1/8 से 22/1/2009 तक। डेट ऑफ एक्सीडेंट है 30/10/2009। कब का है एक्सीडेंट? 30/10/2009। 30/10/2009। हाँ, तो ये पॉलिसी तो नहीं आती है। अब नेक्स्ट उन्होंने एक और लगाई है, उसकी कॉपी देखेंगे आप? हाँ, तेईस 1/9 से 22/1/10 तक। उसका नंबर वगैरह तो कुछ भी प्रमोद कुमार पांडे, ये ऊपर दिया हुआ है ना पॉलिसी नंबर, लिखिए। सर जो कॉपी सप्लाई की है, अरे ठीक है, हमारे पास की कॉपी में बेहतर है। 450401 लिखिए ना आप उसका नंबर। सॉरी 450402 /31 /01 है कि 07 है? 01 है शायद। नहीं 08 लिखा है। 08 तो नहीं है, वो तो या तो 1 है या 7 है। सर उन्होंने जो मेमो ऑफ अपील में लिखा है 08, चलिए 08 /02 /00005602 5602। इसको वेरीफाई करा लीजिए। इसको वेरीफाई करो। नंबर लिख लिया आपने? जो उन्होंने एप्लीकेशन में दिए वो नंबर ये है। वही नंबर है ना ये? हाँ, तो आप ऑर्डर में लिखा दें, हम इस नंबर की पॉलिसी बता दें। क्योंकि इनमें जो क्लेम पिटीशन फाइल की है उसमें दूसरा नंबर है और कोई नंबर। छोड़िए ना, अब तो ये तो देख लीजिए गाड़ी इंश्योर्ड थी कि नहीं थी। ठीक है, तो हम तो सिर्फ ये पॉलिसी बुला सकते हैं। MP 17B6926 से एक्सीडेंट हुआ? नहीं पता लगा। नहीं, इससे एक्सीडेंट इसी से हुआ है, गाड़ी से। हाँ, लिखिएगा। श्री नन फॉर द अपीलेंट, श्री राकेश जैन श्री आलोक तिवारी फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1, श्री राकेश जैन फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 2। Next, Sri Rakesh Jain prays for time to call for the record of the insurance policy bearing number 450
402 402 oblique 31 oblique 08 oblique 02। वो 08 गलत है, वो 07 आएगा, इसलिए क्योंकि दोनों की ब्रांच एक ही है, दोनों एक ही ब्रांच से जारी हुई है पॉलिसी, इसलिए वो 07 होगा। वो फेड हो गया है। ऑब्लिक 02 07 ऑब्लिक 02 ऑब्लिक 00 00 5602 5602 full stop. They will also be able to correlate from the earlier policy bearing number 450402 oblique 31 oblique 07 oblique 02 oblique 00005754, which was valid from 23/1/2008 to 22/1/2009. Full stop. Let this verification in relation to the two policies. उसके कंटिन्यूशन में मालूम पड़ जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा सर। ये कहाँ का है, हनुमान मंदिर कहाँ का है? रीवा। Be verified within 7 days, 15 days, बहुत 15 दिन, नेक्स्ट वर्क पे लगा। अच्छा, within 30 days, list on 29 अगस्त 2023। Number 9, Rajmani Sharma. Shri K. Gautam for the appellant, Shri ब्रिजमोहन प्रसाद लॉर्ड ब्रिजमोहन प्रसाद, praise for, आप मधु प्रसाद के ब्रदर हैं क्या? लॉर्ड Praise for withdrawal of this appeal. Appeal is dismissed as withdrawn. स्टे में काइंडली वेकेट लॉर्ड Stay if shall stand vacant. Number 10, Priyank Khandelwal. Listed first time. हैं? It is listed first time. Record में 2018 के बाद जी issue notice to the respondents on IA 4709 of 2018 on payment of PF within 7 days, returnable 4 weeks, delay condonation as well as on admission. ठीक है ना? Call for the record, list this appeal along with the record. Number 11, BBC Raj. सिर्फ इसमें भी नोटिस होना। क्या मैटर क्या है? P9 is the impugn order, lordship. क्या है P9 देखिए, पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 लॉर्ड। जी, इसमें सबसे लास्ट में जाएंगे लॉर्डशिप, पेज नंबर 49 में। एक सेकंड जी ट्रस्ट का मैटर है जी। इसमें जो सेकंड अपील डिसाइड हुई थी लॉर्डशिप, उसमें उसके आधार पे नाम इंटर करना था। हमारा सिर्फ इतना ऑब्जेक्शन है, इसमें जो नाम एक इंटर किया गया है राम मिलन तिवारी, वहाँ सही है, ये पुत्र है, और राजकुमार ये बहन का हस्बैंड है लॉर्डशिप, और सुशील कुमार, विजय कुमार ये लड़के हैं, इनका सही नाम इंटर हुआ है। ये हस्बैंड का जो नाम इंटर हुआ है ये गलत है लॉर्डशिप। इसकी जगह किसका नाम होना चाहिए था? ये बच्चों का सही है लॉर्डशिप, वहां तक ये हस्बैंड का जो हुआ। Who are you? आप कौन हैं? petitioner lordship राम मिलन, राम चंद्रकांत मिलन। Are you one of the trustees of the trust? लॉर्डशिप वही नाम इंटर करने के लिए लॉर्डशिप इसके सेकंड अपील का ऑर्डर देख लें लॉर्डशिप। P1 to the issue notice to the respondents on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. हाईली Number 12, निवेश। एक सेकंड आइए राय साहब, एक सेकंड, उसको डायरेक्शन देते हैं अनुभागीय अधिकारी को कि सेकंड अपील की कंप्लायंस में उसको करेक्ट करें। ये सही रहेगा। किया तो है लॉर्डशिप, लेकिन ये जो नाम इंटर कर दिया है क्योंकि इसमें हिंदू सक्सेशन के तहत नहीं आता है नाम, इसमें 6 सेकंड अपील का ऑर्डर दिखाइए। P1 क्या कहा है इन्होंने? पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 से तो शुरू हो रहा है जी, ये लास्ट में, सबसे लास्ट में। पेज नंबर 20 में लॉर्डशिप। हाँ, पैरा Already 14। appeal succeeded and
The judgment and decree of the two courts below are hereby set aside. The suit of the plaintiff is hereby decreed. In part, it is hereby declared that plaintiff number 1 and 2, namely Srimati Godavari Bai and Ram Milan, are entitled to be appointed as trustees of Sri Ram Chandraji Mandir, village Itna, Sihora, district Jabalpur, on account of inheritance. Looking to the fact. आप राम मिलन जी गोदावरी बाई का नाम गोदावरी एक्सपायर हो गई लॉर्ड एलार्स आ गए साहब उनके एलार्स में उनके बच्चे आ गए हैं उनका हस्बैंड है ठीक है तो बच्चों तक तो सही है लॉर्डशिप लेकिन हस्बैंड का petitioner's contention is that petitioner is aggrieved of order dated 24/6/2019 passed by sub-divisional officer within bracket revenue bracket close and registrar public trust Bahuri Band district Katni in revenue case number 1705/B 121/2018-19 full stop. It is submitted that this order is passed in compliance of the orders of this High Court in second appeal number 915 of 2006, which was decided by a coordinate bench on 12/2/2009. SLP is also It is directed that in the second appeal, comma, the High Court had set aside the judgment and decree of the two courts below and decreed the suit in part, declaring thereby that plaintiff number 1 and 2, namely Srimati Godavari Bai and Ram Milan, are entitled to be appointed as trustees of Sri Ramchandraji Temple of Village Simrapati, Tehsil Sihora, District Jabalpur, on account of inheritance. Full stop. It is submitted that this order was challenged in the civil appeal number 6218 of 2013, but that appeal came to be dismissed by order dated 26/7/2016. Next paragraph. Thereafter, in the meanwhile, Godavari Bai died. Her legal heirs are to be included. Full stop. Next paragraph. Petitioner has objection to inclusion of name of Shri Rajkumar Tiwari, son of Shri Nirmal Prasad, as he is son-in-law of late Srimati Godavari Bai. Full stop. He is not a class 1 heir of husband of Godavari Bai, थोड़ा ना son-in-law of Godavari Bai. नहीं ये Husband of Godavari Bai. राजकुमार तिवारी is the husband of ये हस्बैंड है लॉर्डशिप 3 नंबर और 4 नंबर जो है लॉर्डशिप ये लड़के हैं गोदावरी बाई का हस्बैंड है ये राजकुमार तिवारी जी राजकुमार अच्छा क्या ही इज हस्बैंड ऑफ गोदावरी बाई whereas सुशील कुमार एंड विजय कुमार आर सन्स ऑफ गोदावरी बाई फुल स्टॉप दीजिएगा हिंदू सक्सेशन एक्ट दीजिएगा पति इंक्लूडेड नहीं है क्या नहीं लॉर्ड में 663 खा में है लॉर्ड पूर्व शेड्यूल में बता रहे हैं ना हिंदू सक्सेशन एक्ट के जी हिंदू उत्तराधिकार 56 धारा 6 की 3 की सब क्लॉज खा में है पूर्व मृत पुत्र या पूर्व मृत एक मिनट रुक जाइए वहां नहीं ये है क्या लिखा full stop husband कर लिया था correct full stop it is submitted that in terms of the provisions contained in section 6 within bracket 3 another bracket small b of the Hindu Succession Act 1956 comma the share of daughter is allotted to a son A sorry B नहीं A है ना daughter is allotted the same share as is allotted sorry B में the share 3B में the share of the predeceased son or a predeceased daughter as they have got had they been alive at the time of partition
shall be allotted to the surviving child of such predeceased son or of such predeceased daughter. Full stop. There is no provision for any share to the husband. Full stop. Therefore, inclusion of name of Sri Rajkumar Tiwari is contrary to the provisions contained in Section 6(3)(b) of the Hindu Succession Act, and therefore the subdivisional officer be directed to correct the said mistake. Next para. Shri Manaswani Verma, learned government advocate, submits that since the pleadings are purely legal and based on the interpretation of a statutory provision contained in the Hindu Succession Act, this petition can be disposed of accordingly. Next, after hearing learned counsel for the parties and going through the record, since there is no dispute to the fact that Rajkumar Tiwari is husband of Godavari Bai and he is not a legal heir entitled to succeed to the estate of Godavari Bai, and in fact her sons Sushil Kumar and Vijay Kumar are entitled to succeed to her estate, name of Rajkumar Tiwari be deleted by the subdivisional officer after giving him an opportunity of hearing. Let this exercise be completed within 30 days of receipt of certified copy of the order being passed today. In above terms, petition is disposed of. Number 12. लैंड एक्विजिशन लैंड एक्विजिशन इसमें भूमि जल शासन जल संसाधन विभाग द्वारा बलुआ सिंचाई बांध हेतु अर्जित की गई थी महिला 4.60 हेक्टेयर। क्या है P1? क्या है P1? मैं चैलेंजिंग ऑर्डर महिला अवार्ड है नहीं, कमिश्नर के यहाँ हमने रिव्यू लगाया था। किस चीज का रिव्यू? इसमें महिला ये मुआवजा के लिए लगाया था मैंने, जिसमें कि P2 देखें महिला पैरा 5 और 6 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण यहीं से पढ़ रहे हैं पेज 16 पे जी। पैरा 5 हाँ। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का परिशीलन किया गया, जिसमें पाया जाता है कि अपीलार्थी के स्वामित्व की भूमि जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित बलुआ सिंचाई बांध के निर्माण हेतु वर्ष 1985-86 में अर्जित की गई थी। आपसी सहमति के आधार पर तत्समय की तत्कालीन दर पर प्रतिकर निर्धारित कर उन्हें भुगतान किया गया था एवं 1.51 एकड़ भूमियों का तत्कालिक दर इतना रुपए प्रतिफल दिया जाना शेष बताया गया और करीब 30 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद कीमतों में कई गुना वृद्धि हो जाने से उतनी ही क्षेत्रफल की अन्य शासकीय भूमि का विनिमय शासन पक्ष के लिए अलाभकारी होगा, जिससे अर्जित भूमि के बदले शासकीय भूमि दिया जाना संभव नहीं है। पैरा 6 देखने वाला कलेक्टर सिंगरौली ने notice to the respondents to show cause that इसमें कलेक्टर ने हर जगह कई ऑर्डर किए हैं, जिसमें कि बोला है कि आप जमीन इनको रिलीज कर दी, लेकिन जल संसाधन विभाग के ये रिस्पॉन्डेंट नंबर 6 कलेक्टर कई जगह डिनाई ऑर्डर बता दीजिए। कलेक्टर का ऑर्डर P4 जी P4 पेज नंबर 31 का लास्ट पैरा देखे वाला जी। क्या लिखा? That while land in lieu of in exchange of the land which was acquired from the petitioner measuring 1.51 A for construction of Balua Sichai Bandh in the year 1985-86 is not being given, or in lieu thereof, why compensation has not been paid till date. Full stop. Let notice be made. PF be paid within 7 days. Returnable 4 weeks. Notice is waived. PF हटा दीजिए. Notice is waived by Shri Manaswani Verma, learned government advocate for state. Let reply be filed under the personal affidavit of the collector Singrauli within 4 weeks. List in the week commencing 28 अगस्त 2023.
issue notice on delay condonation as well as on admission, call for the record. मैंने थोड़ा सा एडमिट हुआ है कि उसमें एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स चालू हो गई है। क्या कर सकते हैं? आपने डिले से क्यों फाइल करी अपील? अपील बिगड़ डिले कंडोन हुए मैं नहीं करूंगा, इंटेलिजेंस नहीं दिखाऊंगा। चलिए, या तो आप ये कहिए आप पूरा पैसा जमा कराने को तैयार हैं, ठीक है, तो फिर अब नोटिस जाने दीजिए, फिर देखेंगे। Matter relates with, my lord, that Sahara Cooperative Society, which petitions have been disposed of, my lord. Same order. Yes. P8. There is some development, my lord. The one writ petition is pending, my lord, in respect of Sahara before Honorable Supreme Court. In that writ petition, my lord, the Union of India has filed an IA for requesting to transfer 5,000 crore rupees from the SEBI account to the cooperative register so that amount may be disbursed to the legitimate depositors. बस इतना ये लिख के ये ऑब्जर्व कर देते हैं। नहीं, उसके बाद सर ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है ट्रांसफर करने के लिए। हाँ, ट्रांसफर करने के लिए तो इनको कह देते हैं कोऑपरेटिव सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को जाके रिप्रेजेंटेशन दे। उसके बाद सर फिर क्या है कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के सुपरविजन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए एक पोर्टल, स्पेशल पोर्टल बना है फॉर टू रिफंड द अमाउंट टू द लेजिटिमेट एक्सपेक्टेड। तो ये वो जो है उस पोर्टल में दे में अप्लाई with all the documents and within 15 days it will be conceived. Shri Saket Anand Tiwari, President Counsel for the petitioner. Shri Pushpendra Yadav, Learned Deputy Solicitor General for Union of India. Next, this writ petition is filed by the petitioner claiming that he had made certain deposits with Sahara India Parivar, that is respondent number 5 and 6, but those amounts have not been refunded to the petitioner. Full stop. Next para. It is submitted that appropriate directions be issued for refund of said amount. Next para. Shri Pushpendra Yadav, Learned Deputy Solicitor General, in his turn submits that Supreme Court of India in civil appellate jurisdiction wide order dated March 29, 2023 has decided WP within bracket C, has decided IA number 56308 of 23 in WP within bracket C bracket close NO dot 191 of 2022 Pinak Pani Mohanty versus Union of India and others, and has accepted the request of the Union of India, Ministry of Corporation for appropriate directions to transfer an appropriate amount out of unutilized funds lying in Sahara-SEBI refund account to be disbursed against the legitimate dues of depositors of Sahara Group cooperative societies. Full stop. It is submitted that in compliance of the said order, petitioner is required to fill his details on the online portal created for this purpose through the Ministry of Cooperation वेबसाइट HTTPS, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, बिल्कुल सही लिखिएगा, ठीक है, https://cooperation.gov.in, and if petitioner files his application and grievance on the said portal, then decision will be communicated via SMS/portal within further 15 days of filing of online claim. Full stop. Thus, it is submitted that petitioner be advised to fill his to submit his online application on the aforesaid portal, and thereafter the application shall be processed by the concerned committee which is working
under the monitoring of filing a retired Supreme Court judge. Full stop. Next para. In view of such submissions made by Shri Pushpendra Yadav, petitioner's counsel prays for withdrawal of this petition with liberty to avail remedy of furnishing his details on the so-called on the said portal in compliance of the orders of the Honorable Supreme Court, and if he fails to elicit any response from the said portal within 45 days from today, then he will be free to make a prayer for revival of this writ petition. In above terms, petition is disposed of. इनको सर सारे डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट नंबर आधार कार्ड सब लिंक करना वो तो सब इनको एवरीथिंग भी मैंने तो पोर्टल में खुद ही दिया हुआ क्या क्या भरना है सब ये क्या इनसे भरवाना है क्या अच्छा नहीं मदद चाहिए तो बताओ वैसा करवा देते हैं कॉपी देनी In this case, petitioners were running the Lok Seva Kendra. They have been granted tender for a period of 3 years. Your Lordship, on expiry of the period of 3 years, petitioner submitted presentation before the collector. Public Villa E-Governance Society, Riva, Madhya Pradesh, for being permitted him to further run the Lok Seva Kendra for a period of 6 months. कलेक्टर को बोल देते डिसाइड करेगा आपका रिप्रेजेंटेशन लिखिएगा श्री दिलीप कुमार पांडे दिलीप कुमार पांडे learned counsel for the petitioner. Petitioner's only grievance is that petitioner was allotted a Lok Seva Kendra. He was successfully running the same. They are. Sorry, so petitioners were allotted for the They were successfully running the Lok Seva Kendra, but due to intervening COVID pandemic, they could not run it successfully, though they have paid the license fees, etc. in time. And due to closure of Saturday, also state government has declared a holiday of Saturday. And they ठीक उससे क्या फर्क पड़ता है? Full stop. It is submitted that he has made petitioners have made an application to the collector Riva and the secretary E-Governance Society Riva to extend the period of operation on account of the intervening events like COVID-19 and declaration of Saturday as a public holiday in the government offices by the state government of MP. His representation annexure P8 be directed to be considered by the said respondent number 4. Without commenting 15 din, this court has not expressed any opinion on the merits. The petitioner is a child care home duly registered under the provisions of section 34(1) of the Juvenile Justice Act. And it is maintaining as many as 5 children, and it is operating since 2012. Now, here, the conduct of the entire petition. Conduct of that has been observed, there are various forums, which you respect. फाइल हो गया हाँ हो गया है हो गया अच्छा जी नाम नहीं आया अभी भी आपका कॉज लिस्ट में नहीं रिस्पोंडेंट साइड में शो हो रहा है समदर्शी तिवारी I am for petitioners. गलत फाइल होगा उसमें एंटर ज्यादा गलत होगा I am for the petitioners, there may be some mistake, on the issue part of the notice to the respondents on payment of PF per registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. May link it with WP number 2929/23. लिख के दे दीजिए list along with चलिए much obliged. 17 Talent Circle. बीमा कंपनी को जब इन्वेस्ट कर दिया लगा आप क्या हैं ओनर है मोटरसाइकिल के ओनर जी बताइए पैरा पैरा 28 2 नंबर पढ़िए प्लीज
अनावेदक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से आधार लिया है कि दुर्घटना दिनांक को मोटरसाइकिल MS 27 125 का चालन कर रहे अनावेदक विजय के पास वाहन चलाने की बेनकाबूती नहीं थी। बस बता दीजिए, इतना इतना बता दीजिए। आपका ड्राइविंग लाइसेंस इज एग्जिबिट। हाँ, मैं एग्जिबिट P1 P2 अपील के साथ पेश किया हूँ लड़के। और ये ओरिजिनल जी सर, ये ओरिजिनल भी है लड़को। एक मिनट बता दे बस। हाँ। प्यारा 31 देख लें कि जो इनने पॉलिसी थी वो पॉलिसी दे दी, नहीं दी, क्योंकि जो पॉलिसी है वो एलिजिबल नहीं है। और फाइंडिंग ये आई है, नहीं पॉलिसी बता देंगे आप। हाँ, पॉलिसी दे दो हमें, हम वेरीफाई करा पॉलिसी लाइसेंस तो वेरीफाई करा लीजिए। वेरीफाई करा लेते, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिएगा, तो दोनों चीज दे दें। श्री साकल्य लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट, श्री राकेश जैन फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 2 न्यू इंडिया इंश्योरेंस का 2, श्री मेरी हाजिरी भी लगा दो। हैं? मेरी हाजिरी भी 2 नंबर की तरफ से वकालतनामा पेश क्या हुआ सर, 17 में हमारा वकालतनामा लगा, उसके पहले डिसमिस हो गई, तो उसका फिर डिसमिस हो गई, उसका फिर जब रेस्टोर हुई तो हो सकता है इनका वकालतनामा। ठीक है। श्री सोहाने फॉर रिस्पोंड, श्री सोहाने एंड श्री इनका राकेश जैन, श्री Sakalye has handed over copy of original policy in regard to the offending vehicle, photocopy of the original policy and driving license. and the driving license. Shri Rakesh Jain prays for and is granted 30 days time to seek verification of these two documents list in the week commencing 28 अगस्त 2023। साढ़े 3 से लेना है या 22 केस नहीं होनी, 4 बजे से हो नहीं पाएंगे। चला दो बोर्ड जी। In this case, my corporation filed the appeal on the ground of wrongly exonerated the insurance company of lordship. आपकी बस इंश्योर्ड थी? बस इंश्योर्ड नहीं थी लॉर्डशिप। हमारा ये कहना है कि जो रजिस्टर्ड ओनर है which is liable, I am only ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। जी, जी, बस हाँ। आपके पास अनुबंधित थी तो आप लायबल है। जी जी नहीं सर, ये जजमेंट आपका है, इसमें रजिस्टर्ड ओनर की लायबिलिटी है। Who is the तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का केस है। ये केस दूसरा है भाई। बस आपके पास अनुबंधित, आपके एमपीएसआरटीसी जी 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 हाँ, आपके अनुबंध में चल रही थी ना? जी 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 तो उसका दूसरा जजमेंट है हमारा। आप लाए क्या? राजस्थान वाला 90 जिसका अनुबंध है उसके उसकी लायबिलिटी आएगी। जी, इन 2 केसेस में। Learned tribunal has also relied upon these judgments. ड्राइवर किसका था? ड्राइवर का आप ही का था ना? फिर जजमेंट से स्क्वायरली कवर्ड है। सर हमारी जो एग्रीमेंट था उसमें भी ये 14 नंबर क्लास देखें, लॉर्डशिप ने क्लियरली मेंशन कि एनी लायबिलिटी इन रिगार्डिंग टू कंपनसेशन और एनी टाइप ऑफ लॉस ऑफ द आपके अनुबंध में होगा, लेकिन इसका क्या करेंगे? इस केस में इंश्योरेंस था नहीं था राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट में? नहीं, उसमें भी नहीं। राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट में नहीं था लॉर्डशिप, लेकिन उस पर रिलाई करते हुए जो सेकंड जजमेंट है नेशनल लॉर्ड से दीपा देवी, उसमें था लॉर्डशिप। इसी जजमेंट को रिलाई करते हुए लॉर्डशिप।
चलिए इसके बाद क्या बचता है? देखिएगा, दिस अपील इज फाइल्ड बाय द मध्य प्रदेश रोड। अच्छा, इसमें कनेक्टेड अपील किस चीज की है? मतलब इन्हेंसमेंट की। हाँ, these appeals, ऐसा लिखिएगा, these appeals are filed respectively by Madhya Pradesh Road Transport Corporation and the claimants being aggrieved of award dated 5/9/2014 passed by learned 7th Additional Motor Accident Claims Tribunal, Bhopal in MCC number 1094 बटे 2008 on the ground that on different grounds, full stop. Next paragraph. MP SRTC has taken a ground that the bus in question was insured with Bajaj Alliance General Insurance Company Limited, and therefore the onus was on the owner driver of the bus to have and the insurer to have paid the compensation. Full stop. It is submitted that there is a clause in agreement. इसको कहाँ डिस्कस किया गया है? एग्रीमेंट में अगर है, अनुबंध में है कि लाइबिलिटी होगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ डिस्कस किया है? Lordship, here also, Lordship, in this case of Rajasthan State Road Transportation, Lordship, the conditions agreement is mentioned in paragraph number 15, Lordship. 15. Lordship. And And before tribunal, Lordship, also, Lordship, he is not. that the corporation shall appoint the conductor for the operation of bus given on a contract. Tickets will be supplied. The driver of the bus shall follow all the instructions on accident of the bus taking place. The owner of the bus shall be liable for the loss, damages and the क्या लिखा? Agreement which provides that liability will be lease agreement dated 8/6/2005 executed between the Madhya Pradesh State Road Transport Corporation and the owner of the bus, fastening liability on the owner of the bus, but in violation of the agreement, terms and conditions of the agreement, impugned award is passed by the learned tribunal, which is liable to be set aside. Next paragraph. Learned counsel for the claimant's appellant submits that accident had taken place on 20/4/2008 when Deepak Parashar died in the accident. Full stop. कितनी इनकम मानी है? 3,000 रुपए। 3,000 रुपए। A tribunal has considered income of the deceased at rupees 3,000 per month. Whereas minimum wages even for an unskilled laborer on the date of the accident was to the tune of rupees 3,195 per month. Thereafter, future prospects, etc., are to be added, and then computation of compensation is to be made. क्या काम करता था ये? अरे ट्रैक्टर कंपनी में सेल्समैन था, तो उसको ऐसा कर दीजिए, फॉर मिनिमम वेजेस फॉर अ स्किल्ड लेबरर वर टू द ट्यून ऑफ रुपीज 3,495 as he was working as a salesman in the tractor company, and therefore compensation should have been accorded accordingly. Next paragraph. After hearing Shri T.S. Lamba, learned counsel for the insurance company, places reliance on the judgment of Supreme Court in Rajasthan State Road Transport Corporation versus Kailash Nath Kothari and others within bracket 1997 bracket close 7 SCC 481, wherein the Supreme Court has held that the definition of owner includes the
hirer of the bus, namely SRTC, which was plying the bus under an agreement on route for which permit was granted in favor of SRTC. Full stop. Reading from para 15, it is submitted that similar condition was available in the agreement between Rajasthan State Road Transport Corporation and the owner, as has been extracted in para 15, but overruling the condition in the agreement, Supreme Court has held that the definition of owner given under section 2 within bracket 19 bracket close of the act is not exhaustive. Therefore, it is to be construed in a wider sense, and the expression owner must include, comma, in a given case, comma, the person who has the actual possession and control of the vehicle and under whose directions and commands the driver is obliged to operate the bus. Full stop. Similarly, reliance is placed on the judgment of Supreme Court in National Insurance Company Limited versus Deepa Devi and others, 2008 का 1 SCC 414. Full stop. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, comma, it is evident that as far as MPR क्या है? MP Road Transport Corporation is concerned, appeal filed by them with seeking to transfer the liability on the owner insurer is not made out in the light of the decisions of Supreme Court in case of Rajasthan State Road Transport Corporation and National Insurance Company Limited Supra. Next para. As far as, therefore, the appeal filed by MPSRTC fails and is dismissed. Next, as far as appeal filed by the claimant is concerned, comma, tribunal has considered, calculator दीजिएगा, income of the deceased at rupees 4,500 तो किया है इसमें सिर्फ has considered the income of the deceased, वो income को ऊपर वो income का हटा दीजिएगा, ये minimum wages वाला हटा दीजिएगा, at rupees 4,500 per month. Full stop. It has made deduction towards 1/3 deductions towards the living expenses of the deceased. Full stop. But it has not added future prospects. Full stop. Deceased was working in a tractor company. कौन सी ट्रैक्टर कंपनी? Farmtech tractor company. Was working in a farm tech company. इसमें क्या इनकम सर्टिफिकेट लगाया क्या उसका? सर उसमें सर्टिफिकेट पेश हैं? हाँ, ये प्रमाण पत्र पर उसके हस्ताक्षर नहीं है, सील भी नहीं लगी। प्रमाण पत्र पेश किया था लेकिन हस्ताक्षर रसीद नहीं है। कौन सा है एग्जिबिट? एग्जिबिट 59 पैरा नंबर 17 है? पैरा नंबर 17 क्या लिखा है? सदस्य P9 का प्रमाण जारी करने वाले गोल्डी खुराना का कहना है कि मैं तक को जानता था, वो उसके एजेंट का काम कर रहा था, वह उसे प्रतिमाह 8,000 रुपए देता था, उसके पास लिखा पड़ी वेतन संबंधी है, वह शिवा ट्रैक्टर अधिकृत में मैनेजर है, कर्मचारी से ट्रैक्टर पार्ट्स गांव सप्लाई करता है। उसने मृतक को वो वेतन के संबंध में प्रमाण पत्र दिया है जो सही है, उस प्रमाण पत्र पर उसके हस्ताक्षर में सील भी लगी है। P9 देखो तो फिर इसको कुछ नहीं, though there is a income certificate produced by Shri Goldie Khurana, but same
has been disbelieved by the tribunal on account of proper authorization in favor of Goldie Khurana by the Shiv Tractor Company, authorizing him to issue said certificate. Therefore, when income of the disease after deductions, annual dependency of the family is taken at rupees 36,000, then 50% is to be added towards the future prospects. And then when multiplier of 17 is applied, total pecuniary compensation will come out to rupees 9,18,000, over and above which claimants are entitled to a sum of rupees 70,000 under the head of loss of estate, last rights and loss of consortium. Full stop. Besides this, claimant number 2, Kumari Sambhavi, is entitled to a sum of rupees 40,000 under the head of loss of parental consortium. Thus, total compensation admissible in favor of the claimants will come out to rupees 10,28,000 in place of rupees 6,87,000 awarded by learned claims tribunal. Thus, there shall be an enhancement to the tune of rupees 3,41,000, which will be admissible in favor of the claimants. This amount shall remain invested. ऊपर दीजिएगा. और रिपोर्ट फीस कितनी दी है आपने अपनी अपील में? कोर्ट फीस सर इसमें 1200 रुपये दी है। फिर बाकी कोर्ट फीस दे दीजिए शाम को 4:30 के पहले। जी जी ये तो 50,000 रुपये एनहेंसमेंट पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका। 12,000 रुपये दी हुई है भाई? नहीं, 1240 दिए, 40 रुपये दिए मात्र। 1200 दिए। इसमें तो आपके फ्लूड लगा हुआ उसके ऊपर। नहीं सर, 40 रुपये मात्र कोर्ट फीस दी है आपने वकील साहब। रिसीविंग है। कहाँ है दिखाइए। 1160 रुपये बाद में। आपको कहाँ है वो कोर्ट फीस? किस फॉर्म में फाइल की है? डिजिटल तो रिसिप्ट है नहीं, कहाँ है ये? टिकट होंगी सब लगी हुई। टिकट्स नहीं लगी हुई है, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं बार बार। चेक कर लेता हूँ। देखिए इसमें कोई टिकट मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। देखिए आपको दिखाई दे? नहीं नहीं, अगर टिकट्स नहीं है तो इट्स अ सीरियस मैटर। नहीं, हाँ जी, ऐसे कवरिंग मेमो से थोड़ा ना हो जाता है वकील साहब। बी फाइल में हाँ लगी है क्या? है देखिएगा। श्री दीपक, क्या शुभ नाम है आपका? शिव कुमार शर्मा सबमिट्स दैट ही हैड पेड कोर्ट फीस ऑफ रुपीज 1160। लगी है? जी लगी है तो छोड़िए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, 1160 रुपये लगी है, छोड़ दीजिए। हैं? बाकी फीस दे दीजिए। करवा दीजिए, चलिए। इन above terms appeals are disposed of. चलिए। Other terms of the other terms of the award shall remain same. Okay. Record be sent back. LCR be sent back. Also, 98. Petitioner has filed a change of counsel application. Heard on IA 6147 of 23, an application for change of counsel. Same is allowed. श्री आपका शुभ नाम बताइए? जितेंद्र विश्वकर्मा। जितेंद्र विश्वकर्मा। सितेंद्र yes sir. Sitendra Kumar Vishwakarma is permitted to argue this case on behalf of the petitioners. Full stop. Petitioner. Record आ गया इसमें आपका? नहीं मंगाया। Shri Manasmani Verma is directed to call for the record from the concerned competent authority within 4 weeks, list thereafter.
concerned competent authority, namely additional collector, Jabalpur. Let's say according to the claim petition, deceased was traveling on tractor. क्लेमेंट के लिए आई एम फॉर क्लेमेंट. हाँ ठीक. कहाँ है ये? Para 2 of the award list. जी. आवेदकगण का आवेदन इस प्रकार है कि घटना दिनांक 16 को दरमानी रात्रि 16 के मध्य भूपेंद्र और विष्णु मेहरा उसके साहू वाले खेत जो बसूरी हमारा पे स्थित है पर ट्रैक्टर क्रमांक 16 से खेत की जुताई करने गया था तथा जैसे ही खेत के अंदर पहुंचा कि ट्रैक्टर चालक आवेदक क्रमांक 1 रजनीश और राजू सैन ने उक्त ट्रैक्टर से गिर गया. उससे गिर गया. अब फाइंडिंग उन्होंने ये दे दी कि ट्रैक्टर ने टक्कर मारी. FIR कहाँ है? FIR देखते हैं सर. FIR है एग्जिबिट Actually, FIR and work considered right from para 11 to 13 of the judgment. क्या लिखा है उसमें? मैं FIR तो पढ़ते हैं ना. इस प्रकार की दिनांक 28 को लक्ष्मी प्रसाद मेहरा ने सूचना दिया कि उसके साहू वाले खेत बसूरिया रोड इसमें वो उसका लड़का भूपेंद्र मेहरा 20 वर्ष का राजू सैन के जॉन डियर ट्रैक्टर से जुताई कराते समय ट्रैक्टर के पोस्ट वेटर में फंसकर खत्म हो गया है. मौके पर पहुंच मर्ग क्रमांक कायम कर जांच पंचनामा की गई. जांच कथन व PM के आधार पर जूनियर ट्रैक्टर के चालक रजनीश और राजू सैन निवासी लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाने से भूपेंद्र के रोटर चेस्टर में फंस जाने से आई चोटों के कारण खत्म हो जाने के कारण उक्त ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध धारा का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. स्थल निरीक्षण किया गया. ट्रैक्टर में बैठा था. ये कहाँ आया है? एक तो सब क्लेम पिटीशन में कहा है. क्लेम पिटीशन में तो para 12 जजमेंट दी. एक मिनट रुक जाइए. मर्ग इंटीमेशन. मर्ग इंटीमेशन तो ये पढ़ ली अभी. हाँ फिर FIR पढ़ते हैं. ये फाइनल रिपोर्ट है. सॉरी ये FIR है. FIR पढ़ते हैं. FIR में क्या लिखा है? मैं चौकी साला स्वयं में पदस्थ हूँ. आज दिनांक इतने की चौकी प्रभारी द्वारा स्वयं भेजा गया लाकर पेश करता हूँ. मैं थाना गाड़ाबाड़ की पुलिस चौकी पदस्थ हूँ. जांच किया लक्ष्मी प्रसाद मेहरा, दिनेश मेहरा, मुकेश उर्फ बालकिशन मेहरा, कमलेश स्वयं के कथनों मृतक भूपेंद्र उर्फ विष्णु केशव पंचनामा रिपोर्ट से पाया गया कि घटना दिनांक 27-28 की दरमियानी रात इसमें आया तो FIR में ट्रैक्टर में बैठा भूपेंद्र उर्फ विष्णु मेहरा रोड वेटर में फंस गया. आया तो ट्रैक्टर में बैठा FIR में. कोई भी चीज आगे या पीछे लगी यदि उसके ऊपर कोई गिरेगा तो ट्रैक्टर के ऊपर से गिरेगा. सामने से जंप टक्कर लगने से तो नहीं होगा. तो इसमें लिखा हुआ है FIR में. आपको तो क्लेम मिलेगा ही. ओनर ड्राइवर से रिकवरी होगी. para 12 ऑफ द जजमेंट. आप पढ़िएगा para 12. ये कंसीडर किया है कोर्ट ने. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी की ओर से आवेदक लक्ष्मी प्रसाद आवेदक 1 के प्रति परीक्षण में यह भी कहा गया है कि प्रदर्श P2 की रिपोर्ट में उल्लेखित है कि मृतक भूपेंद्र ट्रैक्टर में बैठा था, जिसे साक्षी ने अस्वीकार किया है. प्रदर्श P2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में ट्रैक्टर पर बैठे होने का उल्लेख है, किंतु यह रिपोर्ट लक्ष्मी प्रसाद आवेदक 1 के द्वारा नहीं लिखाई गई है, जो कि पिता है उसका. इस साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है, बल्कि लक्ष्मी प्रसाद ने प्रदर्श P4 का मर्ग इंटीमेशन तथा प्रदर्श P5 पर देहाती मर्ग दर्ज कराया है, जिसमें ट्रैक्टर में बैठे का उल्लेख नहीं है. कहाँ है लक्ष्मी प्रसाद मेहरा का कथन? चलिए लेट अस सी दैट स्टेटमेंट. लक्ष्मी प्रसाद एविडेंस स्टेटमेंट कहाँ है लक्ष्मी प्रसाद का? स्टेटमेंट क्रिमिनल केस के रिकॉर्ड के साथ लगाओ. वही तो पढ़ रहे हैं.
स्टेटमेंट तो लगा ही नहीं लक्ष्मी प्रसाद का इसमें। पुलिस वाला एफआईआर में लिख रहा है कि जांच किया लक्ष्मी प्रसाद मेहरा, दिनेश मेहरा, मुकेश उर्फ बालकिशन मेहरा, कमलेश मिर्धा, नीलेश लोधी के कथनों कार्रवाई तो पाया गया कि घटना दिनांक को भूपेंद्र उर्फ विष्णु मेहरा अपने साहू वाले खेत बसूरिया रोड अमाडा से ट्रैक्टर जॉन डियर क्रमांक इतने से रोड बेटर से ढुलाई करने गया था। खेत में ट्रैक्टर चालक रजनीश लापरवाही चला रहा था, जिससे ट्रैक्टर में बैठा भूपेंद्र उर्फ विष्णु मेहरा रोडर वेटर में फंस गया। मेरे पास तो ये जजमेंट था, जजमेंट देके बताया। जजमेंट से थोड़ा कुछ होगा भाई। देखिएगा, दिस appeal is filed by the insurance company being aggrieved of the award dated 22/2/2018 passed by learned second additional motor accident claims tribunal Gadarwara district Narsinghpur in claim case number 90 of 2015, whereby overlooking the contents of the FIR, wherein it is specifically mentioned that deceased was traveling on the tractor and due to fall from the tractor died, overlooking this vital piece of evidence and which has been narrated by the learned tribunal in para 2 of the award also, has not exonerated the insurance company, full stop. It is submitted that sitting capacity of tractor is only one person, full stop. Tractor is registered where only driver can sit. Nobody else is permitted to sit. Deceased was admitted in itna. Insurance company cannot be held liable as tractor was being driven in violation of the terms and conditions of the registration and insurance, full stop. ये जजमेंट ये रख लीजिएगा, ये वाला लिख के इनको वापस कर दीजिए, इतना ही। Thus it is submitted that the liability should have been that of the owner driver and not of the insurance company. Next para. Shri Rajesh Subodh Kathal in his turn submits that in para 12 of the award, the tribunal has discussed that Lakshmi Prasad in cross-examination has denied the fact that that deceased Bhupendra was sitting on the tractor or he is the author of the FIR. However, when it is mentioned in the FIR, then onus was on the claimants to have called for the officer who recorded the FIR exhibit P2 to rebut the contention that the FIR was not recorded in terms of the statements given by Lakshmi Prasad, full stop. सर इजाजत है ये? हाँ सर इसमें FIR उसके द्वारा नहीं लिखाई गई है पैरा 12 में। हाँ, ये वही लिख रहा हूँ, full stop. However, the fact of the matter is that no such attempts were made by said Lakshmi Kant to deny recording of FIR at his instance, full stop. However, it is evident that the FIR, typed copy of the FIR as is available on record and which was recorded on 3/12/2015 contains same signatures as are available on the Merg Intimation Exhibit P4. Therefore, contention of
Shri Lakshmi Prasad that he is not the author of the FIR is not made out, full stop. In view of such facts and non-examination of the author officer in charge of the police station who had recorded the FIR, namely Shri Pal, Sub-Inspector Pal, the submission, the tribunal erred in accepting the submission of Lakshmi, क्या नाम था उसका, लक्ष्मी जो भी लक्ष्मी लक्ष्मी प्रसाद, without there being a cogent evidence to this effect. Full stop. FIR being the document available on record on which reliance is placed by the claimants as well as the respondents, could not have been read in part so to belie the statements, belie the fact mentioned in the FIR. Therefore, once it has come on record that deceased died due to fall from the tractor, impugned award needs to be modified. Insurance company is exonerated. It is directed to pay the compensation and recover it from the owner driver of the offending tractor. And above terms, appeal is disposed of. सर इसमें वो क्रॉस अपील और थी हमारी, उसको आपकी क्रॉस अपील भी है? इसमें सर आईए नंबर है हमारा 9270, नहीं सॉरी, आईए नंबर है उसका 5821। 5821 क्या है, किस ग्राउंड पर आए हैं? सर इतना है कि थोड़ा अवार्ड हमारा एनहांस किया जाए। किस ग्राउंड पर बताइए? असेसमेंट ऑफ द इनकम कितना है, लोअर साइड कितनी इनकम मानी है ट्राइब्यूनल ने? सर 3000 जी, 3000 रुपए पैरा पैरा 9 ये पैरा 25 तो पैरा 29 में 6325 रुपए। पैरा 29 में 29 प्रकरण में निर्भरता थी कि मृतक के पास कृषि भूमि होने के पैरा 29 पेज नंबर 49 है आपका। 6325 रुपए। जी जी। एक्सीडेंट किस तारीख का है? 2015 का है ना जी? एक्सीडेंट किस तारीख का है? एक्सीडेंट 28/11/15 28/11/15 28/11/15 की रात। देख लेते हैं कितना था 28/11/15। ठीक तो मानी है इनकम, 6325 रुपए सही मानी है। और फिर इसमें मल्टीप्लायर अडॉप्टेड बाय द ट्रिब्यूनल। एक सेकंड एक मिनट रुक गया, मल्टीप्लायर गलत है, ठीक है देख रहे हैं। 13 का लगा है, 13 का 30 में 50 40 क्रॉस ऑब्जेक्शन लिख लीजिएगा। आईए नंबर इतना है, आईए नंबर 5821/2018 is considered. Tribunal has inappropriately applied multiplier of 13 after noting a fact that deceased was 20 years of age in violation of the law laid down by Supreme Court in Sarla Verma। पूरा लिख लीजिएगा citation, इतना full stop। Taking this fact into consideration that multiplier of 18 will be applicable। कोर्ट फीस कितनी पे की है आपने क्रॉस ऑब्जेक्शन के साथ में? सर उसमें ऑब्जेक्शन नहीं आया रजिस्ट्री का, हम पेश कर देंगे। आज पेश कर दीजिएगा, आज ही करना पड़ेगा एनएस अमाउंट पे। जी ठीक है ना। मल्टीप्लायर ऑफ 18 विल बी एप्लीकेबल। Full stop. There will be addition of 40% on account of future prospect as well. Therefore, after deduction, when annual income is considered at rupees 37,950, then when 40% is added towards future prospects and multiplier of 18 is applied as disease was 20 years of age, total pecuniary compensation will come out to rupees 9,56,340, over and above which claimants are entitled to a sum of rupees 30,000, taking total compensation to 9,86,340
against a sum of rupees 5,68,350. Full stop. Thus, there will be enhancement to the tune of rupees 4,17,990. वो इन्वेस्ट करा देना 5 साल के लिए, मंथली इनकम इसकी 6 साल के लिए, ठीक है ना? This will earn interest at the rate of 6% on the date of filing of the claim petition. कोर्ट फीस अगर पे करें तो कर देना, नहीं तो जीरो कर देना। सोमवार को हम पे कर देते हैं, बाहर का रहने वाला है, उनको बुलाना पड़ेगा। 4:30 बजे तक पे नहीं होगी तो जीरो हो जाएगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। इट इज बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट। चलिए 4,86,394। 4,86,000 बढ़ा है क्या? 4,17,000 बढ़ा है। 4,17,000 पे हमको 2.5% देना पड़ेगा। हमें नहीं मालूम कितना देना पड़ता है। So in this case, notices were issued, my lord. In this case, lordship, what has happened is that the appellant company was ex parte with the learned court below. I have filed documents of insurance regarding the same, and I have also moved an application for Order 1, Rule 10 for implement of the insurance company because they were not implemented. क्या मैटर क्या है ये? Sir, motor accident claims में, sir, I was held to be liable. The appellant had given the finance of the vehicle to the owner. Vehicle was mortgaged with you. Sir, हाँ, हमारे पास था। So it was on the date of accident, it was seized by me. And so you were in possession of the motorcycle. Of the offending vehicle. Of the offending vehicle. तो फिर इसकी डेफिनेशन जो है ओनर की, उसके हिसाब से तो आप ही आएंगे कि गाड़ी चल कैसे रही थी, सीज गाड़ी चल कैसे रही थी सड़क पर? नहीं सर, सीजर करके लेकर आ रहे थे। लेके आ रहे थे तो आपने सीज कर ली थी ना? हमने सीज कर ली थी। होगा उसकी गाड़ी के। But I have filed the documents of insurance as well. तो ठीक है ना, इंश्योरेंस था उसके पास में, ओनर का इंश्योरेंस था। The vehicle was insured, my lord. चलिए हर्ड ऑन आइए इतना an application for under IA 14201/18, an application under Order 1, Rule 10 CPC. Same is allowed. Let necessary party be pleaded. Notices be issued on payment of PF within 7 days, returnable 4 weeks. Lordship. Lordship, I am respondent number 1, Lordship. Respondent number 1 के लिए आपका नाम डाल लीजिएगा, राम कृपाल जी मिश्रा। Lordship. 23. Yesterday we have filed the affidavit of my lord collector नरसिंहपुर। क्या वो? कल मैंने एफिडेविट ऑफ कलेक्टर नरसिंहपुर का एफिडेविट फाइल किया सर। हाँ, क्या है, क्या लिखा उस एफिडेविट में? कॉपी दे दी आपने? सर अभी दिए हैं सर। हैं? अभी मिल गई है। अच्छा, टाइम चाहिए आपको? जी सर। देखिएगा श्री आपका आशीष पोद्दार लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, श्री मानस मणि वर्मा फॉर द गवर्नमेंट के आशीष रोटी फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 2. Shri Manas Mani Verma submits that he has filed affidavit of the collector Narsinghpur during the course of the day. 20 तारीख को कल से has filed yesterday. Copy of the same be brought on record. Learned counsel for the petitioner prays for time to go through the affidavit list after 3 weeks. Lordship, IR to be continued. IR if any to continue. Yes, Lordship. क्या लिखा है आपके कलेक्टर साहब ने? वो सब एक जो इनकी क्रॉप्स का वो था इंश्योरेंस था, वो क्रॉप्स इनकी जो क्राइटेरिया है इंश्योरेंस में वो क्रॉप्स आती नहीं थी। नहीं तो फिर क्यों ले लिया था? प्रीमियम क्यों ले लिया था? वापस कर दी थी। नहीं, प्रीमियम तो वापस किया, बड़ा अच्छा किया आपने। ले क्यों लिया था, उसके बारे में क्या लिखा है? बिगर क्राइटेरिया समझे, अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ यू हैड चार्ज द प्रीमियम एंड गिवन अ फॉल्स होप दैट देयर क्रॉप्स आर इंश्योर्ड। हैव यू सेड एनीथिंग अबाउट दिस? ये हटाइएगा। भूलवश हो गया था भूलवश पेनल्टी लगेगी आपके, ध्यान रखिएगा। भूलवश क्या होता है? Shri Manas Mani Verma will explain on the next date that if premium was charged, then there was a promise held out to the farmer that his crops are insured. And if there was any mistake as mentioned in the affidavit in charging the premium for crops which were not covered, then why state should not compensate the farmer for the mistake of its own officers? If they so require, they may clarify this aspect also within 2 weeks. चलिए। Yes, sir. 24. प्रिंसिपल सेक्रेटरी का एफिडेविट बुलवाना है क्या इसमें? नहीं साहब, है उसमें लिखा है। अच्छा, फैक्ट को लिखा है कलेक्टर ने, तो इसीलिए तो पूछा हमने आपको ये। हाँ, बताइए त्रिपाठी जी। मतलब
in this petition, FIR की क्वेश्चन चाह रहे हैं? FIR की question or letter which written by the my lord district supply officer. Annexure? That is annexure P1 my lord. P1. P1 से FIR दर्ज करने के लिए कहा क्या? Yes. और फिर FIR दर्ज हो गई? P2. वो दूसरा वो 29 आपके खिलाफ भी FIR है क्या? वो सर एक दूसरे केस में साथ में दूसरा केस है। तो P1 is the मतलब letter। देख लिया तो P2 FIR भी हो गई। जी सर। आपको हमारा ऑर्डर भी मालूम है? नहीं सर, आपका ऑर्डर तो मालूम है, और इस केस में थोड़ी से फैक्ट अलग है। हाँ बताइए ना। जी मतलब दी पिटिशनर नंबर 1 इज कंसर्न। जी इसमें साहब एक लाइन में थोड़ी सा क्लियर कर देता हूँ। मैंने आराम से बहस करिए, कोई जल्दी मैंने सर गलती से इस पिटीशन में ये लिख दिया है कि पिटिशनर नंबर 1 इज कंप्लेनेंट ऑफ FIR रजिस्टर्ड अगेंस्ट द हस्बैंड ऑफ रिस्पॉन्ड नंबर 5। तो ये नहीं है, इसका भाई है, वो मैं क्लैरिफाई कर, वो FIR भी लगाई है मैंने। ठीक है चलिए। हाँ। पहले तो ये बताइए पिटीशन नंबर 1 जो है उनको वो फेयर प्राइस शॉप के सेल्समैन मैनेजर कुछ है कि नहीं है? ये सर रिजाइन कर दिया था। इसके कहानी दूसरी है साहब। इसमें कहानी ये है कि इसके भाई का मर्डर हुआ पिटिशनर नंबर 1 के, और मर्डर जो किया वो रिस्पॉन्ड नंबर 5 के हस्बैंड ने किया। रिस्पॉन्ड नंबर 5 इज दी पथरिया MLA। इनके हस्बैंड ने उसमें मर्डर किया इसके बड़े भाई का। एक मिनट रुक जाइए, इनका किस हैसियत से हुआ ये? जिस तारीख को दुकान का इंस्पेक्शन हुआ उस दिन मनीष चौरसिया की क्या हैसियत थी? वो तो साहब आ गया है कि इनने जो है और सेल्समैन कोई और था वहां पे, दानिश खान था। अरे इनसे समझ रहे हैं। जी 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 समझ रहे हैं। इनके ऊपर पहले से जो इन्होंने अनियमितता की थी वो क्या उसके जांच में आया कि इनने कहाँ है? वो जांच कहाँ है कि इन्होंने अनियमितता की थी? इनका इस्तीफा किस तारीख का? पहले फैक्ट्स बताइए। जांच किस तारीख को हुई और इस्तीफा किस तारीख को दिया इन्होंने? उसको दे देना, वो मिश्रा जो MPSRTC वाला था उसको दे देंगे। किस तारीख को इंस्पेक्शन हुआ दुकान का? ये है सर 2/8 को सर। 2/8 2019 को। 2/8 2019 को। अच्छा, इन्होंने कब इस्तीफा दिया मनीष चौरसिया ने? उसको साहब रिप्लाई में बता देता हूँ। आपने पिटीशन में लिखा होगा ना? जी मैंने सब रिप्लाई में भी इनको दिया था। रिप्लाई में भी दिया था इनको। क्या है? माय रिप्लाई इज एट मालट पेज 38। 38 कौन सा रिप्लाई दिया? ये सो कॉज इनने दिया था पहले। हाँ पेज 38 सुशीला चौरसिया को। हाँ उसमें पढ़िए। जी दीनदयाल प्राथमिक। ये सब पैरा 3 में है। हाँ पढ़िए। यह कि कारण बताओ नोटिस के पैरा 3 का कथन सही है कि वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार तथा ऑनलाइन पोर्टल में मनीष चौरसिया का नाम विक्रेता के रूप में दर्ज है। पैरा का यह कथन स्वीकार है कि जबकि वर्तमान में माह अप्रैल में वर्तमान तक सहायक विक्रेता द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान का संचालन किया जा रहा है। पैरा के इस कथन से इनकार है कि जांच के दौरान उचित मूल्य में प्राधिकार पत्र नहीं पाया गया। तो ये सहायक विक्रेता जो 2 है, पिटिशनर नंबर 2, ही वॉज रनिंग दी शॉप माय लॉर्ड। अरे भाई ठीक है, हमने जो आपसे सवाल पूछा आप बहस ये लेकर आए जी जी कि आप उस दुकान में कार्यरत नहीं थे जिस तारीख को इंस्पेक्शन हुआ जी। और प्राइवेट रिस्पोंडेंट जिनके रिश्तेदारों ने आपके भाई का मर्डर किया है उनके बिहेस्ट पर आपको जो है इसमें फॉल्सली इम्प्लीकेट कर दिया गया। मैं पहले साहब 2 लेटर रेफर कर देता हूँ, उसके बाद साहब ये इस पे फिर मैं आ जाता हूँ। जो 2 लेटर मैंने जिन पे मैं रिलाई कर रहा हूँ। ये सब एक है, ये पेज 30 जी। क्या लिखा है इसमें? ये लेटर लिखा है रामबाई ने मंत्री जी को। यहाँ एक चीज और क्लियर कर दूं साहब, ये रामबाई जी जो हैं ये विधायक हैं पथरिया की। दुकान हटा की है और हटा दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है,
ठीक है, तो उससे जी, क्या जी। फर्क पड़ता है? इसमें देख ले साहब। हाँ, क्या लिखा? जिला दमोह के हटा नगर में जी। दीनदयाल उपभोक्ता भंडार, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती सुशीला चौरसिया एवं विक्रेता श्री मनीष चौरसिया हैं, जनता व प्रतिनिधियों के द्वारा गांधी वार्ड व शास्त्री वार्ड में अनियमितताओं की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। कई बार शिकायतें कलेक्टर व अनुविभागीय अधिकारी हटा को प्रदाय की गई हैं, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कृपया तत्काल अनुबंध समाप्त करने के निर्देश कलेक्टर महोदय दमोह को प्रदाय करने की कृपा करें। ठीक है। नाउ माय लॉर्ड, नेक्स्ट लेटर इज, जी। दिस इज द लेटर रिटन बाय द मिनिस्टर टू कलेक्टर जी। by referring the letter of MLA। राशन दुकान की जांच के संबंध में श्रीमती रामबाई माननीय विधायक पथरिया जिला दमोह से प्राप्त पत्र संलग्न है। माननीय विधायक द्वारा लेख किया गया कि जिला दमोह के हटा नगर में दीनदयाल उपभोक्ता भंडार द्वारा राशन वितरण में की जा रही हैं, जिसकी शिकायतें कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी दमोह को की गई। उनके द्वारा कोई कार्रवाई पढ़ लिया, उसके बाद फिर जांच में क्या आया? जांच में तो साहब इनका वो कॉमन आता है जो पढ़े ना, जांच जी। कल पढ़े। डेट ऑफ इंस्पेक्शन कब का है? ये सब सो कॉज में है, ये पेज 32 मालूम। हाँ, पढ़िएगा। दीनदयाल प्राथमिक उपभोक्ता भंडार हटा द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान के खाद्य सामग्री वितरण में नियुक्त तय किए जाने के संबंध में एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है 2/8 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हटा एवं तहसीलदार हटा नायब तहसीलदार के द्वारा दीनदयाल इतना इतना का जांच की गई। जांच के दौरान निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गई। यह कि शासकीय उचित मूल्य रेस्ट हाउस के पास संचालित होती है, जिसका प्राधिकार पत्र मनीष चौरसिया की माताजी सुशीला चौरसिया के नाम से जारी है, जो दीनदयाल उपभोक्ता भंडार के अध्यक्ष हैं। यह कि निरीक्षण के समय पाया गया कि शासकीय उचित मूल्य शास्त्री वार्ड की दुकान रेस्ट हाउस बस स्टैंड मार्केटा से संचालित होती है। मौके पर उपस्थित लोगों के द्वारा बताया गया कि उचित मूल्य दुकान कभी भी समय पर नहीं खुलती, मनमाने तरीके से उचित मूल्य संचालित की जा रही है। यह कि वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार तथा ऑनलाइन पोर्टल में मनीष चौरसिया का नाम विक्रेता के रूप में दर्ज है, जबकि वर्तमान में माह अप्रैल से वर्तमान तक दानिश खान द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन किया जा रहा है। जांच के दौरान उचित मूल्य दुकान में प्राधिकार पत्र नहीं पाया गया। यह कि भंडार की दूसरी शासकीय उचित मूल्य दुकान बस्ती से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर मढ़िया में स्थित है। यह कि उचित मूल्य दुकान में केवल 1 या 2 दिन ही खुलती है। कि जांच के दौरान उपस्थित उपभोक्ताओं के द्वारा बताया गया मिट्टी का तेल 6 माह से में केवल 50 से 60% उपभोक्ताओं को ही प्राप्त हुआ। शेष लोगों को बिना राशन व तेल के भगा दिया जाता है। राशन दुकान कभी समय पर नहीं खुलती। यह कि जांच के दौरान उपस्थित उपभोक्ताओं के द्वारा बताया गया मिट्टी तेल, चना, मसूर तथा शक्कर किसी भी पात्रता पर्ची धारकों को नहीं दिया गया, केवल गेहूं, बाजरा, नमक वितरित किया गया। यह कि जांच के दौरान उपभोक्ताओं के द्वारा बताया गया कि पीओएस मशीन में फिंगर लगवाकर खाद्यान्न निकाल लिया स्टॉक घटाया जाता है, परंतु उपभोक्ताओं को खाद्यान्न नहीं दिया जाता है। यह कि जांच के समय बताया किसी उपभोक्ता की समग्र आईडी पीओएस मशीन में नहीं खुलती तो उसे रजिस्टर से खाद्यान्न का वितरण न करके खाद्यान्न दिए बिना ही भगा दिया जाता है। उन लोगों को ऑफलाइन मोड में भी खाद्यान्न नहीं दिया जाता है, जबकि समग्र पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट में 100% वितरण रिपोर्ट दिख रही है। आपके द्वारा मनमाने तरीके से खाद्यान्न का वितरण किया गया। जांच के दौरान शास्त्री वार्ड की लगभग 25 से 30 पात्रता पर्चियों को चेक किया गया, जिसमें 19 से 20 पर्चियों में मिट्टी तेल, चना एवं शक्कर की प्रविष्टियां अंकित होना नहीं पाई गई। यह कि AAY कुछ कार्डों में केवल 1 माह की शक्कर इंद्राज पाई गई, जबकि शक्कर प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार माह 19 में जून में इतना प्राप्त हुई है। कि मौके पर उपस्थित पात्रता पर्ची धारकों द्वारा बताया गया कि मिट्टी तेल अपनी मनमर्जी से वितरण किया जाता है। पिछले 6 माह में केवल एक बार ही आधे अधूरे लोगों को मिट्टी तेल वितरित किया गया है, जबकि समग्र रिपोर्ट अनुसार तथ्य प्रस्तुत पावती अनुसार अप्रैल माह में इतना लीटर, जुलाई में इतना मिट्टी का तेल प्राप्त हुआ, जबकि प्राप्त पर्चियों तथा कथनों के आधार पर मात्र 1 माह में ही मिट्टी का तेल वितरित हुआ है। यह कि शॉर्टेज क्या पाई गई? एक सेकंड रुकिएगा जरा। शॉर्टेज क्या पाई गई सर? जांच में कितनी शॉर्टेज पाई गई? ये आगे जो आया सर, हाँ बताइएगा, पेज 36 पर आइएगा जी। जबकि प्राप्त रसीदों के अनुसार उक्त माहों में पात्रता पर्चियों की एंट्रियों को देखते हुए पंचनामा व कथन से स्पष्ट होता है कि सहायक विक्रेता द्वारा कुल खाद्यान्न तक का 40% मात्रा में अपयोजित किया गया है, जिसका विवरण निम्न अनुसार है। ये कैसे आ गया? ये पात्रता पर्ची से कैसे निकल आएगा? आपने सारी पात्रता पर्चियों की जांच की, ऐसा कहाँ आया है? इफ यू आर एक्टिंग अंडर द डिक्टेट्स ऑफ द MLA एंड द मिनिस्टर, ये कैसा आया है? कहाँ लिखा है इसमें कि सारी पात्रता पर्चियों की जांच की, उनका मिलान किया गया? ये सर सामग्री का उपलब्ध ये कैसे हो जाएगा भाई? सामग्री उपलब्ध कराई गई नाम द्वारा, वो तो ठीक है, ठीक है,
नागरिक आपूर्ति निगम हो गया ना नान। कुछ शिकायत करता जैसे एक आके जी। सारी पर्चियों का मिलान करेंगे तब आप पाएंगे ना, कहाँ है वो सारी पर्चियों का मिलान। इसमें जितने उपभोक्ता हैं उस क्षेत्र के, सब पर्चियों का मिलान करने के बाद ही तो शॉर्टेज निकलेगी। ये जैसे सर 18 देखिएगा सर, पेज नंबर पेज नंबर 37 में हाँ क्या है? यह कि वर्तमान में सहयोगी के पास खाद्यान्न वितरण की पावती माह अप्रैल से कहाँ लिखा है, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? 18 नंबर क्लॉज, पेज नंबर 18 तो है ही ये नहीं। पेज नंबर 37 में क्लॉज 18, ये जो क्लॉज 18 तो हमारे वन 37 नहीं, कौन सा 37 पढ़ रहे हैं आप? ये जिसमें 37 लिखा हुआ है, इनके पिटीशन का ही है। 36 के बाद ही 37 है। 36 पे अनुभागीय अधिकारी का खत्म हो गया। ये देखिए ना सर, ये हो नहीं तो ये पेज है ना, 18 नंबर क्लॉज है इसमें, देखिए ये देखिए। दिखाइएगा, दीजिएगा जरा। बीस से 25 पर्चियों का जो है, तो सर पेज 35 है, थोड़ी पेज ऊपर आगे पीछे हुआ, पेज 35 है। इनको हाँ। प्रिंट प्रॉपर नहीं निकला होगा ऑनलाइन फाइलिंग की। पेज ये सर पेज 18 पे, सॉरी पेज 35 है सर। हाँ ठीक है। इसमें सर वर्तमान में सहयोगी के पास खाद्यान्न वितरण की पावती माह अप्रैल से लेकर जुलाई 19 तक संधारित नहीं पाई गई। इस प्रकार से खाद्यान्न का वितरण होना 100% होना प्रमाणित नहीं होता है। सहायक विक्रेता द्वारा केवल ऑनलाइन वितरण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जबकि पात्रता पर्चियों में 20 से 25 में चना, मिट्टी तेल तथा मसूर माह फरवरी शक्कर प्राप्त नहीं हुई है। जी ये सर स्पष्ट है कि ये जो 20-25 पर्चियां थी उनमें इनने खाद्यान्न वितरण नहीं किया। अगर वो लेने नहीं आएगा तो कैसे जाएंगे? शॉर्टेज कहाँ पाई गई? समझाइए ना थोड़ा सा कि ये जो खाद्यान्न था जिसमें वितरण नहीं दिखाया गया, उतनी मात्रा दुकान में नहीं पाई गई, ये बताना पड़ेगा आपको। शॉर्टेज तो जब निकलेगी जब खाद्यान्न पर्ची में, ये उसका एक तरीका साहब ये भी होता है, जो वहां से हम लीड सोसाइटी से जो मटेरियल हमारे पास आता है, एक वो पर्ची होती है, फिर पीओएस मशीन में जो दर्ज होता है, हाँ उन दोनों में अगर डिफरेंस है ये सर तो इसमें फिर वो आ देखिएगा जाता सर, पेज नंबर इसमें मेरे तो पेज नंबर 38 पे दिया हुआ है। हाँ वही क्या 35 जो पेज है पढ़ी। हाँ। पैरा नंबर पात्रता पैरा नंबर ये सर लास्ट का पेज है ये, इसी में 37 हो। हाँ क्या पात्रता पर्चियों की एंट्रियों को देखते हुए पंचनामा व कथन से यह पात्रता पर्ची भाई जो एलिजिबिलिटी थी वो कहाँ है? वो पर्चियों का उनका डिटेल तो देते, किस किस की पर्ची है, कितनी पर्चियां हैं। तो इसमें मात्रा लिखी हुई है कि कितना कितना अपयोजित किया गया है। ऐसा कैसे मालूम पड़ जाएगा? पहले पर्ची का डिटेल आता, उस पर्ची में क्या लिखा हुआ है, क्या स्टॉक अवेलेबल है। ये तो सर इस नोटिस है, सो कॉज नोटिस। फिर आपने एफआईआर क्यों दर्ज करा दी? पॉलिटिकल इंटरेस्ट से। He'll say that he will furnish reply to the show cause notice and then you will be entitled to proceed in accordance with law. Sir, once the FIR has been lodged, I'll quash it. Yes. I'll quash it. कैसे एफआईआर हो गई समझ में तो आए हमें, पहले कुछ क्वांटिटी तो बताएं। अंदाज से आपने लिख दिया इतना का अपयोजित हुआ एफआईआर में। पढ़िएगा एफआईआर पढ़िएगा। एग्जिबिट P2 एनेक्चर P2 P2 पढ़िएगा क्या लिखा है इसमें। निवेदन शासकीय उचित आवेदन पत्र शासकीय उचित मूल्य दुकान शास्त्री वार्ड हाटा के विक्रेता मनीष चौरसिया एवं सहायक विक्रेता दानिश खान के द्वारा दिनांक दुकान संचालन में गंभीर अनियमितताएं करने के संबंध में पेश किया, जो प्रथम दृष्टया धारा 3(2) में नीचे इसमें नीचे सर। आपका इस्तीफा कहाँ है? पहले ये तो बताइए, आप जो इतनी देर से बोल रहे थे मनीष चौरसिया का कोई उसमें रोल नहीं है। वेर इज योर रेजिग्नेशन?
And how can you deploy this Danish Khan in place of you? वो सब सहायक विक्रेता का कहाँ है वो उसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर कहाँ है? वो सब मैंने पेश नहीं किया, लेकिन वो नहीं, ये इनका एलिगेशन भी है कि वहां पे अप्रैल माह में ये सब इनका ये कहना है कि वो अप्रैल माह में सहायक विक्रेता दानिश खान ही वहां काम कर रहा था। ऐसा नहीं कहना उनका, फिर पढ़िएगा उसको आप। जी जी। वितरण का उनका कहना यह है कि आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी जगह दानिश खान काम कर रहा था। कर रहा था। हाउ कैन यू वेर आपने शुरुआत तो बहस यहाँ से की थी कि आप तो उसमें कुछ है ही नहीं, तो बताइए ना कब इस्तीफा दिया आपने? वो सब मैंने पेश नहीं किया, वो आई एम एडमिटिंग मालूट। अगर पैरा 3 देख लें इनका जो दिया है इनने सो कॉज में, इसमें एडमिट कर रहे हैं कि वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार तथा ऑनलाइन पोर्टल में मनीष चौरसिया का नाम विक्रेता के रूप में दर्ज है, जबकि वर्तमान में माह अप्रैल से वर्तमान तक दानिश खान द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान का संचालन किया जा रहा है। जांच के दौरान उचित मूल्य दुकान में कहाँ है इनका अपॉइंटमेंट दानिश खान का एज असिस्टेंट सेल्समैन? वेयर इज द अपॉइंटमेंट? उन्होंने लिखा ना दुकान में प्राधिकार पत्र प्राप्त नहीं पाया गया। नहीं, प्राधिकार पत्र तो सब मैंने लगाया। सोसाइटी ने अपॉइंट किया था दानिश खान को, देन वेयर इज द ऑर्डर ऑफ हिज अपॉइंटमेंट? प्राधिकार पत्र तो साहब ये उसको बोल रहे हैं जो एसडीओ जारी करता है दुकान संचालन के लिए। चलिए, हम तो बोल रहे हैं, हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं दानिश खान के पक्ष में अपॉइंटमेंट ऑर्डर टू अपॉइंट हिम एज असिस्टेंट सेल्समैन, वेयर इट इज? इस तरीके से थोड़ा हो जाएगा। मैं नहीं उसमें साहब क्या हुआ है कि इसके जब भाई का मर्डर हुआ फिर ये दुकान में बैठ नहीं पा रहा था, इसलिए उसमें। कब हुआ भाई का मर्डर? जी मैं सब बता देता हूँ। भाई का मर्डर कब हुआ? जी उसकी सब एफआईआर लगाई है, आई एम विटनेस ऑफ दैट एफआईआर। ये पेज 26 पेज 26 पे पढ़िएगा। किस तारीख की एफआईआर? ये 15/3/19 की। हाँ, और ये घटना कब की है? ये 8वें महीने का है जी। फिर उसी से फिर इसमें हमने ये भी लिखा कि प्रेशर डाला गया कि तुम अपने स्टेटमेंट बदलो। मेरा साहब पेज 29 देख लें, आई एम मटेरियल विटनेस ऑफ दैट मर्डर केस माय लॉर्ड, बिकॉज माय एल्डर ब्रदर हैज बीन मर्डर्ड। उसमें जो है एक्यूज्ड कौन है? एक्यूज्ड है गोविंद सिंह, हस्बैंड ऑफ रामबाई, रिस्पॉन्ड नंबर 5, हु इज द एमएलए हु रिटन द लेटर टू मिनिस्टर माय लॉर्ड कि इनके खिलाफ कार्रवाई कराई है। एंड पेज 29 इज द माय लॉर्ड My statement and my lord, I am the seizure witness. वो तो आपके खिलाफ हो गया, दानिश के खिलाफ क्वेश्चन का क्या ग्राउंड है? वो सब टारगेट तो यही थे, because my lord, the authority letter my lord is in the name of the my lord mother of Manish Chaurasia. उससे क्या? अब वो सहायक विक्रेता था वहां पे। चलिए ठीक है my lord। आप दानिश के लिए चाहें तो विड्रॉ कर लें, उसको मैं खारिज करूंगा, दानिश के लिए आपकी अलाउ करूंगा, आपको अभी से बता दिया। Then I may be permitted my lord। हाँ, प्लीज फॉर विड्रॉल ऑफ द पिटीशन फॉर रिस्पोंडेंट पिटीशन नंबर 2 सेम इज डिसमिस्ड एज विड्रॉन। ठीक है, मेरिट पे लिखा दूंगा, अभी लिख लीजिए। दिस रिट पिटीशन इज फाइल्ड बाय द petitioner being aggrieved of direction of the district supply officer Damo dated 3/9/2019, asking him to record FIR against the petitioner. Full stop. It is submitted that in compliance of the said directions, FIR was recorded on 6/9/2019 for under section 3 within bracket 2 another bracket G and section 7 of Essential Commodities Act read with section 408 IPC. Next pen. It is submitted that this is an act of vengeance as can be seen from the communication made by the concerned MLA Srimati Rambai Govind Singh contained in annexure P7, who had given a letter to the Minister Food and Civil Supplies asking him to take action against the petitioner. Full stop. On the said communication, concerned minister had asked the collector to take action by annexure P8. Full stop. It is submitted that in March 2019, real elder brother of the petitioner was murdered by husband of the concerned MLA Rambai Govind Singh. Full stop. The Govind Singh is a named accused for which
case crime number 143 of 2019 is registered at police station Hatta, district Damo, under section 294, 323, 324, 307, 147, 148, 149, and 506 IPC. Full stop. It is submitted that later on section 302 IPC is also added as disease succumbed to the injuries caused by the accused person. Full stop. There was pressure of Rambai to change statements. Full stop. When petitioner refused to oblige Rambai, she decided to take vengeance by requesting the minister concerned to target the petitioner in through other mechanism. Next pen. Reading from the report annexure P9 dated 24/8/2019. Sorry, show cause notice. It is pointed out that neither the inquiry was conducted properly nor any notice calling the petitioner is enclosed with the show cause notice. Full stop. Since the subdivisional officer and the supply officer were under pressure of the MLA belonging to the ruling party. No, that was more independent, but she given support to ruling party. By the MLA who, though contested election in an independent capacity, but was supporting the ruling party, vengeance has been let loose against the petitioner. Full stop. Petitioner had reply to the show cause notice was furnished, but without considering the reply dated 30/8/2019, supply officer asked the subdivisional officer revenue to lodge FIR against the petitioner. Full stop. It is submitted that neither there is matching of all the eligibility slips nor any stock verification has been undertaken. This service details fed in the POS and arbitrarily with a view to frame petitioner. It is mentioned that there is misappropriation to the tune of 40%. Full stop. It is pointed out that it was incumbent upon the officers to have conducted proper survey and should have against the husband of the MLA Rambai. Next pair. Relying on all these facts, it is submitted that it's an act of personal vendetta and vengeance against the petitioner, and therefore there being non-application of mind on the part of the authorities, impugned FIR is liable to be quashed. Next para. Shri Vijay Kumar Shukla, Learned Counsel for respondent number 1, 2, 3, and 6, supports the action and submits that there has been shortage in the food grains meant for supply through PDS, and therefore action is fully justified. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, especially annexure P6, it is evident that this is a matter of political vendetta. There are documents from the concerned chairman of Nagar Palika Parishad Hatta, as well as ये दूसरे क्या हैं ये प्रेम रानी, and as well as the councillor from Lal Bahadur Shastri Ward number 13,
matter is that no inquiry report was enclosed along with the show cause notice by the sub-divisional officer. Full stop. He was obliged to have enclosed copy of the inquiry report pointing out the deficiencies which were pointed out, along with the statements of the consumers which were recorded. Full stop. There is no notice issued to the petitioner to remain present at the time of the inspection. And in view of such facts and taking cognizance of the communication made by the concerned MLA and the letter written by the concerned minister, comma, it is prima facie evident that the act of the respondents in lodging FIR is for political reasons rather than for the reasons of violation of the provisions of the Essential Commodities Act or Section 408 IPC. Therefore, the impugned action of the respondents in lodging FIR is hereby quashed. Full stop. Matter is remitted to the concerned subdivisional officer to issue fresh notice to the petitioner along with all the relevant documents, be it the inquiry report or the statement of the consumer so recorded, and the compilation of the data on the basis of which so-called shortage has been calculated, and then take action in accordance with law. This is the case wherein, my lord, the privatization of the respondent number 4 was challenged. Now, my lord, they have filed the reply, my lord, and in the reply they have said, my lord, that the regular employees of the hotel Lakeview Ashok has been merged with the tourism department. But as far as, my lord, the contract employees are concerned, because as many as 91 employees are contract employees, they have not taken any decision on their future. आपका locus बता दीजिए. My lord, our locus. On which premise you are opposing privatization? My lord, that relief, my lord, I am foregoing that relief, my lord. Then, but as far as this absorption of the employees is concerned, my lord, because contract employee का right बताइए. Privatization they can do, my lord, but they have merged the regular employees with. ठीक है, उन्हीं का locus था, उनको merge कर दिया. आपका My contractor lord, का may locus kindly तो see, सही my है. lord, the contract. Withdraw कर लीजिए, लेबर कोर्ट में जाइएगा, वो बेहतर रहेगा आपके लिए. Shri Rajneesh Gupta for the petitioner. Shri Vijay Kumar Shukla, learned panel lawyer for state. Shri Vasu Jain for respondent number 224, madam. 224. 224. After arguing for some time and being satisfied with the undertaking given by the respondent number 224 that they are absorbing regular employees of the respondent number 4 in with Madhya Pradesh Tourism Development Corporation. They have already been absorbed. That regular employees of Natna have been merged with Madhya Pradesh Tourism Development Corporation. Raise for withdrawal of this petition with liberty to agitate in regard to contractual employees before the appropriate forum. Lord, I filed rejoinder yesterday. क्या matter क्या है? Lord, this is regarding cancellation of lease. Now, I was granted lease, my lord, for establishment of an industrial unit. My lord. The purpose for which, my lord, the lease was granted was establishment, my lord, for the purpose of 4 and 2-wheeler repairing and servicing. My lord. Now, my lord, I entered into a contract with Hyundai Motors Limited for establishment of a dealership. My lord. In the agreement, my lord, the place of showroom and, my lord, the place of workshop was clearly mentioned. My lord. Now, the place of workshop was mentioned at the disputed plot. My lord. If your lordship may kindly come to page 27. Page 27, yes. Lord, this is the agreement with Hyundai Motors. Now, my showroom is mentioned at 7 Lala Lajpat Nagar, Bhopal. And workshop is mentioned at 27 G JK Road, Bhopal. My lord, We are this is the concerned with 27 JK Road. This is the shed which was allotted. Yes, this is the shed.
Now the purpose of this, my lord, is mentioned. If your lordship may kindly come to the next page, page 28, my lord. Page 29. Page 29. Construction and establishing thereon a factory for the manufacture of four and two-wheeler repairing and service, etc. and purposes ancillary thereto. So I was granted, my lord, for this purpose, my lord, to four and two-wheeler मैन्युफैक्चर का repairing and लाइसेंस तो दिखा दीजिए पहले जी मैन्युफैक्चर ऑफ फोर व्हीलर एंड टू व्हीलर का लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग नहीं सर, रिपेयरिंग अरे आपने पढ़िए तो उसको देयर ऑन अ फैक्ट्री फॉर दी रिपेयरिंग इज एंसिलरी फर्स्ट इज मैन्युफैक्चर ऑफ फोर एंड टू व्हीलर्स रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग पहले मैन्युफैक्चर होगा उसके बाद में ये रिपेयर तो एंड इनका भी सर्विसिंग केस नहीं, ये तो इनका भी केस नहीं दैट इट वाज नॉट ग्रांटेड फॉर रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग. अच्छा इनका ये कहना नहीं कि इसको इट वाज फॉर मैन्युफैक्चर, मतलब इट कुड नॉट बी मैन्युफैक्चर ऑन अ प्लॉट ऑफ 40,000 स्क्वायर फीट. जी ये केस इस आधार पे कैंसिल भी नहीं किया. कैंसिल इन्होंने इस आधार पे किया है कि हमने वहाँ पे शोरूम एस्टेब्लिश किया. एंड आई एम नॉट रनिंग मिलॉट रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग. Now, my lord, my case is, my lord, that I have established my repairing and servicing, my lord, workshop on this plot, my lord. And my showrooms are at two places, my lord. One is at Lajpat Nagar and the other is at Chunavati Road, my lord. This I have mentioned in my petition. तो ये शोरूम नहीं है आपका? ये यहाँ पे शोरूम नहीं. Only, my lord, servicing and repairing work is being carried out on this plot. And there is no material, my lord, as on date. रिजॉइंडर देख लीजिए आप, इसमें कुछ एडिशनल दे रहे हैं तो दे दीजिए. Let additional return be filed within 4 weeks list thereafter. मतलब interim order to continue. IR if any to continue. 27. Also, there have been some subsequent developments in this matter. I seek time to verify the same. क्या verify करना है? Lordships, this is a matter related to process where petroleum dealership was being allotted to respondent number 5. Lordships, this was being done contrary to the rules and criteria. Who are you? I'm the petitioner, one of the applicants. इतना तो हम भी समझते हैं. Lordship, one of the applicants, my lord. Respondent number 5, there have been total of 3 or 4 applicants. You are one of the applicants. जी. फिर आप क्यों disqualify हो गए? Lordship, disqualification, the respondent number 5 was selected above me. But Lordship, the criteria as prescribed in the advertisement was of certain requirement of land, and which the respondent number 5 did not fulfill. जी. We have filed documents related to the same also. But Lordship, since it's a 2019 matter, there has been maybe some status change related. क्या status change होगा? उनका पेट्रोल पंप पे stay है क्या, Mr. Kapil? My lord, there is an interim order. It's subject to final outcome. Subject अगर to अभी final- बना नहीं है. पेट्रोल पंप बना नहीं है? नहीं, अभी कुछ हाँ तो फिर बता दीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अभी तो बहस करिए, नहीं तो इसको विड्रॉ करिए. I'm seeking time to verify. नहीं 2019 की पिटीशन में टाइम नहीं. If can be taken in the Passover round. हाँ पासओवर में आइए. I'll go. Lords. जी. Lords. Lords, in page number 19, my lord. Last paragraph. अतः सरपंच किरणबाई सो हरसूद को मध्य प्रदेश पंचायत ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 स्टे से है क्या इसमें? जी स्टे है क्या? अच्छा, आप काम कर रहे हैं? नहीं सर, वो तो टेन्योर खत्म हो गया. टेन्योर खत्म हो गया तो अब बचा क्या? यही तो पूछ रहा हूँ सर. ये जो 6 ईयर का किया है, 6 years अरे मतलब नहीं, डिवाइडिंग. वो भी 19 से जब आपका अगला चुनाव होगा, 22 में चुनाव हुआ, अगला चुनाव 27 में होगा, 6 साल खत्म हो जाएगा. सिर्फ टेक्निकल बचा है ये एडवर्स मतलब इफ वी आर फाइटिंग एनी इलेक्शन देन दैट कम इन. कौन सा इलेक्शन? तो सिर्फ जनपद के लिए लागू होगा ना, ये तो 6 ईयर के बाद जो है 6 साल तक के. और अब तो आप विधायक के लिए एलिजिबल हो गए. विधायक या सांसद लड़ेंगे पांडे जी, कहाँ लड़ेंगे?
जनपद सदस्य का चुनाव, और ये वाली बार वहां तो आड़े आती नहीं है, ऊंचा सोचिए। Pandey, after arguing sometime, is for withdrawal of this petition, as tenure of the petitioner as a sarpanch is already over. Accordingly, petition is dismissed as withdrawn. 29. It's my application that the petition has become infructuous and liability to dismiss for want of suppression for the suppression of the facts as well. Petition काली सी relief clause. वो अभी तो थे त्रिपाठी जी, आपने क्या बात करी उनसे? वो बोल के गए इन्फ्रक्चर्स हो गई? नहीं, वो चले गए साहब। वो तो आपसे बिगर बात किए? नहीं, हमसे इतने बोले कि बहुत कोर्ट स्ट्रिक्ट है, उसमें कोर्ट का व्यू स्ट्रिक्ट है, उन्होंने ये बोला एफआईआर क्वेश्चन में। हाँ, ये उन्होंने लगाया कि ये एफआईआर क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये तो उन्होंने लगाया था फॉर रिस्ट्रेनिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर। FIR has already been registered. देखिएगा, and even the none for the petitioner, Shri Mohammed Ali, learned counsel for the respondents. आ गए, इनका नाम डाल दिया। FIR हो गई, इन्फ्रक्चर्स हो गई पिटीशन। अब आप FIR को 482 लगा के क्वेश कराइएगा। अब ये भी कुछ वैसे ही मैटर है। नहीं नहीं, इसमें साहब मेरा निवेदन ये है, बस नहीं, 2 मिनट सुन ले साहब मुझे। ये भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड मैटर है। इसको पार्टी बनाया आपने, चलिए। ये साहब जो कंप्लेनेंट है, ये इनको सरपंच से दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत है सवर्ण सरपंच से। मैं साहब बता रहा हूँ, नहीं सुनेंगे वो सब, हम नहीं सुनेंगे। जी, उस पे नहीं जाए साहब। तो ही मेड अ कंप्लेंट माय लॉर्ड। वेयर इज द कंप्लेंट? जी, कंप्लेंट इज एट माय लॉर्ड। अपन इगैलिटेरियन सोसाइटी की ओर बढ़ रहे हैं, एंड इस तरीके की बहस जो है सब बड़ी सब अथॉरिटी की रिपोर्ट में बताइएगा कहाँ है कंप्लेंट? इज माय लॉर्ड पेज 16 16। जी सर, जी पढ़िए, क्या लिखा है कंप्लेंट में? श्रीमान जी, निवेदन है ग्राम पंचायत मंडी बमौरा, तहसील बीना, जिला सागर, पूर्व सरपंच बीरेंद्र सिंह रघुवंशी के द्वारा आबादी भूमि से दुगनी भूमि के पट्टे वितरण कर दिए गए और ये पद का दुरुपयोग कर अपात्रों को बांट दिए गए। शिकायती बिंदु निम्नानुसार है। सब पैरा 2 में देखें, दलित आदिवासी को नहीं दिए। सवर्ण सरपंच वीरेंद्र सिंह रघुवंशी के द्वारा आवासीय पट्टे भूमि के पट्टे दलित आदिवासियों को ना देकर अपने परिवार के लोगों को। तो क्या गलत है इसमें? इसमें कौन सा कास्टिस्ट एलिगेशन हो गया? हाँ नहीं, इस पे साहब जांच हुई। ही गिवन दिस कंप्लेंट टू लोकायुक्त। द डिविजनल कमेटी हैज नॉट इंक्वायर्ड द मैटर। फिर क्या पाया उसमें? साहब ये पाया कि कुछ इसमें अनियमितताएं हुई हैं, इसलिए उनको कैंसिल किया जाए। ही रिकमेंडेड दैट। पेज 18 इज द माय जांच प्रतिवेदन। फिर Page 26 is the conclusive part of the that inquiry. जी, बीच में हमारा भी पूरा वर्जन आया इंक्वायरी में कि एलिगेशन जो है क्या ये तो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना ये? जी जी। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा आवेदक द्वारा की गई शिकायत सही प्रतीत होती है। कहाँ पढ़ रहे हैं? हाँ ठीक है, सही पेज 26 पे। हाँ ठीक है। अनावेदक द्वारा पट्टे वितरण में की गई जल्दबाजी के कारण बहुत सी त्रुटियां हुई हैं। ग्राम पंचायत मंडी बमौरा में आवासीय पट्टे वितरण के प्रकरण का पुनर्वलोकन सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। उसके लिए कलेक्टर ने एसडीओ को बोल दिया, वो पट्टे सब निरस्त भी हो गए। ठीक है, हो गए होंगे, लेकिन आपने जो काम किया नहीं वो सब मैं वहीं पे बता रहा हूँ। ये काम हमारा नहीं था, एक स्कीम थी। ग्राम पंचायत ने एक रेजोल्यूशन पास किया, पटवारी और सेक्रेटरी ने एक प्रतिवेदन दिया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मालॉट किसी को खाली जमीन का नहीं मिला था पट्टा। जो मकान पहले से आबादी में बने हुए थे उनको पट्टे दे दिए गए थे, और वो दैट ऑन द बेसिस ऑफ मालॉट रिपोर्ट सबमिटेड बाय द पटवारी एंड दी मालॉट सेक्रेटरी। अब मेरा निवेदन यह है कि साहब इसमें हमारे खिलाफ ऐसा कोई ना, तो इस रिपोर्ट ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़िएगा आपने, बड़े जी ऊपर पूरी रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी। पेज 26 के ऊपर वाले 2 पैराग्राफ पढ़ने से आपकी जो है कॉम्प्लेक्सिटी स्पष्ट हो जाती है। जी जी जी। आवेदक ने इसलिए अब आप एफआईआर की क्वेश्चन के लिए 482 लगाइएगा। अभी तो दर्ज हो गई। नहीं, दर्ज तो हो गई साहब। हाँ तो 482 में जाके अप्रिशिएट किया उसमें इसमें साहब एक और सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हुआ है। इस बेस पे हमारी एफआईआर नहीं हुई।
हो गई, हमें नहीं मालूम। इसके बाद एक लेटर देख लें साहब, कैसे एफआईआर हुई मैनर पर देख लें, पेज नंबर 41 देख लें। लुक इनटू ऑल दिस सर एक पेज देख, P11 देख लें साहब। There is a prima facie report against you by the Lokayukt establishment. Thereafter, I am not going to interfere. उससे नहीं हुई है। नहीं, यह केस पुराने केस से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल सही आपने है। जहाँ से शुरू किया था वैसा नहीं है। नहीं मैं साहब इसमें अच्छा, फिर बहस करिए, कॉस्ट के लिए तैयार रहिए। नहीं साहब, मैं सिर्फ कॉस्ट तो नहीं बताइए, मैं कॉस्ट सर- के लिए तैयार रहिएगा। मैं सर- अरे सरपंच महोदय, क्या दिक्कत है? नहीं कॉस्ट लगेगी, बताइए। नहीं उसकी मैं सर एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ, कॉस्ट के लिए तो मैं तैयार नहीं हूँ। मैं केवल ये है कि अगर न्याय के लिए मैं एक डॉक्यूमेंट रेफर कर रहा हूँ बस। बताइए। साहब P11 देख लें। P11 बताइए। ये P11 है, पेज नंबर 32। हाँ, क्या लिखा उसमें? इसमें साहब ये है कि तहसीलदार को कलेक्टर ने बोला कि इसमें जांच करें। पेज नंबर 32 देख लें सर। तहसीलदार ने बोला, ये सीओ जिला पंचायत ने तहसीलदार को लिखा कि इसमें आप जांच करिए जी। 19/11 को। तहसीलदार ने बोला कि साहब हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, उससे हमें क्या? 19 तारीख को बोलता है कि साहब अभी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, 20 तारीख को एक रिपोर्ट बना के दे देता बिना रिकॉर्ड देके। वो सब नहीं। जब सब 19 नहीं, लोकायुक्त कार्यालय ने जांच कर ली और उस रिपोर्ट में वो सब लोकायुक्त कार्यालय की जांच नहीं है, वो एक बॉडी है। हाँ, वो ठीक है। डिविजनल लेवल की, वो लोकायुक्त ऑफिस की जांच नहीं है। वो लोकायुक्त के अंतर्गत ही काम करती है। जी। वो बॉडी जो है लोकायुक्त के अंतर्गत ही काम करती है। जो पेज 26 पर है, इट वर्क्स अंडर द ऑफिस ऑफ द लोकायुक्त। आप उसका फर्स्ट पेज देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। जी। लोकायुक्त संगठन मध्य प्रदेश, संभागीय सतर्कता समिति, कार्यालय सागर। ठीक है। जब एक बार लोकायुक्त ने, एक स्टैट्यूटरी बॉडी ने जांच कर ली, उस जांच में आपके खिलाफ मटेरियल पाया गया, देन आई विल नॉट शो इंटेलिजेंस। नहीं, इनका कहना यह है कि साहब लोकायुक्त ने वो जांच के बाद इनको कलेक्टर को बोला कि फिर से एक जांच करें। ठीक है। और दिस इज नॉट मालूट लॉट ऑन द बेसिस ऑफ मालूट इंक्वायरी रिपोर्ट ऑफ लोकायुक्त। दैट मे बी अ ग्राउंड अंडर 482 टू सीक इंटेलिजेंस, नॉट नाउ। Then, my lord, at this stage, my lord, I may be permitted, my lord, to withdraw with liberty. The party prays for withdrawal of the petition, as Shri Mohammed Ali has informed that FIR is already lodged and petition has become infructuous. वो भी साहब Petitioner will be free to challenge the FIR in appropriate proceedings. FIR, I have challenged in this petition also. इनकी एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज हो चुकी है, फिर भी पुलिस ने आज तक इन्हों अरेस्ट नहीं किया, 2016 से 2023 तक। Shri Mohammed Ali also submits that though petitioner's anticipatory bail is already rejected, yet police Rejected on 17/2/20. On 17/2/2020, yet police officials are hand in glove with the petitioner and trying to aid the petitioner by not arresting him for over 2.5 years. There was an interim order earlier, my lord, in this case, and which subsequently vacated, my lord. Therefore, my lord, order, if any, shall stand vacated. no, that has been vacated, my lord. That was already Due to that, my lord, police under impression there is some interim order. अच्छा। सरकारी वकील साहब बताते नहीं किया वहां पर कि इंटरिम ऑर्डर वेकेट हो गया? श्री the party submits that since there was an interim order and probably police was not aware that that order stood vacated on, किस तारीख को वेकेट हुआ? नहीं, पुलिस को मालूम है सर, ये हुआ था 8/12/20 को। On 8/12/20, therefore probably he was not arrested. However, Shri Mohammed Ali submits that police is having knowledge of this fact, but because of political connections of the petitioner, he has not been arrested. Shri G.P. Singh, learned government advocate, shall forthwith inform the concerned superintendent of police and the sub-divisional officer SDOP in regard to dismissal of this petition during the course of the day. My lord, once, my lord, I'm my lord withdrawing the petition. Such observation, my lord, is my lord. ठीक है, चलिए. Because my lord, I'm withdrawing the petition, my lord, without any discussion, my lord. So dismiss as withdrawn. उतना observation साहब ना दे. ठीक है, ठीक, चलिए. Lord, in this matter, I was directed to file an affidavit of the CEO Janpat Panchayat, my lord. But I have sent a letter, my lord, kindly for the 7 days time में भी granted. कब भेजा लेटर? ये लेटर हमने भेज दिया है 13 जुलाई को, my lord. कैसे भेजा था? ये फैक्स से बन। लिखिएगा. श्री G.P. Singh, Shri Paresh Parikh for the petitioner,
Shri G.P. Singh, learned government advocate for state. Shri S.D. Gupta, learned counsel for the intervener. Shri G.P. Singh submits that that he had sent a communication to the Chief Executive Officer, Janpat Panchayat, Boriband District, Katni, to make compliance of the order dated 11/7/2023 on 13/7/2023, but no response is received and therefore prays for further 7 days time. On request of Shri G.P. Singh, by way of last indulgence, 7 days time is granted, and it is directed that Chief Executive Officer Janpat Panchayat Bahuriband shall remain personally present along with the affidavit. List on 28 July 2023. Lord, P1 is under challenge, my lord. This petitioner is running a travel agency. Now, in year 2018, my lord, as many as 27 buses owned by him, my lord, that was requisitioned for the purpose of election, my lord. And after using it, my lord, we were, as per the circular, we submitted the bills, my lord, for payment. जैसे हमारे लिए सूट लगाइए, रिकवरी सूट लगाइए. हाई कोर्ट थोड़ा ना रिकवरी के एजेंट है. इसमें सूट एक लगाइए. मिनट, इसमें my lord, I came to this honorable court. This honorable court directed them to dwell upon the issue. That is wrong. Not- that what is an they- inappropriate approach by the High Court. When there is a provision for filing a recovery suit, if your My buses lord, were there requisitioned, is, my lord, उसमें मैं आपको इसमें सूट नहीं देखिए लगेगा. सिर्फ हाई कोर्ट एक ही जगह वहां पर जहां उनकी एडमिटेड लाइबिलिटी उन्होंने कहा इनका कि सर्कुलर है. सर्कुलर नहीं ना. इतना पैसा क्वांटिफाइड अमाउंट दे है ऐसा उन्होंने कहा और उसके बाद पैसा नहीं दे रहे. नहीं तो आप यहाँ पे जाइए, एक ये प्रूव आप करिए. सुन लें, अगर आप एक चीज बस देख लें, इन्हीं का सर्कुलर है सर, जो बताइए. कहता है कि हमको इन्होंने हॉल्टिंग चार्ज नहीं दिया, इन्होंने हमारा डीजल, ये कहते हुए कि साहब डीजल का काट के आपका पेमेंट हमने कर दिया. ठीक है, और तो- इनका सर्कुलर खुद कहता है हॉल्टिंग चार्ज के. ठीक है, तो आप वहां जाके इसमें सर माय लॉर्ड, इवन सिविल सूट वुड नॉट बी मेंटेनेबल. इसमें 160 के तहत माय लॉर्ड देयर वुड बी ए आर्बिट्रेशन एक्ट. तो ठीक है, आर्बिट्रेशन में जाइए. उसमें आप मेंशन कर देखिएगा. Prays for withdrawal of this petition as petitioner proposes to undertake arbitration proceedings as are provided under the agreement. Lord, that is under section 161. 161. Small subsection 2 of Representation of People Acts 1951. 161 within bracket 2 दिखाइएगा. ये आप देखिए, इसमें आप सबसेक्शन 2 देखिएगा 161. 160 में रिक्विजिशन होता है, फिर कंपनसेशन इसमें सबसेक्शन 2 देखिएगा, पीछे पन्ने में होगा. कोई भी डिस्प्यूट होता है क्वांटम का, ये भी मैंने अभी देखा जी. क्या देखा? Proceedings as provided under section 161 within bracket 2 of the Representation of the People Act 1951. Full stop. It is directed that the time spent by the petitioner in pursuing this writ petition may be deducted on making an appropriate application for the purposes of computation of limitation. मतलब इसमें there is no limitation provided. अगर हो भाई वो कल को बोलने लगे आपको तो आपको वो भी दे दिया हमने. ठीक है, ठीक है. लिमिटेशन इफ एनी कर दीजिए. हाँ, ठीक है. इफ एनी जल्दी. वो देखा था कि लिमिटेशन तो नहीं तो वो माफी आपसे मांग लेते हैं. My lord, in item number 32, my lord, the petitioner has expired, my lord. बेगम सभी है सुल्तान. तो पिटीशन अबेट हो गई? नहीं, उसके टाइम दे दिया सर एलआर को. कब कल इंतकाल हुआ? कब हुआ? नहीं सर, दो तीन महीने पहले. हाँ वसी साहब, ये भी साथ में ही है. नहीं आपके साथ ही है ये? नहीं, इनका 32.2 या 3 है सर. अच्छा लिखिएगा. Learned counsel for the petitioners prays for time to substitute legal heirs of deceased petitioners. Full stop. Appropriate application may be filed within 10 days. Sir, 2 weeks. नहीं 10 days
10 days सर हैदराबाद में रहते हैं तो क्या हो गया? आपकी क्लाइंट तो अधिकतर मुंबई में रहते हैं। जी सर। मुंबई वाले नहीं है क्या ये? नहीं, ये इनकी बहन है सर। हाँ, क्योंकि अवस्थी साहब की। अच्छा। ठीक, चलिए नेक्स्ट केस। चलिए हटाइए इसको, अगला केस दीजिए। हाँ हाँ, लिस्ट सब में सबका नाम डाल देना भाई। आप 32.2 में है, 2 में अतुलानंद अवस्थी सबका नाम डाल देना भाई। असिस्टेड बाय श्री देशहित सोबरी। हैं? देशहित सोबरी। देशहित सोबरी सरोबरी सोबरी। सोबरी। अच्छा लिखिएगा, देशहित सोबरी। बहुत सुंदर नाम है आपका। 33 My lord, this case I have filed because the petitioner is a widow, my lord. She has a plot. After 2 weeks. 33, sir. हाँ क्या है ये? My lord, the petitioner has a plot in Jabalpur, my lord. Lease was executed by the JDA, my lord. She applied in the year 2020 for renewal of the lease, my lord. Now they asked for a very heavy extension fees in the it's like a penalty of around 13 lakhs. ये ऑर्डर तो अपीलेबल है मेरे ख्याल से। My lords, chairman और यस नहीं, इसमें लीज में कहीं प्रावधान लीज में है। नहीं, इसमें नहीं है। चलिए मुझे नहीं दिखा तिवारी जी बताएंगे। सर मेरा एक छोटा, अरे मैं भी इनका वकील था, मुझे मालूम है प्रावधान है अपील का। इनका ये कहा कि 15C में इसमें लीज में लिखा है, पर ये लीज बहुत पुरानी सर, 1990। तो क्या हो गया? तो इसमें प्रावधान नहीं है। अच्छा इसमें ये बताएंगे, तिवारी जी बता दें। मतलब बहुत शॉर्ट पॉइंट है कि अब लॉ बदल गया है, और ये जब था इन्होंने 1913 का लगाया था, ये 2020 में रिन्यूअल के लिए लगाया था। 2018 में 100 रुपए पर स्क्वायर मीटर का रेट था, पहले ज्यादा था, तो हमने कहा आप 2018 के हिसाब से लगा लीजिए। नहीं वो अपील में, और अब 2021 में 10 रुपए स्क्वायर मीटर कर दिया, तो उसको मतलब 13 लाख की बजाय मुझे कुछ हजार ही देने पड़ेंगे, बस इतनी सी बात है। तो इतनी सी बात के लिए सर आई शुड बी रेलेगेटेड टू द रेमेडी ऑफ अपील इवन इफ इट इज देयर। एक मिनट रुक जाइए, मैं लौट ले रहे 15 हमारे रिप्लाई में है, 15/3 में वो चीज है। पर सर लीज मैंने लगाई, उसमें मैंने पढ़ा था, हो सकता है मुझसे चूक हो जाए, पर है नहीं। नहीं आपसे चूक नहीं होगी, आपसे चूक नहीं होगी सर, हो जाती सर। नहीं आपसे। हाँ My lease is Milord Annexure P2 page 15. हाँ The memo of writ petition I have filed. इसको इन्होंने पढ़ के कहा कि 15C जो क्लॉज है उसमें है, पर मुझे देखने में नहीं आया। वो चीज इनकी लीज डीड में नहीं दिख रही है सर। कहाँ लिखा है? फिर इनकी लीज डीड में नहीं है तो कैसे होगा? हाँ आप रिकंसीडर कर लीजिए इनका, लिखिएगा। सर एक डॉक्यूमेंट पढ़ लो, रिकंसीडर करने के लिए भेज तो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द in terms of Milord that their own document Milord. लिखिएगा श्री। They may make a fresh application. वही कह रहे हैं। But my confession may not be required. अरे नहीं होगा। और बताइए तिवारी जी, कंसेशन से इतना डरते क्यों हैं? श्री राजेश पंचोली, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, श्री पराग तिवारी फॉर द रिस्पोंडेंट जबलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। Pancholi submits that impugned order is dated 17/6/2020. In fact, at the relevant time, JDA had given new guidelines for renewal of leased properties. Full stop. JDA should consider and decide petitioner's application as per the revised guidelines. Full stop. It is submitted that he is willing to furnish fresh representation to the respondent number 1, and he may be directed to decide the representation in accordance with law within further period, some further reasonable time. Next para. 15 दिन में देंगे and 45 days में decide करेंगे. Till then, operation of the impugned order annexure P1 shall remain state. Milord, मैं humbly pray amended law के हिसाब 2021 में फिर से लॉ दिया भाई। और इन्होंने R3 में सर इनने as per the applicable law कर दिया। ठीक है। 34 34 में मेरे
क्या है जिला बदल कुछ बचा है अब इसमें 2020 में Period My lord, there was a stay order, my lord. स्टे हो गया तो ठीक है बोल देते हैं कि पीरियड इज ओवर Period is over. Even otherwise, it's not. देखिएगा शिप इनका नाम डाल दिएगा है प्रवेश नवेरिया फॉर द पिटिशनर श्री जीपी सिंह फॉर द रिस्पोंडेंट इट इज agreed that the period of externment is over. Therefore, petition is rendered infructuous. Shri Naveria submits that there was a stay in favor of the petitioner. Full stop. Since period of externment is already over, comma, no further indulgence is required. Petition is disposed of as withdrawn. 35. Now, in this case, my vacating stay application is pending. Huh? In this case, my vacating stay application is pending. Who is appearing for the petitioner? नाम ही नहीं आ रहा. In fact, पहले वकील साहब कौन थे? before वो सीनियर होगा कि एलिवेट होगा? my lord, he has become a government advocate. So even, my lord, may use then it is his problem. He should arrange somebody. my lord, may see None for the petitioner. my lord, may see order sheet number 16. What's your good name? Siddharth Sharma. So Siddharth Sharma submits that petitioner, the respondent has filed an application for vacating stay. Full stop. No reply is filed to the said application, though it was filed on 18/1/2022. कॉपी कब दी आपने इसकी पिटिशनर को? My lord, at that time itself, when the application was filed. कहाँ लिखा है इसमें? आपका एक्नॉलेजमेंट है क्या? इसमें तो नहीं है. स्टे वेकेटिंग एप्लीकेशन में एक्नॉलेजमेंट नहीं है. My lord, it's there on the reply. It's a part of the reply itself, my lord. It's there in the index. Vacating stay application is a part of the reply. Vacating stay application का अच्छा. In the index. Full stop. Copy of the same was given to Shri Sujit. क्या नाम है? Rai Chaturvedi. Says Rai Chaturvedi. Sujit, care of Shri R.N. Chaturvedi, as nobody is appearing to contest the application, comma, same is allowed. Interim order passed in favor of the petitioner is hereby vacated. Full stop. Petition is admitted for final hearing. List for final hearing in Part B of the cause list as per its turn and seniority. My lord, can it be taken up after a week, my lord? क्या हो गया? आज क्या परेशानी है? My lord, because I have raised 4 grounds to argue in this case, my lord, and for substantiating one ground or to concede that ground, I have to just seek some instructions. बताइए ना क्या है मैटर क्या है? My lord, this case relates to the demarcation. I have stated that no notice for demarcation was served upon me. That was my first ground. Second, the demarcation proceeding has not been conducted as per the provision of 129 of the MP Land Revenue Code. Third ground of which I have developed, my lord, that even that SDO के ऑर्डर के खिलाफ डायरेक्ट आ गए. जी मान डिमार्केशन में तो सेकंड अपील भी प्रोवाइडेड सर है वो 44 में. सर वो उसमें चूंकि प्रोवाइडेड नहीं है इसलिए हम आए थे. ये ऑब्जेक्शन उठा था पहले. तो वो मैं तो वो सब्सटेंशिएट हो गया था कि हाँ वो डायरेक्टली आएगा बिकॉज इट विल बी अ फाइनल एंड ऑर्डर ऑफ द सब डिवीजन ऑफिसर इज फाइनल. जी अच्छा. as far as this proceeding is concerned, then my third ground of argument is this. चाहिए आपको सर एक हफ्ते का भी दे देंगे क्योंकि जो एप्लीकेशन है मेरा कहना वो एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन नहीं है. To prepare and argue this case on his request list after a week. जी oblige man. My lords, in serial number 77, top of the list, wrong submission has been made by petitioner lordship as per my client instruction lordship that the complainant is himself absconding lordship. That's why challan is not being filed. जो उन्होंने लिखा मैंने आपका तो कहा नहीं. आपके बारे में कुछ भी एडवर्स नहीं लिखा है मैंने. जो सरकारी वकील ने बताया वो पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है वो लिखा है मैंने. My lord, ठीक है चलिए नेक्स्ट केस.
Currently में भी टेक करना हैं? है वीक लॉर्डशिप क्या करना है? नेक्स्ट वीक कर नेक्स्ट वीक क्यों? आज ये क्या एनओसी मिली है मुझे हैं? आज पावर फाइल करना हाँ ठीक है, क्या मैटर क्या है? 3912 रिजेक्ट डिसमिस हुई हुआ है? था उसके हाँ अगेंस्ट बताइए ना। आज मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है देखिएगा, श्री शुभ नाम बताइए। मनोज कुमार झा मनोज कुमार झा Jha submits that he be granted some time to file wakalatnama and argue this case. Full stop. Since the proceedings before the trial court are held up since 2021, list this case on 27 July 2023. Top IR of the list. continue. IR to continue till 27 July only. Dot. 39. क्या है ये? Madam, this madam, application for vacating of stay is pending. So they are alleging breach of order which was passed by the learned trial court. हाँ. They are challenging the order whereby the building permission has been cancelled, alleging that that the same has been done in violation to the order which was passed by the learned trial court. Now, my lord, against that order, they have already preferred an application under order 30 and rule 2 before the trial court, Yes. and that fact has been suppressed in this petition. जी. Yes. Let's, I'm appearing in item number 39. हाँ बताइए. 39, I am filing an application for withdrawal of my wakalatnama in this case. लिखिएगा तो इसमें बस लिखिएगा श्री सुघोष घोमोरे. एक मिनट, तो ये वकालतनामा नो इंस्ट्रक्शंस हो गया, खत्म हो गया. Submits that he is withdrawing his वकालतनामा. Accordingly, petition is dismissed for want of instructions. चलिए. Well, my submission Interim is order that if any shall stand vacated. well, there is one more counsel in this petition. हो सकता है, ऐसा थोड़ा ना होता है कि एक करेगा विड्रॉ. वकालतनामा is withdrawn, it is withdrawn for all. Well, it's two separate wakalatnamas have They been should, he should have, which wakalatnama is subsequent? my. Then finish. It is clarified. It is clarified that since this subsequent wakalatnama at this stage, Shri Sughosh Gomore submits there are two wakalatnamas, but since he admits that his wakalatnama is subsequent, that means that his engagement is subsequent to the engagement of the earlier counsel. Withdrawal of his wakalatnama, the filing of his wakalatnama resulted in end of engagement of the previous counsel. Therefore, now once he is withdrawing his wakalatnama, then petition is to be dismissed for want of instructions. But my lords, I'm only appearing in the WP, your lordship. हाँ ठीक है ना, MCC में MCC, they are seeking transfer of case to. देखिएगा, none for the applicant. ठीक है, case is dismissed for want of prosecution. चलिए. So I'm praying to withdraw item number 27. I have received instructions. अच्छा 27 में लिख दीजिएगा भाई, prays for withdrawal of the petition. Lordship with liberty to file fresh if occasion Liberty arises. to file fresh as and when cause of action so arises. Highly obliged. चलिए. फाइनल हियरिंग 86 में जजमेंट के लिए बोला था. हाँ दे दीजिएगा, दे दीजिएगा. 86 हम बोलिए, चौहान साहब क्या हो गया? 41 और 42 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. 42 में साहब बंच ऑफ केस पेंडिंग है, सेम एफआईआर में पास. आएंगे ना लंच के बाद. 42 का के लिए एक्चुअली मुझे कौन सा 42? सब डॉक्टर्स के पास जाना था. नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसे अब इसको टेस्ट लेंगे. नहीं नहीं. क्या लेंगे बताइए. सवाल हो गया से वो है पास ओवर ये दो है डायरेक्शन वाले बहुत सारे जैसे ये कितने देखना पड़ेगा.
करवाने से क्या मैटर क्या है? एक्चुअली दैट सेकंड वेल एप्लीकेशन है जी। फर्स्ट क्या वेल चेंज सर्कमस्टांसेस उतना बता दीजिए बस। जी लाटिव विड्रॉ हुई थी और लाटिव करीब 5.5 महीने से जेल में है, ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट है। इसमें ये है लाटिव की फ्रॉड जो हुआ था, तो चढ़ार ने, राजू चढ़ार ने खाता खुलवाया था। जी जी। तो जो मेमोरेंडम है लाटिव इसका लाटिव ये आरोपी आलोक कुमार यादव का, उसके मेमोरेंडम के आधार पे भी हम अभियुक्त बने हैं लाटिव। बाकी दो लोगों की माननीय न्यायालय से जमानत हुई है। हाँ ठीक है। अठारह लाख आपसे रिकवर भी हुए हैं। 18 लाख जी बता रहे हैं कि 18 हाँ, तो रिकवर। आप बता दीजिए, आपका इनकम टैक्स रिटर्न दिखा दीजिए। आप 18 लाख रुपए इनकम टैक्स तो भरते होंगे ना, 18 लाख रुपए। यहाँ तो एक साधारण आदमी को 5 लाख रुपए जैसी सीलिंग ब्रीच हुई इनकम टैक्स, 5 लाख भी कहाँ, जी लड़ती वो तो 2.5 लाख। पुलिस ने रिकवर किया लाख। हाँ किया है आपने 18 लाख के रुपए। आधार हाँ, फिर तीन सिमिलर नेचर के ऑफेंस। वो तो सेम यूपी में है हाँ लाठी। ठीक है, यूपी में क्या, सेम यूपी डे यूपी में अलग आईपीसी लागू होती है। नहीं लाठी मतलब सेम डे हुआ था। क्राइम नंबर 912/13 912 कुछ है नहीं इसमें। मिथिलेश जी तो आप रहने दीजिए और रखिएगा। श्री मिथिलेश प्रसाद तिवारी त्रिपाठी आफ्टर फॉर द पिटिशनर श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव, learned government advocate for state, after arguing for some time, prays for withdrawal of the application. Accordingly, second application is dismissed as withdrawn. Direction matter 152. ध्यान के समय ये None for the petitioner. Shri Jitendra Srivastava, learned panel lawyer for state. On the last date, Shri R.K. Samaiya, on last date, that is 14/7/2023, Shri R.K. Samaiya, learned counsel for the petitioner, had sought time to seek instructions in the matter when Shri Shivam Mishra, Deputy Registrar Cooperative Societies, Narmadapuram, had appeared in person and had informed that society had gone into liquidation on 25/4/2014 and thereafter liquidator was appointed. Full stop. Today nobody is appearing. It appears that petitioner is in agreement with the statement given by Shri Shivam Mishra, Deputy Registrar Cooperative Society, Narmadapuram, and accordingly, once the society has gone into liquidation, petitioner has no locus to file this petition, petition being devoid of, petition is dismissed for want of locus. Serial number 40. In this case, earlier on 15/11/22, coordinate bench heard the case and it was inclined to allow my petition only in respect of petition number 2, 3 and 4. ऐसा लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट बेंच पे ले जाइए इसमें। नहीं, वो ट्रांसफर हो गया उनका भी। हैं, वहां भिजवा देते हैं, कहाँ चले गए? इंदौर चले गए, हाँ, धनबाद तो इंदौर भिजवा देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं बता से फैक्ट्स बताया बस। अच्छा ठीक आई है। एम चैलेंजिंग द एफआईआर इसमें। You are creating some kind of moral pressure on me that since earlier bench was inclined to allow it, I should. अरे भाई मेरिट्स पे बताइए, नहीं बता दे, नहीं अलाउ होने वाली होगी तो अलाउ होगी। इसमें रिस्पोंडेंट की काउंसिल जो है उन्होंने भी एग्रीड किया था, ये बता इनके सक्सेना जी ने। हाँ इसमें आई हैव चैलेंज द एफआईआर लॉर्डशिप। लॉर्डशिप सी फर्स्ट P3 पेज नंबर 16। Page 16, yes. This is the first complaint made by the wife against husband, mother-in-law, sister-in-law and brother-in-law. एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा।
कितने हैं? This is dated 18/12/2018. फैमिली मैटर है, सॉर्ट आउट हो सकता है मीडिएशन से। पति पत्नी के बीच का डिस्प्यूट है। ये तो बहुत जगह अप्रोच कर रहे हैं, प्रेशर डालते हैं। काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब उसमें बोथ द पार्टीज आर नॉट विलिंग। नहीं, हमारे फेवर में हुई, मैडम वही पॉइंट आउट कर रहा हूँ। उसमें एफआईआर दर्ज ही नहीं हो पाई थी। अब P3 देखिए, पेज नंबर 16 में, पेज नंबर 16 ये 18/12/2019 को इन्होंने कंप्लेन करी अपने जहाँ वो रहती है पेरेंटल हाउस में भोपाल में। इसके बाद ये प्रोसीडिंग हुई है, ये 5 पेजेस कंप्लेन है, प्रोसीडिंग P4 में लगी हुई है। उसका रेलेवेंट है पेज नंबर 22 में। ये अपना पुलिस अथॉरिटी ने किया था नोट। They said that there is no case made out under section 498। इन्होंने लिखा 16 फरवरी 2020 को आवेदक अनावेदक केंद्र में उपस्थित हुए दोनों पक्षों। पेज 22 माय लॉर्ड, पेज 22। इस कंप्लेन का जो मध्यस्थता हुई थी नीचे सेकंड पैरा में माय लॉर्ड, हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है नीचे 16/2/2020। दोनों पक्षों को वापस भेजा। आवेदक कानूनी कार्रवाई व खाना खर्चा चाहती है, न्यायालय जाने की सलाह दी। नो एफआईआर बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट द हस्बैंड, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। एफआईआर किस चीज की कर दी है? 498 के सेकंड, एक साल बाद ये तो खत्म हो गया केस यहाँ पे 16 फरवरी 2020 को। उसके बाद ये वापस नहीं आए, वहीं रहे। ये तो बेलेबल हो गया ना अब तो। नहीं, बेलेबल तो नहीं। आई कम बिफोर एफआईआर ऑफ एफआईआर इन रिस्पेक्ट ऑफ पिटीशन नंबर 2, 3 and 4 ब्रदर सिस्टर मदर इन लॉ। एफआईआर पढ़े प्लीज, क्या था? P6 पेज 26 में। 28 से पढ़िए जी। इससे पहले ये देख लें, मतलब P24 पेज और देख लें। 24 बताइए। P5 और देखिए। ये खत्म होने के एक साल बाद ये वापस नहीं आई और फिर उसी महिला थाने में फिर से उन्होंने सेम रिपीट कंप्लेन करी 2 फरवरी 21 को, 8 फरवरी 21 को, पेज नंबर 24-25 में फिर से कंप्लेन किया। सेम डे उसी समय विदाउट प्रोसीडिंग उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी सबके खिलाफ P6 में, पेज 26। ऐसे क्वेश्चन नहीं होती है। जाइए ट्रायल में भाग लीजिए, ट्रायल में आपके ये सब जो है एविडेंस आएगी, आपका एक्विटल हो जाएगा, बेल हो गई नहीं हो गई आपकी? बेल में तो है सर। हाँ बस फिर क्या है? माय सबमिशन इज माय लॉर्ड, दिस इज टोटल अब्यूज ऑफ लॉ माय लॉर्ड। चार्ज फ्रेम हो गए इसमें। चार्ज फ्रेम हो नहीं, चार्ज नहीं हुआ। तुम देखो पिछली बार उन्होंने जानकारी दी नहीं, ऑर्डर शीट में उन्होंने जानकारी लेने बोला था, मैंने निकाली नेट से, नहीं हुए अभी। तो बीच में उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था कि चार्ज फ्रेम हो गए हैं। आर्गुमेंट बिफोर चार्ज की पोजीशन में था केस। ठीक है, तो आर्गुमेंट बिफोर चार्ज यू गो एंड आर्ग्यू इट। लॉर्ड माय सबमिशन इज लॉर्ड दिस इज टोटल अब्यूज ऑफ लॉ माय लॉर्ड, काइंडली अप्रिशिएट माय लॉर्ड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर वो एक साल बाद भी एफआईआर करा रही है, 498A के लिए कितनी सजा है? 3 साल। ठीक है, घटना के 3 साल के भीतर लिमिटेशन क्या है सीआरपीसी में? 3 years। ठीक है, तो हम इस भाई आप जो कुछ कह रहे हैं दैट्स अ मैटर ऑफ एविडेंस कि आफ्टर थॉट है, ये सब है। आप ट्रायल में भाग लीजिए, ट्रायल कोर्ट को बोलते हैं कि ट्रायल कंप्लीट करें। मेरा एक सबमिशन बस है। हाँ बताइए ना। जो पिटिशनर नंबर 2, 3, 4 है वो सेपरेटली रहते थे, साथ में नहीं रहते थे, सबके अलग अलग एड्रेस है। बता दीजिए कहाँ पर, क्योंकि सबके अलग अलग एड्रेस है और कभी हम लोग भोपाल गए ही नहीं। अरे एक सेकंड, सिर्फ हस्बैंड के ऊपर एलिगेशन है। कॉस्ट टाइटल देख ले माय लॉर्ड। हाँ, ये दिलदार हसन जैसे हस्बैंड पूरी में है, हस्बैंड है, इंदौर में है। हाँ ये इंदौर में। हसन को छोड़ दीजिए जी, नजरा बानो, ये मदर इन लॉ है, ये साथ में रहती हैं। हाँ ठीक है। तो 3rd नंबर है ये गजला, ये वो है, इंदौर में रहती हैं। ये इंदौर में शादी हो गई इनकी, ये ननद है। उसके बाद माजिद खान है, ये इंदौर में नौकरी करता है, अनमैरिड है। ये है क्या गजला साजिद? गजरा ननद है, ये एक ननद है, एक देवर है, और एक सास है। सबको सबके लिए कर दिया कि भोपाल में आके धमकी दिया। इनका इंग्रेडिएंट्स तो देखें आप P5 में, सेकंड कंप्लेन में। यहाँ हस्बैंड के ऊपर भी मैक्सिमम बनता है सर माय लॉर्ड। P5 पेज 24 जो सेकंड कंप्लेन है। फर्स्ट में तो 1 साल पहले डिस्पोजल हो गया था। आप बिल्कुल बेल की बहस कर रहे हैं। नहीं बेल नहीं कर रहे। आई ओनली से ओनली वन ग्राउंड माय लॉर्ड, दिस इज टोटली अब्यूज ऑफ लॉ, नथिंग एल्स। आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माय पीरियड टू पिटीशन नंबर 2, 3 and 4।
Not टू तो नहीं होगा, टू तो आपको टू वन इज है, वो साथ में रहती है। हाँ, वो साथ में रहती हैं। सिमिलर लॉर्डशिप ऑलरेडी आई फाइल्ड। एक सेकंड जी, ये कब कहा कि भोपाल आके मारपीट की? उसने करेरा कह रहा है, मैं मेरे ससुराल करेरा पहुंची तो मेरे पति, सास, देवर, ननद मुझसे विवाद कर मारपीट करने लगे। फिर मुझे 22/11/19 को अपने भाई साबिर खान को, ये कहाँ कह रहे हैं कि भोपाल आकर इन्होंने आपके साथ मारपीट करी? पढ़िएगा तो थोड़ा सा। जी, नहीं, आपका ये कहना है ना, यू नेवर विजिटेड भोपाल। हस्बैंड विजिटेड भोपाल, दैट इज डिफरेंट। अदर 3 जिस जो पहले क्या हुआ था, 2 साल ये पहले चली गई, 5-6 साल पहले घर छोड़ के। बीच में जब ये 19 में आई थी तो ये अपने ब्रदर को बुला के वापस फिर लौट गई थी। फिर उन्होंने 2020 में कोरोना के पीरियड के समय में कंप्लेन करी। फिर वो कंक्लूड हो गया कि अब खुद स्टेटमेंट दिया लड़की ने कि मैं खाना खर्चा चाहती हूँ, न्यायालय जाने की सलाह दी गई। आफ्टर 1 year nobody gone to the Bhopal, only husband was gone to the Bhopal and this FIR has been registered. तो वेंजियंस है ये ननद और इसके देवर। मतलब इसमें जो एलिगेशंस है मतलब वो सबके खिलाफ है। मतलब इसके पहले भी जो एफआईआर लॉन्च होती है मतलब चलिए, फिर आपको, अगर आपको एलिगेशंस पे आना है बताइए, मेडिकल कहाँ है आपका? चलिए, फिर तो सभी के खिलाफ क्वेश होगी। आपसे जो बात पूछ रहे हैं, बताइए मेडिकल कहाँ है आपका? अभी तक यू वर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। आई थॉट दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाइल डिस्कशन इज बीइंग मेड। वेयर इज द मेडिकल ऑफ द गर्ल दैट शी वाज बीटन? मेडिकल इज नॉट ऑन देन चीज को समझिए, दिखाई दे रहा है। हमने खुद कह दिया आपके बिगर बोले हुए कि माँ और पति जो है, दे हैव अ कॉमन रेसिडेंस, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी क्वेश। बट जो देवर, ननद शादीशुदा है, बाहर रहती है, ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट से कर देते हैं, बाकी के लिए चलेगा। देखिएगा, श्री आशीष रावत प्रेस फॉर विड्रॉल ऑफ दिस पिटीशन हुआ petitioner number 1 Dildar Hassan alias Tariq, son of late Mohammad Farooq Khan, and Srimati Nazra, that is husband of the complainant, and Srimati Nazra Banu, wife of late Shri Mohammad Farooq Khan, mother-in-law of the complainant. Full stop. Complaint is petitioner number 1 and 2 is dismissed as withdrawn. Next. It is submitted that petitioner number 3, Ghazala Sajid, is married daughter of Mohammad Farooq Khan. She is sister-in-law of the complainant. Her marriage was performed prior to the complainant and she is since then residing at Khajrana, Indore. Full stop. On the fateful day, as is mentioned in the complaint, that is 21/11/2019, when she has alleged that petitioner number 3 had misbehaved with the complainant and had indulged in beating, petitioner number 3 was at Indore in her matrimonial home. Full stop. False allegations have been made with a view to coerce the petitioner number 1 and 2. Full stop. Next para. Similarly, petitioner number 4 is working in a private job and he has documentary proof to the effect that on the date on which cause of action is shown, that is 21/11/2019, he was working at Indore at his workplace. Full stop. Next para. Shri Ashish Rawat submits that in the counseling which was carried out on 16/2/2020, annexed as Annexure P4, complainant had categorically mentioned that there are there is an intellectual discord between between husband and wife, and therefore because of lack of coordination they want to live separately, and the complainant wants
expenses for her maintenance. Full stop. It is submitted that FIR was lodged after almost a year of the said conciliation. During that period, complainant never visited the accused persons at Karera or at Indore. Neither the present petitioners number 3 or 4 ever visited her at Bhopal. Therefore, no cause of action has accrued in their favor. Next para. Shri Jitendra Srivastava, learned panel lawyer, and Shri Naman Gupta. Naman Gupta for respondent complainant. Respondent number 3. The respondent number 3 complainant submits that no indulgence be shown in the matter as it's a matrimonial dispute. Full stop. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that petitioner number 3 and 4 have been falsely roped in with a view to let loose vengeance against them. There is no material available on record to demonstrate that they ever made any phone calls or were in contact with the complainant. Full stop. In absence of any such material, comma, a matrimonial dispute cannot be allowed to escalate to such an extent so to take within its sweep innocent persons merely because they happen to be family members or close relatives of the actual accused persons. Full stop. In view of such facts and taking into consideration judgment दे दूंगा मैं. Judgment लाए हैं? जी ये अनेक्चर आईए में लगे हुए हैं. एक 2 अनेक्चर में लगे हुए 3 और हैं सर. आईए नंबर मैंने पेश किए हुए हैं. Taking into consideration. आईए 7548. हाँ. Orders of the coordinate bench in MCRC 10044/2019 decided on 16/1/2020. So also taking into consideration orders of the Honorable Supreme Court in Inder Mohan Goswami versus State of Uttaranchal 2007 का 12 SCC 1, Sushil Kumar Sharma versus Union of India 2005 6 SCC 281, Preeti Gupta versus State of Jharkhand 2010 का 7 SCC 667, this court is of the opinion, and so also the judgment of Supreme Court in Kahakasha Kausar alias Sonam and others versus State of Bihar and others 2022 live law SC 141, wherein it is held that general and omnibus allegations cannot manifest in a situation where the relatives of the complainant's husband are forced to undergo trial. Full stop. It has been highlighted by this court in varied instances, that a criminal trial leading to an eventual acquittal also inflicts severe scars upon the accused, and such an exercise must therefore be discouraged. Full stop. Therefore, in view of said judgment of Honorable Supreme Court and taking into fact that there are general and omnibus allegations against the petition number 3 and 4, their petition is allowed. FIR qua petitioner number 3 and 4 is quashed. Liberty be granted to petition number 1 and 2. No liberty required. Sorry. To contest there. वो तो करेंगे, आपको तो right है. That is your right. उसके लिए liberty कहाँ जरूरत है? ट्रांसपोर्ट की वकालत नहीं है वकील साहब. थोड़ा कमजोर उसमें. हाँ, थोड़ा कमजोर हो गए आप इस मामले में. 41. आज में तैयार नहीं हूँ मैडम. हैं? ये सब नहीं वकील साहब. क्या मैटर क्या बताइए? आशीर्वाद लेकिन सुबह से क्या हो गया? बाहर से आया तो क्या हो गया? सब कल मंडे टॉप. नहीं ये सब नहीं. एक केस की लिस्टिंग में बड़ा टाइम लगता है. मंडे टॉप में तो क्या है, क्या मैटर क्या है? पहले मैटर तो बताइए. पहले भी बढ़ चुका है. नहीं सब नहीं बढ़ा. 17/6 को लिखा है ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीवमेंट इन द फैमिली ऑफ द आर्ग्यूइंग काउंसिल फॉर द पिटिशनर रेज फॉर एडजॉर्नमेंट.
उसके सब बाद मंडे 3/8 को टापा लगा। कर दो। सुनिए तो ऑर्डर तो सुनिए। ये आप इंटरिम ऑर्डर ले लिया आपने, 2 साल हो गए, उसके बाद आपकी तैयारी में खलल आ रहा है। मंडे को बताइए बताइए। मंडे को नहीं बढ़ पाएगा, सब मंडे को नहीं बढ़ पाएगा। मैंने आपको बताया ना, अभी मंडे को ऑलरेडी 150-200 केस वेट कर रहे हैं, मंगल को कर दो। नहीं हो पाएगा। बताइए क्या मैटर है, क्या FIR है P4 की, और क्या पढ़िएगा? 406, 420, नहीं थी 34। मिनट, क्योंकि भोपाल से मैं आया हूँ, मेरी फाइल भी क्या हो आपको गया? नहीं आई मिनट, मैं बाहर था मिनट में, हैं? इसी मैं प्रार्थना कर रहा था। इंटरिम ऑर्डर वेकेट कर देते हैं, फिर आपकी पसंद की डेट दे देते हैं। मंडे को नहीं, ये सब नहीं चलेगा। अंतिम अवसर, लास्ट अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं सर, मैं बाहर से आऊंगा सर। VDS Chauhan is not prepared to argue this matter. He submits that he was out of station and has come today only. Full stop. He submits that he is not prepared with the matter. There is an interim order. मतलब मैं मंडे को टापा मंगल को कर दूं, मतलब कोई डेट मतलब हमेशा सब Obtaining in favor of the petitioner since 3/8/2021. This practice of seeking adjournments whenever matter is listed on such frivolous grounds is not a healthy practice for the bar, members of the bar. Keeping in mind personal difficulty of the council, list this case as the on top of the list on 24th July 2023. It is made clear that no request for passover or adjournment shall be entertained on that date. 42 और सिर्फ इस केस में 10 लोगों के खिलाफ FIR हुई है और सब 10 याचिकाएं पेंडिंग है डॉक्टर साहब। ये केस उससे छूट गया डॉक्टर साहब, बाकी कोर्ट का आदेश सबके साथ लिंक करने के, सब लिस्ट नहीं हुआ मेरे साथ। इसको बता दीजिए, उसमें वो ऑर्डर फॉलो हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर में यूनिवर्सिटी में लिखा है डॉक्टर साहब, वो जो मेन ऑर्डर है। नंबर लेके लिस्ट दिस केस along with in the week commencing 31 जुलाई 2000, उसको भी टॉप ऑफ द लिस्ट करिए। ऑन 4 अगस्त 2023 टॉप ऑफ द लिस्ट। चलिए, बीच में नहीं, मैटर अगर है तो one of the matter, my lord, it is showing in the, my lord, the display board as 152. However, my lord, it is in the order, my lord, and it is बाद में बीच में जब नंबर आएगा तब बताइएगा। चलिए, my lord, ये ऑलरेडी my lord इसको डिस्पोज ऑफ बता रहा है। हाँ तो 152 डिस्पोज ऑफ हो गया। चलिए, my lord, उसमें डिस्प्ले में 152 था। आई ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर समैया, my lord, he requested to me by telephone, by which my lord seriously therefore paying for टाइम से आना चाहिए वकील साहब। नेक्स्ट वीक। नहीं सॉरी। चलिए, The petitioner is agreed by the order, my lords, Annexure P9 37/2021, my lords, whereby without giving any opportunity of hearing, my lords, her digital caste certificate was cancelled, my lords. बताइएगा Annexure P9 क्या है? P9, my lords, page 25 है, my lords. मैं, my lords? जवाब आ गया आपका? बताइए। रिकॉर्ड आप पेश करेंगे? क्यों नहीं पेश किया आपने? और हाई लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी का कहाँ है? फिर श्री रौनक यादव, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, श्री जितेंद्र श्रीवास्तव, लर्नेड पैनल लॉयर फॉर स्टेट, श्री श्रीवास्तव, प्रेस फॉर टाइम टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड। फुल स्टॉप। आपका मेडन नेम क्या है? योर डॉटर ऑफ? As I am daughter of आपको ये सब लिखने की क्या जरूरत थी? एक्स मंडल वाइस प्रेसिडेंट। आप उस हैसियत से आ रहे हैं क्या? ये कॉस्ट टाइटल अमेंड करिए। यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस whom? Is your certificate cancelled in your capacity as a ex Mandal Vice President BJP? This kind of petition will not be accepted. Cost title में पढ़िए जाकर। No, my lords, I was appearing in the election, my lords, and because of that, because my caste certificate was not issued, my lords. But
This kind of representation is inappropriate. No, my lord, Mandal we have taken this ground, my lord. No, you may have taken this ground. You'll have to delete this. You'll have to correct. In the meanwhile, Shri Ronak Yadav may correct the cost title. He cannot impose on this court status of the petitioner as ex-Mandal Vice President because caste certificate is not cancelled on that ground. No, my lord, what Caste Annexure P9 reveals that there is ambiguity in the original certificate which was issued. It was issued in favor of Vandana Bagri, daughter of Bhogendra Bagri. Well, if I am permitted to argue, my lord, it's a very small case, my lord. नहीं इसको record आ जाने दीजिए. No, my lord, the record is not required because I may be permitted to argue, my lord, for 5 minutes, my lord. नहीं My lord, record के साथ में सुनेंगे. No, my lord, because the form record be called just for 5 minutes, my lord. Record is not required, my lord. Record के साथ सुनेंगे. Let record be called for. List along with the record in the week commencing 14 August. Till then, IR to continue. चलिए. 44. Lord, I am praying for time to file rejoinder, my lord. They have filed the reply. कब आया reply? Reply सर अगस्त में मिला है 2022. 2000 पर लगा अभी है. नहीं एक्शन नहीं होता वो सब नहीं. 22 के बाद अभी लगा है सर. हाँ ठीक है लगा होगा. क्या मैटर क्या है बताइए. तो इसमें अगर रिजॉइंडर के लिए समय मिल जाता बिकॉज इससे दे फाइल्ड अ वेरी लेंथी रिप्लाई. हाँ ठीक है लिखिएगा. Learned counsel for the petitioner prays for time to file rejoinder. कितनी कॉस्ट देंगे आप? Return was filed on 5/8/2022. Advance copy was received by the council on 3/8/2022. After almost 1 year, now time is sought to file rejoinder. Full stop. Petitioner should have been vigilant to file rejoinder in time. In the interest of justice and subject to cost of rupees 10,000, 4 weeks time is granted to file rejoinder. Let cost be deposited in the High Court Legal Services Committee. सर 5,000 हार्श हो जाएगी. अरे नहीं आप लोग बड़े लोग हैं. My lord, cost is commensurate to your status. Lord petitioner status. हाँ. तो ठीक है. नेक्स्ट पेज. मतलब 53 भी सेम मैटर था उसमें भी नंबर आएगा तब बताइए. 53 नंबर आएगा तब बताइए. नीलम गोयल. Lord, IR to be continued. हाँ IR I'm to okay. continue. सर रिप्लाई अवेटेड. लिखिएगा. आपका शुभ नाम क्या है मैडम? नीतू बावरिया. मिस नीतू बावरिया, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर. श्री लोकेश जैन, लर्नेड पैनल लॉयर फॉर स्टेट. आपको नोटिस तो सब सर्व हो गए फिर क्या दिक्कत है जवाब देने में. State has not filed reply to the petition. Let reply be positively filed within 4 weeks. List in the week commencing 28 अगस्त 2023. My lordship, it is most humbly prayed that you may kindly grant us a passover in this matter. Passover second round में नहीं होता मैडम. This is Yes, sir. surrendered infrastructure. हाँ वो परसों जो डिसीजन हुआ उसी की लाइफ में. देखिए इन्होंने उसके बाद 53 में कार्रवाई कर दी थी रजिस्ट्रार ने जबकि बॉडी अब तो सब ऑर्डर हो गया है. वो तो कह तो दिया इलेक्शन करने के लिए. ये वाली पिटीशन तो उसके बाद मतलब ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन दे वर इलीगली होल्डिंग द चार्ज ओवर द पोस्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. आपका शुभ नाम बताइए मैडम. अंशिका यादव. अंशिका यादव, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर. श्री लोकेश जैन, लर्नेड पैनल लॉयर फॉर स्टेट. श्री अनिल लाला फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 4. 4 ना. My application for intervention is there. Acha, for the intervener, for the intervener. Full stop. It is submitted that in terms of the orders passed by this High Court in WP number लिख के दे दीजिएगा परसों. 20985 of 17. 985 of 2017 and MP number 1185 of 1185 of 2018. मैं पता भी बता.
चेक कर लीजिएगा, परसों नरसों ही डिसाइड किया है। साथ में ही हुए हैं। ठीक है। दिस पिटीशन सीकिंग रिलीफ ऑफ questioning of the show cause notice annexure P1 has been rendered infructuous because thereafter administrator was appointed by the Joint Registrar Cooperative Society Indore, and this court has already decided the matter and directed the election officer to conduct election as per the directions contained in that order. Full stop. The petition is dismissed as infructuous. 48. Lordship, in this case, this is like 262221. But in this case, the stay was granted by Honorable Justice Vishal Dhagat. Previously, my lord, what happened? How it is material? Yes, sir. How it is a material fact that who granted stay? नहीं, इसकी मटेरियल है कि इसमें ये सवाल आया है ना सर। क्या सवाल आया? ये सवाल ये आया है, हाँ। क्या था सर, उसके पहले का भी हिस्ट्री है कि पहले एक पिटीशन फाइल करी थी, दैट वाज 20512. In that matter, the status quo was granted by Honorable Justice Sanjay Dwivedi. Thereafter, my lord, that order is on record, my lord. Kindly see. उसमें ये कहा उन्होंने कि साहब इसको हम जो है वो दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, स्टेटस को दे रहे हैं उस, और अगर कोई कंप्लेंट होगी तो जो है इनका वो कैंसिल कर दिया जाएगा. देयर वाज नो कंप्लेंट अगेंस्ट मी, my lord. Even then, the authority has cancelled my. कहाँ है वो? वो पिटीशन पेंडिंग है कि डिस्पोज ऑफ हो गई? वो भी पेंडिंग है, उसके बाद ये भी पेंडिंग. 0512 तो सबको साथ लगा के सुन लेते हैं. सर एक मिनट मैं जो बता रहा हूँ बताइए. इसमें सर इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक और हमने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन थी, उसमें इन्होंने माफी मांग ली. स्टेट हैज गिवन अंडर अनकंडीशनल अपॉलॉजी, मतलब दैट petition number 223922. In this, I will read out for your lordship that the answering respondent at the outset tender the unconditional and unqualified apology. जी. तो ये सर सवाल ये है कि सब ये एक पिटीशन में इधर तो ये कहते हैं कि हमको स्टे वेकेट कराना है, और तीसरी पिटीशन जो हमने कंटेम्प्ट फाइल किया, इन दैट दे हैव आस्क्ड फॉर द टेंडर अपॉलॉजी. बताइए. May I read this thought? हाँ, ये भी मैं इसी में से पढ़ रहा हूँ, आपका ही जवाब है ये. हाँ, पढ़िए. So the order is like this. Tenders. Annexure are. This lots of contempt order जो पढ़ के बता रहे, जो हमारे एम्प्लॉइज में कह रहे हैं हमने माफी मांगी. हाँ, बताइए. This is the order that is unqualified apology for any inadvertent act or omission on his part. The answer respondent highest regard for this order passed by this honorable court. It means thereby we are. अरे वो तो ठीक है, वो तो आपका जनरल जुमला है, वो तो हाँ, उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो हम भी समझते, हम भी समझते हैं कि you don't mean anything by saying that. It is just to oblige the court कि साहब क्योंकि आप कह रहे हैं इसलिए हम माफी मांग लेते हैं, उसका उससे बियॉन्ड कोई मतलब नहीं होता. सर मेरा कहना है कि एकदम, अरे साहब आप तो या तो इस पे आस्क बहस कर दो, तो हम एक नया कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर देते हैं इसी इनकी माफी के ऊपर से. अरे रुक जाइए भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, हम आपके सामने खड़े हैं. फिर मैरिज पे बताइए, फिर मैरिज पे आ जाइए, या तो इन दोनों केस को साथ में क्लब करके सुन लेते हैं. किसको? ये जो पेंडिंग आपकी पिटीशन है दूसरी वाली जी, WP 20512/18, ये और ये दोनों साथ में सुन लेते हैं. ठीक है. लिस्ट दिस केस along with WP 20512/18 in the week commencing 31 on ऐसा करिए on 3 अगस्त 2023 टॉप ऑफ द लिस्ट. चलिए 3 अगस्त जी, ठीक है. वीक कमेंसिंग नहीं, फ्री फिक्स डेट है 3 अगस्त. हम तो खुद ही चाहते हैं, बहुत दिनों पुराना है, नहीं पड़ जाए जो भी होगा, है ना. My lordship, counsel for the petitioner is currently not available. He is busy in a meeting. If you may kindly grant us a passover, or you may list this matter next week. का शुभ नाम डालिएगा मैडम का, लिखिएगा प्रेस फॉर एडजॉर्नमेंट एज
the arguing counsel is busy in some other, in the meeting of the bar. Full stop. An interim order was obtained by the petitioner on 23/12/2021. Full stop. Today, time is being sought, which is a serious matter. By way of indulgence, time is granted. List on 27 July, top of the list, with clear stipulation that no passover or no adjournment shall be admissible. Much obliged. 51. 52. भाई क्या है ये? Certain articles were published against which they approached this honorable court. उसके लिए डिफेमेशन लगाए? लगना तो वही चाहिए मगर अब हाई कोर्ट क्या करेगा इसमें? I don't know. I am representing Press Council of India. They had never filed any complaint to the Press Council of India that these newspapers are publishing the news. वो तो मैंडेटरी है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कंप्लेंट करना. कंप्लेंट करें. Now we are also. They may file a return to it, my lord. हैं? They have not filed a return. कोई जरूरत नहीं है, आप तो अपना merits पे बता दीजिए ना. How this petition is maintainable when there is a statutory remedy of filing a complaint before the Press Council of India. दीजिएगा Press Council of India का एक्ट है. I'll go through the fact that whether this has a complaint has been filed because I do not have instructions. अरे आप बताइए ना. अरे पिटीशन में आप पिटीशनर के लिए खड़े हो रहे हैं वकील साहब. फाइल कहाँ है आपकी? हाँ तो पढ़िए ना, बताइए उसमें से. My lord, I have not mentioned about the complaints. Then how can you seek indulgence? अब आप रिलीफ क्लॉज पे आइए. क्या मांगा है आपने? To pass the gag order and direct. आपने पुट्टू स्वामी का जजमेंट पढ़ा है? केएस पुट्टू स्वामी नहीं पढ़ा? No, my lord, but पढ़ा नहीं पढ़ा पहले ये बताइए वकील साहब. कैसे होगा ये? फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर कौन सा जजमेंट है? My lord, there are few judgments also which I have relied upon. हाँ बताइएगा कौन से हैं वो? My lord, I have even reiterated in my pleadings in my if para 5.15 is seen. हाँ पढ़िएगा. Sahara India, my lord. हाँ तो क्या कहा सहारा इंडिया में? पढ़िए सहारा इंडिया, बताइए क्या है? In the light of the law enacted herein above, anyone can accuse or aggrieve a person who genuinely apprehend on the basis of the content of the publication and its text an infringement of his rights under Article 21 to a fair trial, all that it comprehend that will be entitled to approach an appropriate writ court and seek an order postponement of the offending publication, broadcast, or postponement of the reporting in the certain phase of the trial. Identity of the victim or the witness or the complainant, and the court may grant such preventive relief on the balancing right of the fair trial and Article 19(1)(a) rights, bearing in the mind the above mentioned principle of the necessity and the proportionality, and keeping in the mind that such orders of the postponement should be short duration and should be applied in the case real and substantial risk of the prejudice to the proper administration of justice or the fairness of the trial. Such utilization device would not be unreasonable restriction. On the contrary, would fall within the proper constitutional framework. This matter pertaining to this it was pending before the court. That is why it. इनसे कैसे हुआ बताइए ना, थोड़ा सा समझाइए तो. और आपने प्रेस काउंसिल में क्यों नहीं शिकायत की? अगर you are a public figure, your life is in the public domain. Yes, madam. If your daughter-in-law is making certain allegations, सभी के छपते हैं पेपर में. पेपर वाले थाने जाते हैं, वहां से एक बीट रिपोर्टर खबर इकट्ठी करके लाता है कि क्या क्या खबर है, वो खबर छाप देता है. अब अपनी एक सेकंड बताइए ना, इसमें क्या लिखा है इसका? May I make a small submission, my lord, if my lord may permit me? जी बताइए. My lord, it is very much that the people publish, my lord, but that the particular matter pertains to the personal life. हाँ ठीक है ना. तो personal life, dragging the name of the father of the petitioner and the other family members of the petitioner. Petitioner कौन है? चलिए let us see who all are petitioners. The petitioner is
Shri Jalam Singh Patel. हाँ ठीक है, बताइए। अगर कल को आपके बेटे के साथ कुछ होगा या आपके पिताजी के साथ कुछ होगा तो नाम आएगा। Either you say that you have disowned the son and therefore your name should not be dragged. That is a very natural consequence. अभी भी हिंदुस्तान में वल्दियत हर जगह लिखी जाती है। I agree to my lord. My बस lord. जाइए फिर आप वहां पर अल्टरनेट रेमेडी अपना अवेल करिए, लिखिएगा। Para 5.13 they themselves say. Para 5.13. Yes sir. Clause of the 26 of norms of journalistic conduct. तो उसी में सर ये वहां जाएं और जो भी है। My lord, Correct, I may be permitted, my lord, because I am not, small submission, my lord. हाँ बताइए। Maybe there have been a complaint which have been filed, my lord, because I am not aware of it. हाँ तो अगर फाइल किए तो you'll be at liberty to pursue it, और नहीं फाइल करिए तो you can file it. My lord, having the case, even I have to file it, but there is no action being taken against it, and still that publications Then no relief is sought in those terms. My lord, but the respondents are coming up with just now without coming in a reply to regard disregard, then I would have responded. They have a preliminary objection. So, my You lord, are required to reply to that preliminary objection. they give it in the return, I'll file a rejoinder to it. I don't think that is necessary. Much obliged, as my lord do. लिखिएगा, आप विड्रॉ कर रहे हैं विद लिबर्टी टू परस्यू द रेमेडी। लिखिएगा। श्री, आपका शुभ नाम बताइए। अक्षय खंडेलवाल। अक्षय खंडेलवाल फॉर द पिटिशनर। श्री लोकेश जैन लर्नेड पेनल लॉयर फॉर स्टेट। श्री दीपक अवस्थी फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 4 प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। श्री I am for respondent number 11. Shri Gangrade for Devendra Gangrade for respondent number 11. Shri I am for respondent number 1. Harshvardhan Singh Rajput. Harshvardhan Singh Rajput for respondent number 1. Next. Shri Deepak Avasthi, learned counsel for respondent number 4, takes a preliminary objection as to the maintainability of this petition and in terms of the pleadings in para 5.13 of the writ petition, wherein it is mentioned that clause 26 of norms of journalistic conduct and clause H states that invasion in the personal life is not permissible. Full stop. It is submitted that there is a Press Council of India, which is the adjudicatory body in regard to the conduct of Press Council of India, adjudicatory body in regard to the conduct of the journalists and the publishers, etc. Full stop. Petitioner has a remedy to approach the concerned body or with a complaint to किस सेक्शन में होती है कंप्लेंट वो भी बता दें इनको। मैं सर मैं पूरी बुक दे दूंगा। देखा ही नहीं। With a complaint in regard to professional misconduct if any. Full stop. Learned counsel for the petitioner submits that he is not aware as to whether any complaint is already filed or not. Full stop. Next. It is he prays for withdrawal of the petition with liberty to prosecute his complaint before the appropriate authority as may be prescribed under the relevant act, and if the complaint is not filed, to undertake such measures as may be prescribed under law before the Press Council of India. Full stop. He will also be free, if so advised. नहीं छोड़ दीजिए, full stop. Thus, this petition is dismissed as withdrawn with the liberty in favor of the petitioner to take up the matter with the appropriate statutory authority constituted in this behalf. Complaining about the conduct of private respondents which are different newspapers. चलिए. And online media members are there. Huh? There are few online media members. हाँ ठीक है ना, सब covered है Press Council of India's.
खंडेलवाल जी को बोलिए, खंडेलवाल जी, और लिखा देते हैं इसमें, लिखिएगा ही विल बी ऑल्सो फ्री टू प्रोसिक्यूट दी रिस्पोंडेंट्स इफ सो एडवाइज फॉर क्लेमिंग damages अंडर द अप्रोप्रिएट लॉ। डैमेजेस क्लेम कर लें आप, सिविल सूट लगाएं, ठीक है सर। स्टे एप्लीकेशन उन्होंने रिप्लाई दे दिया है लॉर्डशिप। स्टे एप्लीकेशन के रिप्लाई आ गया है। हाँ ठीक है ना, बताइए क्या है। सर में एक्स पार्टी डिक्री है सर, बढ़े जिसके खिलाफ हमने 9/13 का आवेदन लगा रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाँ जो कि हमारा खारिज कर दिया गया है। बताइए ना, पढ़िएगा क्या लिख के खारिज किया है। सर निकालिए सर, पेज नंबर 8 सर। हाँ इस एमजेसी प्रकरण का आधार संक्षेप में इस प्रकार है कि पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 8 सर। 8 इंटरनल पेज 2 है। हाँ इस एमजेसी प्रकरण पैरा 4 एमजेसी प्रकरण का के संक्षेप आधार संक्षेप में इस प्रकार है। प्रतिवादी क्रमांक 3 कार्यपालन यंत्री संचालन संधारण मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड रीवा संभाग रीवा को नोटिस जारी की गई होगी, किंतु यह प्रकरण कार्यपालन यंत्री मध्य प्रदेश राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड दक्षिण संभाग का केस था सर, दूसरे डिवीजन को नोटिस गई है। ठीक है ना, आगे तो पढ़िए सर। कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, तथापि इस प्रकरण तथा प्रकरण एक पक्षी किए जाके प्रकरण क्रमांक 100 को निर्णय से निष्पादित कर दिया गया। उक्त निर्णय की जानकारी इजराय का नोटिस मिलने पर आवेदक प्रतिवादी क्रमांक 3 की ओर से आवेदक एक पक्षी निर्णय निरस्त किए जाने हेतु प्रकरण पुनः सुनवाई में ले जाने हेतु प्रस्तुत की गई सर। जबकि विवादित, इसके आगे एक लाइन सर, वादी के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 3 के रूप में कार्यपालन यंत्री संचालन संधारण मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड रीवा संभाग मध्य प्रदेश को पक्षकार बनाया गया था, जबकि विवादित प्रकरण आवेदक कार्यपालन यंत्री मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी शहर क्षेत्र से था, जिसमें वादी गण ने आवेदक कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया था। न्यायालय के निर्णय दिनांक 5/1/19 के उन्मान से कार्यपालन यंत्री संचालन संधारण मध्य प्रदेश राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड रीवा संभाग रीवा को पक्षकार बनाया गया तथा नोटिस भी उसी उन्मान से जारी की गई थी। ऐसी स्थिति में आवेदक कंपनी की ओर से कोई लापरवाही त्रुटि नहीं की गई। अकिंचन वाद का निराकरण कार्यपालन यंत्री संचालन संधारण मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी रीवा संभाग रीवा की उपस्थिति में की गई थी। दिनांक 12/10/2018 को आदेश पत्रिका के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 1, 2, 3 की ओर से का संबंध तामिली उनके लिपिक को दिनांक 3/1/2018 को तामिल होकर होना मानकर एक पक्षीय आदेश कर दिया गया था जी, जबकि आवेदक कंपनी को सूचना प्राप्त नहीं हुई। इसलिए न्याय हित में आवेदक कंपनी की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया जाना उचित होगा। अतः न्याय हित में आवेदक कंपनी कार्यपालन यंत्री मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड दक्षिण संभाग को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए एक पक्षी निर्णय आदेश दिनांक 5/1/2019 को पास किए जाने की प्रार्थना की गई है। सर जजमेंट के पैरा 13 पहले 6 पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आगे की बात करेंगे सर। वादीगण और प्रतिवादीगण ने अपने आवेदनों का लिखित जवाब प्रस्तुत कर अभिषेक किया है कि एनजेसी प्रकरण कंचन आवेदन क्रमांक 158/13 में आवेदक पक्षकार के रूप में संश्लिष्ट थे। उनकी ओर से अधिवक्ता स्वयं उपस्थित थे। सर अकिंचन केस में उपस्थित हुए हैं। ठीक है, एक रुक तो जाइए, एक मिनट रुक जाइए, उसके बाद ऐसी स्थिति में आगे बढ़िए। सर वादी के अकिंचन के संबंध में प्रस्तुत अकिंचन में कौन पार्टी था? अकिंचन में कौन पार्टी था? अगर आपके वकील साहब उपस्थित हुए थे सर, तो डिड ही ब्रॉट दिस फैक्ट कि मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत कंपनी को पार्टी बनाना चाहिए? इसमें जो है आपके वकील उपस्थित हुए, वकील की डिफेंस ये है कि गलत नाम से कंपनी को बनाकर प्रोसिक्यूट किया गया। सर अकिंचन में आप सिर्फ इतना दिखा दीजिए कि जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसमें जो कंपनी थी वह सही थी और बाद में दावे में कंपनी का नाम बदल दिया गया। इतना सा बिंदु है, इतना बता दीजिए बस। ये रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, बिना रिकॉर्ड तो ये कब देखेंगे आप? सर रिकॉर्ड यहाँ रखा हुआ है। सॉरी, राजकुमार शुक्ला उपस्थित है। वादी के अकिंचन आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया गया था। वादी के अकिंचन के संबंध में साक्ष्यों का परीक्षण भी किया गया था। ऐसी स्थिति में आवेदक की जानकारी न होना गलत पक्षकार बनाए जाने हेतु प्रस्तुत किया जाना निरस्त योग्य है। वादी के आवेदन पत्र आधार के वादीगण के आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण पुनः रिकॉर्ड नहीं लिया गया है, बल्कि अकिंचन आवेदन स्वीकार किए जाकर न्यायालय द्वारा अकिंचन पत्र पर दर्ज विविध प्रकरण क्रमांक 158/2013 रिकॉर्ड रूम में जमा किया गया था। अकिंचन का डिसीजन हो जाता है, वकील साहब अलग हो जाते हैं, उनका नाम वही तो समझे जरा। जमा किया था।
उन्हें प्रतिवादी गांव को सम्मन जारी कराया गया और विधिवत तामीली के उपरांत आवेदक गांव को जानबूझकर बस इतनी सी तो बात है जो हम पूछ रहे हैं, उतना सा पॉइंट है, आगे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ये अकिंचन में किसको पार्टी बनाया गया था? अकिंचन में आपका कहना यह है कि गलत पार्टी को ठीक है ना, सूट में गलत पार्टी को बनाकर डिग्री ले ली गई। तो अब आपको ये बताना है कि अकिंचन में जिसमें वकील साहब अपीयर हुए थे, जवाब दिया था, क्रॉस एग्जामिन किया था, उसमें हु वर दी पार्टीज? इसमें जो पार्टी थी अकिंचन का ऑर्डर कहाँ है सर? अकिंचन का पेज नंबर? अकिंचन का ऑर्डर मेरे पास नहीं सर। फिर देखिएगा, लेट रिकॉर्ड ऑफ MJC 158/2013 फ्रॉम द कोर्ट ऑफ थर्ड सिविल जज रीवा, थर्ड डिस्ट्रिक्ट जज रीवा, वी कॉल्ड फॉर proper adjudication of this case, in as much as it is an admitted fact that counsel for the present appellant had appeared before the trial court in MJC number 158 of 2013. Full stop. It is to be seen that whether in that MJC कॉमा दीजिएगा, CPC उठाइएगा। क्या लिखा? In that MJC under order 33, which was filed to seek permission to sue as an indigent person, whether the parties were same as were arrayed in the suit or they were different. Full stop. If they were different, then appellant will have a case to be looked into. If they were same, then appellant will have no case. Full stop. Let record of MJC 158/2013 indigent be called for by the registry list along with the record. तब तक के लिए स्टेटस को कर दें नोट से। इसमें हमारे खिलाफ कुर्की कार्रवाई चालू हो गई है। ऐसा दे दीजिए, इसमें क्या है? कंडीशनर कर दें सर, इसमें हम जमा कर देंगे। मनी डिग्री कभी स्टे नहीं होती। कंडीशनर स्टे कर दें, पेमेंट जमा कर देंगे। नहीं, जो भी आप बोलेंगे जमा कर देंगे। नहीं। In this case also, my lord, I am praying for time to file. 10,000 की कॉस्ट लगा के टाइम सर एक ही से दोनों एक जैसे? दो अलग अलग लोग हैं ना ये तो। हाँ, पर आजिम हसन खान है, एक ऑर्डर एक फहद खान है, ठीक है। इसमें 4 weeks टाइम टू फाइल रिजॉइंडर, उसमें लिखिएगा रिजॉइंड रिटर्न वाज फाइल्ड इन अगस्त 2020। सितंबर, इसमें सितंबर में होगा। सितंबर है, सितंबर लिखा शायद 1/9 was filed on 1/9/2022. Copy was also given on 1/9/2022. Despite that, no rejoinder is filed, though 10 months time has lapsed. Now petitioner's counsel is seeking time to file rejoinder, subject to payment of cost of ₹10,000. 4 weeks time is granted to file, or cost is to be deposited in High Court Legal Services Committee. चलिए। सर लीगल सर्विस वालों के मजे हो जाएंगे। क्या मजे हो जाएंगे? वो सब आप ही लोगों के वेलफेयर में खर्च होता है पैसा। अच्छा, जितना पैसा है ये लोक अदालत में जो आदमी जो है, जो वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको फीस देने के लिए खर्च होता है। आप चाहो तो आपको उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट दिलवा दें चार्टर्ड। ठीक है, ठीक। मेरे लिए खुशी की बात है कि उसकी वजह से नहीं, हाँ, गरीबों के लिए खर्च हो रहा है। बहुत अच्छी। My lordship, petitioner husband is working as a up स्वच्छता निरीक्षक in a municipal council. Ultimately, he died on 18/7/2020 by annexure P1, my lord, in the period of COVID. He is claiming under the scheme Mukhyamantri COVID Kalyan Yojana
उसमें उन्होंने क्लेम मांगा है. अल्टीमेट रिप्लाई हैज केम दे हैव डिनाइड माय क्लेम माय लॉर्ड. So I have lack of documents. I'm praying that 2 weeks maybe time will be given for file rejoinder, my lord. शुभ नाम बताइए. Costly Singh, my lord. Shri Kaushlendra Singh prays for and is granted 4 weeks time to file rejoinder. List after 4 weeks. I have blessed, my lord. 55. JP Patel. जी बताइए क्या है P3? सर वो लैंड एक्विजिशन का केस था 247 whether they can proceed under 247 or they should adopt for the land acquisition proceed under 2013 act. हाँ. Last order sheet में भी see. Finally see last order. अपील करना है 44 में. सर डिफिकल्टी ये हो रही सर क्या हो रहा है कि जो इन्होंने अवार्ड किया है उसके हिसाब से कैलकुलेशन जो पिटिशनर्स की लैंड लगभग 70 एकड़ 28 दशमलव कुछ हेक्टेयर गई है, लगभग 70 एकड़ गई है. उसमें ये लगभग 2,14,000 हमें कंपनसेशन दे रहे हैं. 70 एकड़ जमीन का? नहीं 70 एकड़ पर एकड़ के हिसाब से, पर एकड़ के हिसाब से, और उसका 100% सोल्यूशन दे रहे हैं. लगभग 4.5 लाख रुपए दे रहे हैं. 4.5 करोड़ रुपए. 4.5 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं. लगभग 3 करोड़. ठीक है ठीक है ठीक है. 3 करोड़ 36 लाख रुपए आ रहा है. एक मिनट साहब. सर अब इन्होंने क्या किया है हमारे साथ, तो ये प्रोसीडिंग में है. कुछ किसानों के साथ, मोस्टली किसानों के साथ ये क्या किया शुरुआत में इन्होंने कि दे एंटर इनटू प्राइवेट अग्रीमेंट. उसमें हायर कंपनसेशन दिया है. उसमें 11 लाख रुपए दिया है सर. उसमें एग्रीमेंट दिखा दीजिए सर. मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे. इसका जवाब दे दीजिए आप. नहीं ये तो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है आपका. ये क्या है? अब इसका स्पेसिफिक रिप्लाई दे दीजिए कि आपने अन्य किसानों के साथ जब 11 लाख रुपए में अनुबंध किया है तो हाउ यू आर एंटाइटल्ड टू पे द कंपनसेशन एट अ लोअर रेट. That is through private purchase, your lordship. ठीक है. What We are assessed by the state government. It is between the two parties. हाँ ठीक है. That the landowner agreed to sell their land. हम भी तैयार हैं. They are also ready. तैयार हैं अगर 11 लाख being assessed by the state government. No. लिखिएगा. This is being assessed by the ठीक state. है. श्री जयंत प्रकाश पटेल for the petitioner. The proceedings are still pending before the collector. हाँ ठीक है. रहने दीजिए. ऐसा अन्याय थोड़ा ना होगा किसी का. हम तो विड्रॉ कर लेंगे. 11 लाख के साथ अनुबंध कर, हम विड्रॉ कर लेंगे सारी प्रोसीडिंग. आप पूछ लीजिए, इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए. आप 11 लाख के साथ कर रहे हैं क्या अनुबंध? ये जो उनका ग्रीवांस है माय लॉर्ड मे बी डायरेक्ट. अरे आप कलेक्टर साहब जब वो एसडीओ को जवाब फाइल करिए. रुक तो जाइए और रुक जाइए थोड़ा सा और एफिडेविट आ जाने दीजिए आपके कलेक्टर साहब का. सबमिट्स दैट प्राइवेट रिस्पोंडेंट नंबर 4 in the same locality had entered into agreements to acquire land and had paid compensation at the rate of rupees 11 lakh per acre, whereas in the present case petitioner is being given less than half of the amount on which land has been acquired by the private respondent. Full stop. It is submitted that the basic issue is that whether land could have been acquired invoking powers under section 247 MPLR. Grant of surface rights. Your lordship, one more submission. They have filed an application for taking additional documents on record. He has filed a copy of the agreement that has been entered into with other private landowners. The land is purchased by the दिखा रहे हैं. Compensation is not paid by the state government. ठीक है दिखा रहे हैं. What he's saying that there is a disparity that is not true. क्या लिखा? 247 without resorting to the right provisions contained in the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013.
full stop. It is also submitted that private respondent has been entered into agreements and petitioner is also willing to enter into agreement with the private respondent, then without taking his concurrence can lend and depriving him of entering into such agreement with the private respondent number 4 can orders be passed by the subdivisional officer. All these aspects are silent. Full stop. Let collector Panna file his personal affidavit in this behalf. Full stop. In the meanwhile, respondent number 4 will also file its affidavit whether it is willing to acquire the land through agreement as has been done with the similarly placed farmers. May I just clarify one point? We are not acquiring the land. It is only for surface rights. हाँ, surface rights. He's willing to trying to acquire make the his surface case right. towards the right to fair compensation act. That is only. सरफेस राइट भी आप लेंगे, उसकी जमीन तो बेकार हो गई, वो खेती कर पाएगा क्या उसके ऊपर? उसके लिए compensation कैसे assess करना है? That is a different mechanism. प्राइवेट आप अपना एफिडेविट दे दीजिए ना कि आप प्राइवेट एक्वायर करने के लिए तैयार हैं, प्राइवेट सरफेस राइट एक्वायर करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? Land acquisition proceedings are entirely different. I have understood. We are only for लिखिएगा श्री शुभ नाम बोलिए आपका? सिद्धार्थ सिंह. We'll also file our detail. We'll file our detail. For respondent number 4 submits that he be granted time to file detailed replies. Land is not being acquired, only surface rights are being acquired. Yes. But he is in agreement that once surface rights are acquired for digging of the minerals, then that land will not be usable by the farmer petitioner. And ownership rights will not be transferred. Ownership right will stay with them. And ownership rights After will the stay purpose is served, the land will go back to the land. after 99 years. क्या मजाक है आप लोगों का? चलिए, लिस्ट कितने दिन में करेंगे जवाब? 1 week. 2 weeks. 2 weeks time is granted to do the needful. कर लीजिए, अगर आपकी कंपनी तैयार है तो इनको भी वैसे एग्रीमेंट कर लीजिए. Naturally, your lordships, our initial approach is to make attempts for private purchase. हाँ, कर लीजिए. In their application, they are demanding 30 lakh rupees per acre. नहीं, इसमें लिख लीजिए. It is there in the reply of the state government. Shri Patel has admitted that in case same amount is paid, which is whatever is prevalent as per the guidelines, which has been bargained with the neighboring farmers, petitioner will be willing to settle things for that amount. Chali. 11 lakh may be mentioned, my lord. That No, may no, be, lordships, that may put some amount. That वो तो आपने agreement लगाई maybe as per the prevalent rates, your lordships, because there are many landowners. हाँ, ठीक है, चलिएगा. Okay. I'm bring permission to file in this case reply. हाँ, क्या है? क्या मैटर है ये? Petition is a school, your lordship. My lord has granted interim protection to बच्चों का admission के लिए. अब एग्जाम तो देने दिया, लेकिन they are treating the student as a private student. तो वो बताएंगे ना ये? क्या वो रिप्लाई में क्या कहा आपने? सर ये कॉपी तो अभी दे रहे हैं, वो स्टूडेंट्स इन्हीं के दस्तावेज में दिखाना चाह रहा था. Annexure? Kindly see R3, R2 है नो? R2 जी. Page number 43 of reply. हाँ, क्या लिखा आपने? This is the मान्यता. हाँ. वैधता, मान्यता की वैधता सत्र देख ले साहब. 2020-21 तक की. 2019-20 और 20-21. हाँ. ये कब प्राप्त की गई? 27/5/19 को जी. At the time of that recognition, my lord, rule 2017 in force. And 3 मार्च 2020 को नया रूल आ गया. काइंडली सी पेज नंबर 41. 41 जी. 41. 40 जी. Paragraph 5. For rule 7, the following rules shall be substituted, namely, time period of recognition. Initially, a society trust will be given recognition for a period of 5 years. ये कब हुआ साहब? 3 मार्च 2020 को. हाँ, ठीक है. और पुराना वाले देख ले साहब. क्या करेंगे पुराना वाला देख कर? नहीं, उसमें 2 साल का था. तो ठीक है, तो इसमें उसके आगे तो पढ़िए, इसको पूरा तो पढ़ लीजिए. Initially, a society trust will be given recognition for a period of 5 years. The schools already recognized shall be allowed to increase the recognition for 5 years thereafter. मतलब जो स्कूल ऑलरेडी था, जिसके पास में ये नियम आने के समय पर रिकॉग्निशन था, उनको 2 साल से बढ़ के 5 साल हो जाना था. डीम्ड रिकॉग्निशन है. आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं क्या? हाँ. अरे भाई, जब इसमें डीम्ड है तो इसमें कहाँ लिखा है कि एप्लीकेशन देने पड़ेगी? नो सोसाइटी ट्रस्ट विल बी रिकॉग्नाइज साइमल्टेनियसली फॉर इतना इन द सेम बट फॉर कंप्लीशन ऑफ द क्वालिफिकेशन कंडीशंस. आपने खुद ही लिखा है ना. द स्कूल्स ऑलरेडी रिकॉग्नाइज shall be allowed.
there is a specific, पढ़िए, साहब को हिंदी में पढ़ाइए इसका नोटिफिकेशन निकाल के। ऐसा पोर्टल ये रहता है कि सर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल से नहीं होता, नियम से चलेंगे हम। नियम ये है, नियम किसने बनाया है? सर की जो उसमें रूल्स है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि उसको जब भी नवीनीकरण करना पड़े तो ऑनलाइन प्रक्रिया उसमें से कौन से नियम में लिखा है बताइए, कौन से नियम में लिखा है? इनकी बात भी मान ले तो पेज नंबर 14 पे जो 2017 के रूल्स में। हाँ, वो तो उसके बाद तो 2020 के रूल्स आ गए, तो 17 के वो कैसे पढ़ेंगे? 2017 के हिसाब से ही इनकी एक सेकंड, 17 का नियम 2020 में 3 मार्च 2020 को खत्म हो गया। नहीं, वो सब्स्टिट्यूट हुआ, उसकी जगह में सिर्फ वो 5 इयर्स। अच्छा चलिए, प्रक्रिया पेज 14 में क्या लिखा है? 14 में मान्यता के लिए आवेदन की प्रक्रिया लिखी साहब। हाँ, क्या लिखा है? नवीन मान्यता या नवीन मान्यता का नवीनीकरण अथवा अन्य मामलों के लिए सोसाइटी ट्रस्ट कैंपी ऑनलाइन के माध्यम से संबंधित संभाग के संयुक्त संचालक को किस तारीख को आवेदन दिया था आपने मिस्टर मिश्रा? सर कब दिया आपने आवेदन? इफ माय लॉर्ड में प्लीज टू अप्रिशिएट, मेरा पेज नंबर जो मैंने डॉक्यूमेंट फाइल किया है उसका पेज नंबर 4 देख लें, एनेक्सर P6। P6 पेज नंबर? पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे नहीं सर, मेरा एक आवेदन है, एप्लीकेशन फॉर इंटरिम डायरेक्शन। हाँ, उसका पेज नंबर 4। हाँ, उसका पेज नंबर 4 कब दिया है आपने सर ऑनलाइन? देख लें, हमारी जो एक्सपायर हो रही हायर सेकेंडरी की दैट इज 24-25 तक। ये पोर्टल की बात कर रहा तो मैंने पोर्टल से ही निकाल दिया सर, ये 24-25 ही तक की में एक्सपायर हो रही है। तो अब मेरे पुराने बच्चों को कैसे प्राइवेट कर सकते हैं रिजर्विस, अभी क्यों नहीं देते? पोर्टल की बात कर रहे हैं तो पोर्टल में देख लीजिए। वो 24-25 इसीलिए हो गई क्योंकि वो जो 2020 के नियम में, तो ये ऑटोमेटिक जब हो गई तो फिर आप प्राइवेट कैसे ट्रीट कर देंगे? आफ्टर 2 इयर्स मालूम जिनको फिल करना था ऑनलाइन फॉर्म्स। भाई जब आप पोर्टल पे दिखा रहे हैं आपकी बढ़ गई, इन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो फिर आपने क्यों बढ़ा दी? मैंने वो सब ये ऑनलाइन हो जाता है। P1 is the kindly। अरे भाई जब हो गया ऑनलाइन, that means that they had recognition up to 24-25. Now once they have recognition up to 24-25, you cannot show them as a private student. You cannot play with the career of these students. वो तो अभी आपके यहाँ क्या चलता है उसके ऊपर क्या आप विस्तृत प्रकाश डलवाना चाहते हैं रिजॉइंडर के माध्यम से? Do you want a detailed rejoinder on what is happening in your office? Or in the light of this, we can dispose of this petition saying that board will issue regular mark sheets. सर पोर्टल फिर से ओपन कर दो कि अब इन्होंने पोर्टल बंद कर दिया तो हम एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं सर। ये वो चालू जब तक आप करेंगे नहीं। जब मान्यता है 24-25 तक तो फिर पोर्टल की क्या जरूरत पड़ गई? सर अब ये उसको हम भर नहीं पा रहे हैं सर, इन्होंने बंद कर दिया सर। क्या है पोर्टल की लास्ट डेट क्या है? पोर्टल की तो सर कुछ समय सीमा में रहती है सर, तो बंद हो जाता है, तो इसको वापस करने के लिए खुलवाना पड़ेगा सर। आप खुलवाइए इसको। P1 देख लें एक बार सर। P1 देखिए। किस ऑर्डर से इक्विप्ड होकर यहाँ आए। हाँ। There is 9 school in this regard my lord। हाँ, इनको आपने शो कॉज नोटिस दे दिया। इसी में विषयांतर्गत लोक शिक्षा संचालनालय। ठीक है, there is a problem that there is a वो मेरा There's निवेदन a problem in regard to interpretation of your 2020 rules. Since your website already shows them to be recognized till 24-25, open your portal, they will file an application. पर ये जिला शिक्षा अधिकारी के लिए उनको आवेदन करके रिकॉग्निशन। हाँ, बोल देते हैं ना। हाँ, देखिएगा, श्री राजमणि मिश्रा, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। श्री मानस मणि वर्मा, लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर स्टेट, अलॉन्ग विथ श्री, आपका शुभ नाम बताइए? PS सोलंकी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर खंडवा। नेक्स्ट पैरा, Lorette counsel for the petitioner has filed this petition being aggrieved of show cause notice dated 21/1/2022, whereby district education officer Khandwa informed the petitioners that they have not applied for renewal of permission for recognition of the schools, and therefore after period of completion of the recognition, they will not be entitled to conduct their
activities in the schools. Full stop. That counsel for the petitioner submits that on 3rd March 2020, Gazette notification was issued by the state government, and in this Gazette notification, and why this Gazette notification, अंग्रेजी में दिया है एक सेकंड certain amendments were carried out in the Madhya Pradesh recognition of secondary and higher secondary school within bracket amendment bracket close rules 2017. Full stop. It is pointed out that rule 7 was substituted with the following. ये page 40 पर है इनके जवाब में इसको पूरा कोट कर दीजिएगा. Thus, it is submitted that once rule 7, which deals with the recognition, has been substituted, and it is mentioned that schools already recognized shall be allowed to increase the recognition for 5 years thereafter, and this fact is corroborated from the information available on the portal of the school education department, as has been filed by the petitioner along with IA 5803 of 2023 as Annexure P6, showing recognition of the school up to 24-25, there was no occasion to submit a fresh application. Thus, respondents were not justified in declaring the students to be private. Full stop. It is pointed out that petitioner already had recognition from 2019-20 till 21-22. यही है ना 21-22 है ना है R2 लग रहा है R2 24-25 अरे नहीं भाई आप नहीं हमारा जो पोर्टल अरे अभी आप रुक जाइए at recognition for the year 19-20 and 20-21. Full stop. Since amended rules came into force with effect from 3rd March 2020, and therefore there was no occasion to seek renewal. Full stop. It is submitted that if the renewal was not automatic, then instead of issuing show cause notice when the academic session 21-22 was in progress on 21/1/2022, this fact should have been brought to the notice of the authorities by the district education officer prior in time, as the academic session for the year 2020-21 came to an end in June 2021. Full stop. Thus, for the presumption on the bona fide presumption on behalf of the petitioner in regard to automatic extension, which is made out from the portal of the department also, as is contained in Annexure P6, students of the petitioner school cannot be allowed to suffer. Full stop. It is also submitted that now portal is closed, and even if petitioner wish to file an online application, that is not being accepted, and that has caused prejudice to the admissions to be made in the current academic session. Next paragraph. Shri Manas Mani Verma submits that there is no automatic extension of recognition. Substituted Rule 7 of the notification dated 3rd March 2020 has been misread. Full stop. In terms of the provisions contained in the rules of 2017, an application was mandatory. However, he is not in a position to explain that why portal of the state government is showing recognition up to 24-25, which appears to be in synchronization with the requirements of the substituted Rule 7. Full stop. Therefore, once on the portal of the state government,
recognition was shown to be extended. There was no occasion for the petitioner to have moved a fresh application seeking extension of recognition. Full stop. Thus, for the fault of the authorities of the state government in not clarifying the issue in time, petitioner and its students cannot be prejudiced. Therefore, petition is allowed. Show cause notice is hereby quashed. Respondents are directed to give a window of 7 days to the petitioner and other similarly situated persons to fill a fresh application for recognition by opening the portal, and if they fill the application, then to examine that in terms of the provisions contained in the rules of 2017 as amended in 2020 within further period of 30 days and do the needful. Full stop. In the meanwhile, as far as those students who have already passed out 10th/12th class in the academic session 22-23, they will be given mark sheets of a regular student, बोर्ड को पार्टी में बनाया, बोर्ड के लिए डायरेक्ट करते साहब. regular student, for which district education officer shall communicate the order of this court to the board of secondary education, which shall do the needful in further period of 30 days. एक छोटा सा निवेदन, ये जो बताया इन्होंने 24-25 के लिए साहब, तो ड्यू टू इंटरिम रिलीफ माय लॉर्ड हैज पास्ड द इंटरिम रिलीफ, देन वो पोर्टल हैज बीन ओपन. ठीक है, तो साहब इनसे एक निवेदन था कि ऑनलाइन भर दें. बोल तो दिया, पोर्टल खोल दीजिए, भरेंगे 7 दिन में, बोल तो दिया. 7 दिन सुनते नहीं है ना आप. नहीं आवेदन बच्चों, आप उनको सुन रहे थे, आप ऑर्डर नहीं सुन रहे थे. हमने कहा 7 दिन के लिए पोर्टल खोल दीजिए, जो स्कूल है उनको बोलिए आवेदन भरें, उसके बाद आपको आप जांच भी कर लीजिए. In above terms, petition is disposed of. ले लो. और कितने बचे? 3. हाँ ले लो. 19 केस बचे. 10 मिनट से ले लेना, 3:45 से. 57. सर पिछली दिनांक में रिव्यू पिटीशन में नोटिस हुआ था, अभी लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 का जवाब आना है. आप किसके लिए हैं? मैं पिटिशनर. हाँ, क्या है रिव्यू पिटीशन, बताइए. किस ऑर्डर से दुखी होकर आपने रिव्यू पिटीशन लगाई है? नेगलेक्ट P9 माय लॉर्ड. इसमें रिव्यू क्या करना है? कंटेम्प्ट है ना आपकी. कंटेम्प्ट में अगर इन्होंने रिमूव नहीं किया तो वी कैन हॉल देम अप. इनकी अंडरटेकिंग थी इनके वकील साहब की. रिव्यू में क्या करेंगे? आप कौन है? प्राइवेट पर्सन मान लो जिनका एनफोर्समेंट. हाँ, तो आप वहां जाके सुनवाई का मौका वहां अवेल करिए. क्यों नहीं आए थे आप पिटीशन में? साहब आप तो पार्टी थे. साहब हमारा नाम गलत लिखा था. क्या कर सकते हैं? तो जानबूझकर हमें नोटिस नहीं प्राप्त होने दिया गया. ये तो सब नहीं जानते. इसमें साहब पिटीशन में हमने आपकी अंडरटेकिंग थी कि आप उनका इलीगल हटा देंगे. JDA मतलब JDA has handed over to the corporation. Who is appearing for the corporation? Is not here. Corporation is the main party. देखिएगा, काउंसिल फॉर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जबलपुर is not present. He is directed to remain present and answer queries of this court. List on 28 जुलाई 2023. Sean. 60 तक करना, 60 के बाद फिर वो ले लेंगे. किस ग्राउंड पर है अपील सुहाने साहब? इसमें थ्रेसर का बीमा नहीं किया है. थ्रेसर का बीमा नहीं हुआ, खाली ट्रैक्टर का बीमा किया गया. वो तो उसमें जजमेंट है कि थ्रेशर इज अटैच्ड टू द ट्रैक्टर. इट इज हमारा ही ऑर्डर भी है. स्टेटमेंट भी दी है पॉलिसी के संबंध में, पूरा कहीं नहीं. ठीक है, लेकिन हमारा ही ऑर्डर है. कल भी 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट साइट हुए हमारे सामने. इसमें कहा है उन्होंने कि ट्रॉली जो है उसका बीमा अगर नहीं भी है और इट इज अटैच्ड टू द ट्रैक्टर,
नेक्स्ट वीक में रख ले कर दीजिए। लिखिएगा श्री सोहाने फॉर द अपीलेंट, Mrs. Anita Kathwas for the respondent number 3. Shri Sohane prays for time to go through the judgments as to whether thresher is required to be separately insured or it will be included as a part of the package of the insurance of the tractor. On his request, list after a week. 59. Secretary Gautam. जजमेंट है ना मिस्टर रोहित, आप कहाँ थे? अभी डिसाइड हो जाता, थ्रेशर का अलग से बीमा की जरूरत नहीं है, तो इट इज अटैच टू द ट्रैक्टर। सो सुप्रीम कोर्ट पे आपने डिसाइड किया, इलाहाबाद का भी आपका जजमेंट मुझे दे दीजिएगा मेरे को भी। Hello, I'm appealing for respondent number 5. I filed my reply in a vacating stay application. The order included is page number 16P1. Page number 16P1, my lords. I'm the municipal council. I give the permission for the colonization, my lords. Now, this particular petitioner was given the permission under the old rules. Now, the new rules of 2021 came into force. So we are trying to ask for certain documents and there is a one change in the rule. एक shelter fees होती है 2%, वो हमें लेनी है। आप एक बार बस में पढ़ सकते हैं। kind of a show cause notice होंगी। हाँ, पढ़िए show cause notice. This petition is against show cause notice. Kind of show. It's a mix of show cause and final. But then let's read that part. उपरोक्त विष्णागा दिवस संदर्भ में मैं लेख है कि आपके द्वारा ग्राम दिस तहसील नर्मदापुरम भूमि खसरा दिस कुल रकबा दिस हेक्टेयर पर कॉलोनी विकास की अनुमति ली गई थी। प्रकरण में संलग्न गणना पत्रक अनुसार नगर पालिका अधिनियम 1998 के अधिनियम 10 के प्रावधानों के तहत आवासीय इकाई आश्रय शुल्क एवं अतिरिक्त आश्रय शुल्क की राशि प्रावधान अनुसार निकाय कोष में जमा कराई जानी प्रस्तावित है। राशि जमा हेतु आपको संदर्भ पद द्वारा पत्र जारी बता दीजिए कब से लगा है आश्रय शुल्क? सर ये From which date it has come into force? सर 2021 से है ये। 21 से। और ये परमिशन किस तारीख को दी थी आपने? मैं वही बताना चाह रहा हूँ सर, मैं वो एक बार पढ़ देता हूँ शुल्क। अच्छा, इसके अलावा सर एक मिनट बस से कंप्लीट कर देता हूँ। इसके अलावा ये राशि जमा हेतु आपको संदर्भ पद द्वारा पत्र जारी किया था, किंतु आपके द्वारा आज दिनांक तक संलग्न गणना पत्रक अनुसार राशि जमा नहीं की गई। उक्त राशि जमा न करने की दशा में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसके संपूर्ण जवाबदारी उसके स्वयं होगी। नेक्स्ट पेज पे सर गणना पत्रक में कुछ और चीजें भी मांगी है। अरे मांगी होंगी आपने, इसमें जो लिखा है उसने की बात करिए जी। आप तो ये बता दीजिए कि आपने यू मे इशू अ शो कॉज नोटिस इन रिगार्ड टू अदर थिंग्स। As far as this order is concerned, you are required to show that आपने बिल्डिंग परमिशन इनको कॉलोनाइजेशन की परमिशन किस तारीख को दी थी, and you can deploy this charge retrospectively. This is the only issue which is to be decided in this case. आश्रय शुल्क आप बोल रहे हैं 2021 में लागू हुआ, नहीं इसके पहले भी था। इसमें दो हेड्स पे अलग अलग कर दिया, बाइफरकेट दिया होगा आपने, तो आप उसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर सकते, इतना बता दीजिए। सर उनका एक्चुअली केस ये नहीं था, उनका केस ये था जो पिटीशन पे। उनका केस छोड़ दीजिए, हम तो समझ गए ना केस को। सर फिर एक रिक्वेस्ट करें आप इसको ट्यूसडे लेने में जवाब फाइल करिए, आप एफिडेविट फाइल करिए इसमें। ट्यूसडे लेने में एक्सेप्ट फॉर द पिटिशनर श्री रोहित जैन फॉर रिस्पोंडेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, श्री अमित शर्मा फॉर द स्टेट। नेक्स्ट petitioner is assailing order annexure P1 whereby ashray shulk and additional ashray shulk are being sought to be have been claimed from the petitioner. Full stop. It is admitted that these were levied with effect from 2021. Full stop. Learned counsel for the respondent municipal corporation is required to inform as to when the permission for colonization was given and whether these charges can be levied retrospectively or not. Let a personal affidavit of the respondent number 5 be that is Chief Municipal Officer, Municipal Council, Narmadapuram be filed in this behalf within 7 days. List thereafter. In this matter, Your Lordship, I am praying for further 2 weeks time to file the reply. क्या हो गया? रिप्लाई रिकॉर्ड पे नहीं आया, नोटिस वेव्ड हुए थे लास्ट डेट में। अच्छा लिखिएगा। श्री AP Shah, learned counsel for the petitioner. Shri Amit Sharma again prays for and by way of last indulgence granted 2 weeks time to file reply. List in the week commencing 14 अगस्त 2023.
अब तक किसको गिरफ्तारी वारंट है मालूम उसको? गिरफ्तारी वारंट है मालूम? पुलिस से मैं नहीं स्टे करता हूँ इसमें लौटे, चूंकि क्या है ना, इन्होंने एक तो कारण बताओ, सूचना दिया, हमने रिप्लाई दिया, इसके बाद सीधे गिरफ्तारी वारंट कर दिया। सीधे गिरफ्तारी वारंट कैसे हो जाएगा? सीधे गिरफ्तारी वारंट। The petitioner's contention is that show cause notice was issued to the petitioner. Petitioner filed reply, and thereafter directly arrest warrant has been issued, which is illegal. It is directed that arrest warrant shall not be executed till the next date of hearing. चलो 76 छोड़ दिया आपने? हाँ? अच्छा हो गया। I was filed application for settlement, my lord. एक मिनट रुकिएगा। सेवेंटी 80, 81, 82, ठीक है, इन सब में नोटिस इशू कर देना। कंडोलेशन जहाँ हो उसमें कंडोलेशन में विद एडमिशन, जहाँ नहीं है वहाँ उस पर एंड कॉल फॉर द रिकॉर्ड। इसको खत्म करो यहाँ से। हाँ बताइए। और 84, 84, 88, 89, चलिए आगे जो आएगा देखूंगा जी। 89, 109, 109 नहीं, बस ठीक है। 110, 118, चलिए हाँ बताइए। Our application was allowed by the Nayab Tahsildar, my lord. Application for settlement, my lord. Settlement of what? For the some lands, my lord, and possession, my lord. जी किस प्रावधान में? That is, my lord, page number 22. Page 22, yes. क्या है लिखा, पढ़िएगा। 16/4/92। हाँ। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदिका श्रीमती सुखवरिया गोंड पति रघुवीर सिंह, दैट इज पिटिशनर गोंड ने ग्राम उड़ीसा के भूमि खसरा क्रमांक इतना इतना के व्यवस्थापन बाबत आवेदन पत्र पेश किया है। आवेदिका ने नकल खसरा भूमि खसरा नंबर इतना इतना स्थित ग्राम में पेश किया है। नकल खसरा नंबर 100 पेश किया गया है, जिसके अवलोकन से पाया जाता है कि आधार वर्ष 84-85 में आवेदित भूमि में अंश भाग 2.23 हेक्टेयर पर आवेदिका का अनाधिकार कब्जा दर्ज अभिलेख है। वर्ष 84-85 से 90-95 तक के खसरा अवलोकन से भूमि पर लगातार आवेदिका का उत्तराधिकार कब्जा पाया जाता है। आम इश्तहार का प्रकाशन कराया गया। निर्धारित अवधि समाप्त है। किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। आम इश्तहार एग्जिबिट D1 संलग्न प्रस्तुत है। पटवारी प्रतिवेदन तलब किया गया, जिसके अवलोकन से पाया जाता है कि आवेदिका तथा उसके अन्य परिवार में पट्टे की भूमि बिल्कुल नहीं है। आवेदित भूमि राजस्व विभाग की है, वन सीमा रेखा से बाहर है। किसी भी प्रकार के फलदार वृक्ष, इमारती लकड़ी अथवा खनिज संपदा नहीं पाई जाती है। भूमि किस्म बंदोबस्त बगार है तथा वर्तमान में भी बगार है। इस ग्राम के शासकीय भूमि का रकबा 10% से अधिक है। हल्का पटवारी का कथन एग्जिबिट D3 लिया गया। हल्का पटवारी ने अपने कथन में प्रतिवेदन किया कि दिए गए तथ्यों की पुष्टि की है। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एग्जिबिट D4 प्राप्त है। ग्राम पंचायत के व्यवस्थापन स्वीकार करने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया। आवेदिका सुखवरिया व उसके पति रघुवीर सिंह गोंड का कथन लिया गया है, जिससे पत्नी अथवा पति के नाम पट्टे की आराजी बिल्कुल नहीं पाई जाती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आवेदिका आदिवासी है, पूर्णतया भूमिहीन कृषक है तथा भूमि व्यवस्थापन की पात्रता रखती है। अतः आवेदिका सुखवरिया पत्नी रघुवीर सिंह गोंड निवासी 100 में से अंश भाग का व्यवस्थापन दखल रहित भूमि विशेष उपबंध अधिनियम एवं संशोधित अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार किया। Thereafter, my lord, in 2011, my lord, respondent number 1 filed application. And this order has been upheld by the commissioner.
it has been upheld by the commissioner, my lord. It was remanded back by the revenue board, my lord. देखिएगा issue notice to the respondent on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. In the meanwhile, parties are directed to maintain status quo as it exists today. Obliged. काउंटर सिग्नेचर मैटर वाला बिटवीन them पेज नंबर कौन सा 36 है? 36 गाड़ी का नंबर सही कर दीजिए, काउंटर सिग्नेचर कर देना ऑर्डर 99 is also 99 में भी सेम ऑर्डर कर देना. Lordship, in this case, an order was passed in the favor of the petitioner by the RERA. Thereafter, he filed an execution and RRC has been issued at page number 27. Now that RRC has not been executed till date. Petitioner's contention is that a revenue recovery certificate is issued by the Real Estate Regulatory Authority, Madhya Pradesh, in case number M-BRS-17-0572. But Collector Bhopal is not executing the same, though over 3.5 years time has lapsed. This petition can be disposed of with a direction to Collector Bhopal to execute the RRC within period of 3 months from the date of the receipt of the communication and under intimation to the registry of the High Court. Unless said judgment of the authority which has issued the RRC has been stayed by any superior court. 100. Representation of the petitioner, my lord, is pending before respondent number 2, my lord. Petitioner's contention is that his representation is pending before respondent number 2, Commissioner, Municipal Corporation, Katni. Same be directed to be decided. 15 दिन 60 दिन. This court has not expressed any opinion on the merits. क्या representation है? Building permission. Representation for grant of building permission. तो डीम्ड परमिशन है ना, उसमें एक साइड रुक जाइए. डीम्ड परमिशन है, अगर आपने अप्लाई किया है उसके बाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में डीम्ड प्रोविजन है वो, तो that there is a deemed permission. But they are not permitting. अरे भाई, how can, if you have applied in the proper format and if they have not denied the permission, then there is a provision for deemed permission. कैसे हो जाएगा ये? अरे भाई, अरे वकील सब नहीं तो my lord, मैं observe that if I'll not observe anything. This is not my job. This is your job to advise your client that there is a deemed permission. But my lord, where is the application? That is page 22. Page 22. हाँ दिखाइएगा. आपका आवेदन कहाँ है? Page 22. Page 22. ऐसे थोड़ा ना दिया जाता आवेदन. 30/6/23 को तो आपने आवेदन दिया है. This is the reminder, my lord. ये आवेदन पत्र 8/2/2023 एवं 10/4. नक्शा कहाँ है इसका? ये वो तो भाई, आवेदन पत्र नक्शे के साथ दिया जाता है. आर्किटेक्ट उसमें फीस भरता है. वो सर ये पोर्टल पे फीस भरी जाती है. P2 पे है वो. P2 पे क्या है? 5 रुपए GST. ये थोड़ा ना भरी जाती है, फीस तो ज्यादा भरी जाती है. कुछ है नहीं इसमें. 15/11 ये सर इसमें देखेंगे आप. हाँ. आवेदक द्वारा दिनांक 15/11/22 को संपूर्ण अर्हता पूर्ति करते हुए ऑनलाइन नक्शा स्वीकृत करने हेतु आवेदन प्रेषित किया गया है, जिसमें सभी आवश्यक NOC प्राप्त कर लगाई गई. उक्त प्लॉट 40/80 वर्ग फीट कुल 3200 वर्ग फीट का है. डीम्ड परमिशन है ना, आपने आवेदन लगा दिया, आप खुश रहिए, इसमें कुछ है नहीं. जाइए कंस्ट्रक्शन चालू करिएगा.
they may pass appropriate order, my lord. At least they may say that you have deemed permission. नहीं, sorry. You withdraw it and pursue your remedy because the act itself provides for deemed permission. There is something more than what it meets the eyes. Sorry. Then I withdraw. My lord. Praise for withdrawal of the petition. Same is dismissed as withdrawn. With liberty to pursue the remedy. With liberty to pursue his case before the competent authority. Well. Lord's petitioner is In this matter, I am appealing for the caveat. Unfortunately, my caveat has not been attached with it. कोई बात नहीं. श्री आपका शुभ नाम बताइए. सौरभ सिंह. सौरभ सिंह for the petitioner. श्री Priyank Avasthi. Priyank Avasthi. Priyank Avasthi appears for the caveator. Let copy of the writ petition be supplied to Shri Priyank Avasthi. आज दे देंगे कि 3 दिन का समय. कॉपी हमें मिल चुकी है सर कैविएट की. अरे कैविएट की मिल गई, पिटीशन की कॉपी तो देंगे ना इनको. दे देंगे. कैविएटर को पिटीशन की कॉपी देंगे ना. जी. सप्लाई आज देंगे कि 3 दिन का समय चाहिए, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे. आज दे देंगे. हाँ. Supply the copy of the petition to Shri Avasthi during the course of the day. Shri Avasthi may seek instructions. List this case on Monday, Lords. Tuesday, 25 जुलाई 2023. My lords, may also directed them to implead me as a party. ऐसा थोड़ा ना होता है वकील साहब. आपने केविएट लगाई वो इम्प्लीट कर लेंगे. नहीं ठीक. 125. Lord, sir, I'm praying for next week, sir. हाँ? I am praying for next week. Senior स्वास्टिक नोट चली गई. तो आपने मेंशन क्यों किया था? केस मेंशन क्यों किया था आपने? बाद में चली गई. बताइएगा P1 की क्वेश्चन के बारे में. क्या है P1? सर P1 जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला पंचायत सीहोर, डिस्ट्रिक्ट सीहोर. P1 सर काइंडली पेज नंबर 10 सर. पेज नंबर 10 यस. सर ये 7 जुलाई 2023 को कि इनको मतलब इन्होंने टेंडर के लिए निकाला है. हाँ. कि टेंडर इशू करे इन्होंने कि इस तक मतलब जो जमा करेंगे फिर वो टेंडर पे आ जाएंगे. और सर हमारी इसमें ये थी कि जो पेज नंबर 11 पे जो ऑर्डर है उसमें जो भोपाल कमिश्नर डिवीजन समीरीट आपने अपील की, इसकी अपील होती है. आपकी अपील पेंडिंग है? वैसे इसकी तो नहीं है सर. निविदा की थोड़ी ना अपील होती है. आपका जो लोक सेवा केंद्र था अगर उसको खत्म कर दिया गया है या उसका अवधि समाप्त हो, आप कहना क्या चाह रहे हैं वकील साहब? ये ऑर्डर सब कुछ है ही नहीं साहब, ग्रीवांस ही नहीं इनका. लास्ट में देखें साहब. हाँ. यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक सेवा केंद्रों की निविदा के संबंध में निविदाकारों द्वारा पूछे गए प्रश्न तथा उनके उत्तर के संबंध में यदि शासन राज्य लोक सेवा अभिकरण के निर्देश उत्तर दिए जाते हैं तो जिले में से जारी स्पष्ट उत्तर को मान्य नहीं किया जाएगा. केवल और केवल अंतिम रूप से राज्य लोक सेवा अभिकरण के से जारी किए गए निर्देश ही मान्य होंगे. निविदाकारों को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि RFP संशोधनों तथा प्रश्नोत्तर का अवलोकन कर निविदा में भाग लेवे एवं जिन निविदाकारों द्वारा निविदाएं ऑनलाइन जमा की जा चुकी हैं वह निविदाकार पुनः संशोधन अपना अनुसार अपनी निविदा MP टेंडर पोर्टल में जमा करें. तो इससे कुछ है ही नहीं, आपकी कोई ग्रीवेंस ही नहीं है. अभी कमिश्नर डिसाइड करेगा. आपका तो ऑलरेडी फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन में ऑर्डर हो चुका है. सर वो तो हो चुका है पर सर ये कभी हो जाता है, ये निकल जाता है 7 जुलाई वाला सर. तो फिर ये जो कमिश्नर के यहाँ पेंडिंग है जो पिटिशन अभी तो अपील पेंडिंग है. जब होगा तब देखेंगे. अभी कुछ है नहीं इसको. 15/6 का आदेश. कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है आपके पक्ष में. 23 जून का ऑर्डर है आपका. 10/7 तो लास्ट डेट थी, उसके बाद प्रोसेस होगा, सब होगा. चलिए, आपने अप्लाई किया था नहीं किया था? हम This petition is premature. In the first round of litigation, by order dated 23 जून 2023 in WP 13207/2023, a direction is already issued to the Commissioner of Bhopal to decide a petitioner's pending appeal. Full stop. Since that full stop. There is no change of circumstance after that, so to show indulgence in the matter now. Petition being premature is dismissed as not maintainable. Tell you.
हितेश अग्रवाल। 127. My lord, may please to see page 56, my lord. While deciding my application, my reply was considered and it was rejected, my lord. क्या लिखा है पढ़िएगा। ये पेज नंबर 56 में नीचे लिखा है, आवेदक ने आवेदन के जवाब में यह प्रकट किया है कि यह सुस्थापित विधि का सिद्धांत है कि न्यायालय को अंतरिम प्रक्रम में वह आदेश पारित नहीं करना चाहिए जो मामले के अंतिम निराकरण के समय स्वीकार किया जा ऊपर से सकता है। पढ़िएगा क्या मैटर है। आप हस्बैंड हैं जी सर। आपके खिलाफ मेंटेनेंस का ऑर्डर है जी जी। उन्होंने 125(3) में एग्जीक्यूशन लगाया जी जी। उसमें फिर क्या हो गया। हमने 126(6) लगाई सेटिंग असाइड एक्स पार्टी। हाँ। और ये लगाया कि स्टे कर दिया जाए तब तक हाँ। कि जब तक ये 126(6) हमारी डिसाइड नहीं होती। हाँ। उसका कोई जवाब नहीं दिया रेस्पोंडेंट ने। और हमारा जो जवाब था उनके इंटरिम एप्लीकेशन। ठीक है 125(3) में तो है आप जमा करा दीजिए पैसा आप जमा करा दीजिए। नहीं इस तरीके से आप प्रताड़ित नहीं कर सकते अपनी पत्नी को। हाँ ये you first deposit it and then I'll say that part of it may not be disbursed in favor of your wife and only part of it may be disbursed subject to the outcome of this 126(6). But you cannot play hide and seek with your wife by not depositing the amount of maintenance and then filing an application for setting aside ex parte proceedings. नहीं हमको नोटिस सर्व नहीं हुआ। नहीं हुआ होगा वो कोर्ट देखेगा। अभी इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है। नहीं वो कोई उनकी रिप्लाई नहीं थी। कोर्ट ने कह दिया उनका शपथ पत्र प्रस्तुत। कोई रिप्लाई की जरूरत ही नहीं है। 125(3) का प्रावधान बहुत क्लियर है और जितने महीने का डिफॉल्ट है उतने महीने आपको जेल भेजा जा सकता है। या तो आपको जेल से बचना है तो मेंटेनेंस का अमाउंट जमा करा दीजिए। There is a decision of this high court saying that for each month of default you can be sentenced to jail. I have to obtain instruction for obtain instructions क्या करना है आपको पैसा जमा कराना है। सरकारी कर्मचारी हैं आप रेलवे में काम करते हैं। हमको 10,000 मिलता है और ठीक है हमने पे स्लिप भी प्रस्तुत की है। हाँ, और 8,000 रुपए मेंटेनेंस है। ठीक है तो 2,000 रुपए में अपना काम चलाइए रेलवे के कैंटीन में खाना खाइए सब्सिडाइज खाना मिलता है। 10 कहाँ है पे स्लिप कहाँ है आपकी पे स्लिप है 47 पे। हाँ 47 पे वो भी देख लेते हैं जी। उसमें डिडक्शंस करवाते होंगे। हाँ डिडक्शन है। हाँ वो हम समझते हैं ना। आपका मूल वेतन कितना है 21,500। जी मैं अलाउंस 7,310। जी जी जी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,206। जी ठीक है। ग्रॉस पे है 30,016 रुपए। हाँ 30,016 रुपए। जी जी। कट पिट के आपने लोन ले लिया इसी। हाँ 14,600। वहाँ कम पैसा कटवाइए। जी जी। मेंटेनेंस दीजिए कुछ नहीं है। माय लॉर्ड चलिए वो इतना ऑर्डर कर दें 126(6) के साथ इसका निर्णय कर। नहीं हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि आप मेंटेनेंस जमा कराएंगे तभी 126(6) वो एंटरटेन की जाएगी नहीं तो इसको विड्रॉ कर लीजिए। विड्रॉ। हाँ श्री Vijay Raghav Singh, after arguing for some time and unable to convince this court, prays for withdrawal of the petition, miscellaneous this petition. Accordingly, same is dismissed as withdrawn. इतना ना बताया करें हमको। रेलवे के कर्मचारी मिनिमम वेजेस से कम तो प्राप्त कर ही नहीं सकता। क्लास 4 है 30,000 मिलता है। 30,000 मिलता है तो पत्नी को 8,000 देने में क्या तकलीफ है। नहीं तो कुछ हाथ में आता ही नहीं सर। 128 Lord sir, in Excerpt P2, my application of stage carriage, regular stage carriage permit pending before the respondent number 2, 11/6/2023 Lord sir. ये मनिंदर सिंह भट्टी साहब का ऑर्डर लगा पेज 24-25 पे। इनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है मिथिलेश गर्ग के लिए कर दीजिए। ओके सर। हाँ 132 Order dated 17/3/2023 and Exhibit P1 is under challenge by which the respondents have directed to lodge the FIR against 18 persons including petitioner your lordship. So this impugn order has been issued on the basis of the inquiry report your lordship. The inquiry report is annexed P8 page number 83 to 143 your lordship. In this inquiry report your lordship the name of petitioner is not mentioned. Not a single allegation has been leveled against me. Annexed P8 page number 83 to 143 your lordship. Just a minute.
क्या हैं आप? सर इसमें उस समय इंचार्ज प्रिंसिपल थे सर, आई के स्कूल के लॉर्डशिप। ये जय कृष्ण लॉर्डशिप जय कृष्ण उपाध्याय लॉर्डशिप, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी रायपुर सोनौरी रिवर डिस्ट्रिक्ट। जी। फिर सर इस इंक्वायरी 3 इंक्वायरी लॉर्डशिप हुई हैं, हाँ फिर P3, P5 और P8। हाँ तीनों इंक्वायरी रिपोर्ट में एक भी एलिगेशन हमारे खिलाफ नहीं है। कहाँ है बताइए हाँ ना सर, फिर। P3 देख लें सर, पेज नंबर 23 लॉर्डशिप, 3/4/2021। FIR तो दर्ज हो गई ना? नहीं अभी नहीं हुई सर, FIR नहीं हुई, ये ऑर्डर हुआ सर। और इसमें जो सभी लोगों को सर इसमें आइडेंटिकल ऑर्डर सर पास हो गए, स्टे सर। नहीं नहीं, आइडेंटिकल ऑर्डर हमें मत दिखाइए, ये लॉर्डशिप, पहले आप अपना केस बताइए। ये लॉर्डशिप। तो सर ये P3 जो है इंक्वायरी रिपोर्ट डेटेड 3/4/2021 से लॉर्डशिप। पेज नंबर? तो पेज नंबर 23 है। हाँ पहले पेज 21 पे पढ़िएगा, ये क्या है? 21 जस्ट। सर ये सस्पेंशन ऑर्डर सर हमारे पढ़िएगा तो थोड़ा सा इसको। 2019 में। हाँ कलेक्टर रीवा की टीप दिनांक सो एंड सो में प्रतिवेदित तथ्य के अनुसार श्री जयकृष्ण उपाध्याय व्याख्याता संकुल प्रभारी प्राचार्य सो एंड सो जिला रीवा द्वारा वर्ष 2018-19 एवं 19-20 में शून्य छात्र संख्या वाली संस्था प्राथमिक शाला बिल्हा सो एंड सो 3 शालाओं को बगैर शासकीय आदेश निर्देश एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के षड्यंत्र पूर्वक बंद कर उस शाला में पदस्थ शिक्षकों की मनमाने ढंग से अन्य स्थलों पर संलग्न किया गया। इस प्रकार से उपाध्याय द्वारा शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना प्रत्येक छात्र को स्थानीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा दिए जाने संबंधी उद्देश्य की पूर्ति न कर सौंपे गए कर्तव्य एवं दायित्व के विपरीत कर घोर लापरवाही एवं उसके बाद क्या हुआ? सर इसी में सर ये इंक्वायरी रिपोर्ट है सर। ये हाँ एनेक्सर, ये एनेक्सर सर P3 पेज नंबर 24 जी। सर ये पहली इंक्वायरी रिपोर्ट थी। इसमें क्या पाया गया? हाँ सर इसमें हमारे खिलाफ कुछ नहीं पाया गया, 3 लोगों का नाम आया था सर इसमें, उनके खिलाफ में FIR हो गई थी। ये सर उनके नाम है सर। एक सेकेंड, अभिमत जो है सर पेज नंबर 28 में सर, 28 में सर लास्ट सेकंड पैराग्राफ फ्रॉम द बॉटम में रीड। हाँ प्लीज। प्राप्त अभिलेखों एवं साक्ष्य तथा बयान के आधार पर पाया गया कि श्री अशोक कुमार शर्मा, श्री अखिलेश तिवारी एवं श्री विजय तिवारी के द्वारा कूट रचित दस्तावेज तैयार कर शासन के खजाने से अनाधिकृत व्यक्तियों के खाते में बड़ी राशियों का अंतरण किया गया। इंक्वायरी आपके संबंध में थी कि नहीं थी सर? नहीं थी। नहीं थी। चलिए ठीक सर इसके बाद सर जो लेटेस्ट सर जिसके आधार पर जो FIR हुई है सर वो P8 सर। एक सेकंड सर, ये किस स्कूल से संबंधित हैं ये तीनों लोग? सर ये तीनों सर ये अलग अलग स्कूल सर, ये DO ऑफिस में थे सर। बताइए तो। अशोक तिवारी जो है सर DO ऑफिस में थे। हाँ और बाकी लोग, बाकी ये जो हैं? अशोक शर्मा जो है वो कैशियर थे। कहाँ पर? वो सर DO ऑफिस में सर, DO ऑफिस में ही थे सर। कैसे मालूम पड़ेगा? कहाँ से मालूम पड़ेगा इनका क्या कनेक्शन है? सर इसमें जो ये P3 पेज नंबर 24 है सर, इसमें पेज नंबर ये सर 24 में जहाँ से स्टार्ट होते हैं P3, इसका जो पॉइंट नंबर 3 है सर, इसमें उक्त जांच के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सो एंड सो डेटेड सो एंड सो कुछ श्री अशोक कुमार शर्मा लेखापाल कैशियर एवं श्री अखिलेश तिवारी अनुदान कक्ष प्रभारी को अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु पत्र जारी किया, किंतु इनके द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त के संबंध में श्री अशोक वर्मा द्वारा पत्र लिखकर सहयोग करने से इंकार किया गया। पुनः इस कार्यालय द्वारा क्रमांक सो एंड सो के द्वारा रिकॉर्ड उपलब्ध कराने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी ने पत्र लेख किया, किंतु चेतावनी के बाद भी निलंबित लेखापाल ने जांच दल को सहयोग नहीं किया। जी सर ये जो इंक्वायरी सर हुई थी इसके बेस में इन तीनों के खिलाफ में FIR दर्ज हो गई। तो सर जो अभी लेटेस्ट जो इम्प्यून ऑर्डर है सर, वो जो एनेक्सर P8 की जो जांच रिपोर्ट है सर, उसके आधार पे सर ये FIR करने का P8 इम्प्यून ऑर्डर तो पढ़िए। इम्प्यून ऑर्डर P1 है लॉर्डशिप, P1 पढ़िए। P1 पेज नंबर 16 है। उसमें क्या लिखा है पढ़िए जरा। उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में लेख है कि प्रधान महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर के पत्र दिनांक 11/1/2021 के लेखा परीक्षा निरीक्षण
प्रतिवेदन सो एंड सो की कंडिका क्रमांक 1 में अनुदान प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन एवं एरियर्स राशि का कपटपूर्ण आहरण एवं अन्य वित्तीय अनियमितता से संभावित हानि रुपए 70,67,000 की आपत्ति ली गई। उक्त आपत्ति के संबंध में संचालनालय के पत्र दिनांक सो एंड सो डेटेड 15/2/21 द्वारा प्रकरण की विधिवत जांच परीक्षण कर वस्तु स्थिति से कार्यालय प्रधान महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर को अवगत कराने के निर्देश दिए गए। निर्देश के परिपालन में कलेक्टर जिला रीवा द्वारा 5 सदस्यीय जांच समिति गठित कर जिला कोषालय अधिकारी रीवा की अध्यक्षता में प्रकरण की जांच कराई गई। कलेक्टर जिला रीवा के पत्र क्रमांक सो एंड सो डेटेड 5/8/2021 द्वारा जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर संचालनालय के आदेश क्रमांक सो एंड सो डेटेड सो एंड सो द्वारा 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। दोनों जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष अनुसार अनुदान मद अंतर्गत कर्मचारियों के डुप्लीकेट बिलों को तैयार कर अन्य व्यक्तियों के बैंक खाता में भुगतान देयकों के आहरण में कार्यालय के प्रत्येक स्तर के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा सुसंगत नियमों का पालन नहीं किया गया। बात पूरी हो जाती है भाई। प्राचार्य जो है वो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग अथॉरिटी उस स्कूल का, और आप क्योंकि प्राचार्य थे और डीडीओ थे उसके द्वारा, इसलिए आपके द्वारा गलत आहरण किया गया। नहीं, हमारा सर उस समय जब से उस समय हम सस्पेंड थे सर। अरे भाई जब ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट सर, इंक्वायरी रिपोर्ट आप गलत कह रहे हैं, आप फिर से पढ़िए। मिश्रा जी ऐसा है कि पढ़ के आना पड़ेगा। आप सस्पेंड हुए 3/10/19 को। एक सेकंड, आपका सस्पेंशन ऑर्डर है 3/10/19 का सर, पेज 21 पर। जी जी। और ये जो समय अवधि है वो है जनवरी 16 से लेकर 8/2019 तक की, और तब आप सस्पेंड नहीं थे। सर जो सेकंड लाइन में लिखा हुआ एक बार जांच रिपोर्ट देख लेते हैं सर। नहीं, जांच रिपोर्ट हम अभी नहीं देखेंगे। इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट्स ऑन पेमेंट ऑफ पीएफ पर रजिस्टर्ड एडी पोस्ट विद इन 7 days, रिटर्नेबल 4 weeks। सर इसमें सभी लोगों को सर इंटरिम ऑर्डर सर मिला होगा। नो केस फॉर इंटरिम ऑर्डर इज मेड आउट बिकॉज prima facie the allegation on the petitioner is that as a drawing and disbursing officer in his capacity as a principal of the government higher secondary school Soneri Riva for the period starting from January 2016 to August 2019, as per the records of the principal accountant general Madhya Pradesh Gwalior, a sum of rupees 70.67 lakh was fraudulently withdrawn towards the areas of the teachers pertaining to aided schools, and full stop. Though petitioner submits that his name is not mentioned in the inquiry report and he was under suspension, but this fact is prima facie not correct, in as much as petitioner was placed under suspension by the Commissioner Riva Division Riva Wide Order dated 3/10/2019, whereas the so-called misappropriation is from January 2016 to August 2019, and therefore in his capacity as the principal of the government higher secondary school and drawing and disbursing officer, comma, it cannot be said that there is no prima facie material to prosecute the petitioner. There is no parity with the other persons whose names have been mentioned in the impugned order. Therefore, request for interim relief is hereby rejected. चलिए, हो गई, हम्बल हो गई। चलिए नेक्स्ट केस। इसको इसके लिंक कर दें लॉर्ड। नहीं, अभी नहीं, सारे केस लिंक है सर ये। हाँ, बाद में हो जाएंगे। May it please your lordship. Lordship, on the previous occasion, you were gracious enough to allow me the amendment of the prayer, which has been done, Lordship. I filed an IA to that effect. लिखिएगा, considered on IA 9746/23, an application for adding deleting parties. Same is allowed. Let necessary correction be carried out within 3 working days. Notices be issued to the newly added parties on payment of PF within the aforesaid period. Lordship, there are no newly added parties. That's incorrect. This is just for the amendment of the prayer clause. अच्छा, notice हटा दीजिए. Let amendment be carried out. State may file reply to the amended petition within 4 weeks. List thereafter. Lordship, kindly hear me on the interim relief part. हाँ बताइए, पहले अमेंडमेंट कैली करिए, फिर सुनेंगे इंटरम रिलीफ पर। चलिए, when is your lordship? आइए, शो नहीं हो रही, यहाँ तो लगी हुई है, इसमें नहीं, इसमें कॉज लिस्ट में भी लिखी हुई है। लेट मी कैरी आउट करें।
कलेक्शन उसके बाद सुनेंगे। चलिए नेक्स्ट केस। When is Lordship listing the matter? नेक्स्ट आएगा। चलिए 136 Grateful. My lord, petitioner by the instant petition have challenged the special case in a special court in case number 334-221 for questioning the consequential proceeding pending before a special court and impugned order P18, my lord. किस ग्राउंड पर? If the entire पूरा मतलब हमारा जो उसमें जो ये देख लिया जाए इंस्पेक्शन नोट 28/9/21 पेज 88, हाँ so it does not मतलब constitute the element of dishonesty and ingredients required for allegation of theft of क्या है? electricity. पढ़िएगा इसको। My lord. इसकी साफ कॉपी पेश करी तो पढ़ने में ही नहीं आ रहा। पेज 87 88 आपका। 88 पेज 88 हाँ पेज 88 इज नॉट रीडेबल। एक और दूसरे भी उसी में और भी टाइप्ड कॉपी ऑफ द टाइप कॉपी लगा है मैडम भाई सर। पेज नंबर एक ये पेज 88 का सर टाइप कॉपी 17 नंबर कॉलम 17 और दूसरा में एक और में भी बता देता हूँ सर माय लॉर्ड। हाँ उपभोक्ता के मीटर कनेक्शन चेक करने पर उपभोक्ता का मीटर पूरा जला पाया गया एवं एमआरआई पोर्ट की नीचे मीटर बॉडी में होल पाया गया। मीटर पैक कर पंचनामा बनाया गया। माय लॉर्ड इसको यदि हम पूरा एक्सेप्टेड टू बी ट्रू जो है तो भी जो है वो इस जजमेंट के मुताबिक जगन्नाथ सिंह वर्सेस बीएस रामास्वामी 1966 SCR 885 एंड अदर ग्राउंड्स रेज्ड उसके हिसाब से यदि यह है कि कंक्लूजन अराइव्ड रिगार्डिंग थेफ्ट और रीजन द बेसिस ऑफ होल इन द मीटर बॉडी इज कॉन्ट्रारी टू द लीगल प्रोविजन। कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं होता सर माय लॉर्ड। और हमने जी नोटिस दे दें सामने वाले को। माय लॉर्ड नोटिस टू द रिस्पोंडेंट्स ऑन पेमेंट ऑफ पीएफ by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. My lord, जी क्या? List for hearing in the week commencing 21 अगस्त 2023। माय लॉर्ड हमने इसमें जो असेसमेंट था उसको भी आप चैलेंज किया था। वो आपने आपके माय लॉर्ड के ऑर्डर से जो है वो उसमें नोटिस जारी हुआ। आज 2 साल हो गया उस पर कोई रिप्लाई फाइल नहीं हुआ आज तक माय लॉर्ड। उसको लिस्ट दिस केस अलोंग विद WP लिख के दे दीजिए। 27/148 माय लॉर्ड। 27/148 बटे 2000 27/148 बटे लिख के दे दीजिएगा आप। 2021 माय लॉर्ड। 2021 जी माय लॉर्ड। माय लॉर्ड टिल दैट ट्रायल जो इंट्रीम नहीं ये सब Lordship, in the previous matter, 135, I was not clear with the order. Actually, I had specially requested the matter before the CJ and gotten it listed. ठीक है। So, Lordship, may it is for amendment today. I have allowed you to carry out the amendment. Let amendment be carried out. Lordship, then hear me on interim relief. No, because there's an urgency in the matter. Lordship, it's a public trust which has been dissolved. Please wait. चलिए। Lordship may give a specific date and only request that. No, sorry. चलिए next case. My lord, this is appeal by claimants, my lord. On 2 grounds, award of tribunal has been challenged. Firstly, insurance company has been exonerated on the ground that the driver of offending vehicle was not having valid driving license, my lord. And principle of pay and recover has also not been applied. And the second ground is that, my lord, contributory negligence finding has been given by the tribunal, whereas there is no evidence to that effect. If my lord kindly see issue number 2 that has been decided. In issue number 2, my lord, that has been decided in from para 11 onwards. This is with regard to license, my lord. पैरा 11 आवेदकगण की ओर से प्रश्नधीन वाहन डंपर की बीमा पॉलिसी पेश की गई है, जिसमें बीमा कंपनी ने प्रदेश D1 के रूप में भी स्वीकार भी किया है। अर्थात दुर्घटना दिनांक को प्रश्नधीन वाहन डंपर अनावेदक क्रमांक 3 के यहाँ बीमित था, लेकिन बीमा कंपनी की ओर से तर्क दिया गया कि बीमा कंपनी की आज्ञा शर्त यह थी कि वाहन का चालन वैध एवं प्रभावी लाइसेंस के तहत किया जावे। आवेदक की ओर से प्रश्नाधीन वाहन डंपर क्रमांक 100 के चालक संतोष तिर्की का कोई लाइसेंस अभिलेख पर पेश नहीं किया गया। बर्डन हैज बीन शिफ्टेड ऑन द क्लेमेंट टू प्रोड्यूस। आवेदक द्वारा प्रस्तुत जब्ती पत्रक प्रदर्शित रिकवर हो जाएगा बस, ठीक है। और क्या होगा इसमें? माय लॉर्ड, आई हैव फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर 4127 प्रोड्यूसिंग द लाइसेंस ऑफ द ड्राइवर। ठीक है, दीजिएगा। लेट copy of the application under order. My lord, I am ready for pay and recover, my lord. No. Copy has already been supplied to them. रुक जाइए अब। Order 41 Rule 27 being IA number
14091 of 22 be supplied to the learned counsel for the respondent insurance company. आप अपीयर हो रही है इंश्योरेंस कंपनी के लिए? Yes. Insurance company is directed to obtain verification of the driving license filed by the claimant along with this application from the concerned RTO. Full stop. Let this verification be carried out within a period of 4 weeks. List after 4 weeks. सभ्यता यादव week commencing सभ्यता यादव possible. List in the week commencing 28. 4 सितंबर 2023. I am obliged. May it please your lordship, this is a fresh matter. This miscellaneous petition has been filed challenging the order dated 15/6/2023, which was passed by the learned presiding officer of the family court, Damoh, whereby to the two applications of the petitioners, firstly, to send the matter for mediation and to supply us with the copy of the application was rejected, and our right to file a written submission was also denied. My lord, briefly, I'll just explain the facts, my lord. My lord, the petitioner is residing in Chennai, which is Chennai, which is 1500 kilometers away from Damoh. The matter was initially fixed for the personal appearance on if annexure P3 may be seen. For the personal appearance of the petitioner, which he complied, and then the matter was sent for the mediation. आवेदिका सहित श्री हेमंत चौरसिया अधिवक्ता आवेदक द्वारा श्री सूरज वाजपेयी जबलपुर अधिवक्ता प्रकरण my lord, I'm sorry, the P4, the P3 पढ़ने एक सेकंड रुकिएगा. So you were represented before the court on 9/2/23. अनावेदक की ओर से अधिवक्ता सूरज वाजपेयी ने उपस्थिति ज्ञापन पेश किया. प्रकरण में संलग्न किया गया. साथ ही धारा 309 दंड प्रक्रिया संहिता का आवेदन पेश किया, जिसमें अनावेदक की बहन के यहाँ प्रसव होने के कारण अनावेदक का वहां जाना बताया गया. अनावेदक अधिवक्ता द्वारा आगामी पेशी दिनांक अप्रैल के प्रथम सप्ताह में नियत किए जाने का निवेदन किया गया. आवेदिका अधिवक्ता द्वारा आगामी पेशी दिनांक में नियत किए जाने का विरोध प्रकट किया गया. आवेदिका अधिवक्ता के विरोध को देखते हुए अनावेदक अधिवक्ता का निवेदन अस्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण 24/3/2023 को सुलह वार्ता के लिए नियत किया जाता है. And on the next date of hearing on 24/3, the petitioner was present. पढ़िए से आवेदिका स्वयं उपस्थित, अनावेदक स्वयं उपस्थित. उपस्थिति नियत है. पक्षकार उपस्थित, दोनों पक्षों के मध्य सुलह वार्ता कराई गई जो असफल रही. My lord, उसके बाद फिर ये मीडिएशन सेंटर में एक सेकंड. सुलह वार्ता के दौरान पक्षकारों के मध्य ऐसे तथ्य प्रकट होते हैं कि पक्षकारों को मीडिएशन की सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए. पक्षकारों से पूछे जाने पर उन्होंने मीडिएशन के द्वारा प्रकरण के निपटारे में सहमति प्रदान की. तब पक्षकारों के निवेदन पर प्रकरण धारा 89B सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत यह प्रकरण सुलह वार्ता हेतु मीडिएशन सेंटर जिला विधिक केंद्र सेवा प्राधिकरण भेजा जाता है. रेफरल आदेश में इस संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जावे कि पक्षकारों के मध्य मेल मिलाप कराया जा सकता है या नहीं तथा करा दिया गया है या नहीं. अनावेदक द्वारा निवेदन किया गया कि वह चेन्नई में जॉब करता है, इस कारण वह मीडिएशन हेतु जल्दी उपस्थित नहीं हो सकता है. वह मई में उपस्थित हो सकता है. अतः अनावेदक द्वारा मीडिएशन हेतु इतना का मेल मिलाप की कार्रवाई तो 8/5/2023 को डेट फिक्स कर दी गई. फिर 8/5 को क्या हुआ? 8/5 को he was not present, and on the next date that was given by the honorable by the learned family court was 2/6. On that date also the petitioner was not 9/5 को आवेदिका द्वारा इतना अधिवक्ता अनावेदक और उसके अधिवक्ता अनुपस्थित. प्रकरण मेल मिलाप की कार्रवाई प्रतिवेदन हेतु नियत है. मीडिएशन प्रतिवेदन अप्राप्त. कार्रवाई की मीडिएशन 2/6. आवेदिका सहित इतना अनावेदक की ओर से इतना प्रकरण आज मीडिएशन के प्रतिवेदन हेतु नियत है. आवेदिका के अधिवक्ता का कहना है कि पूर्व दिनांक के प्रकरण में अनावेदक ने 3 माह की तारीख लेकर 8 मई को मीडिएशन की नियत कराई थी, परंतु अनावेदक जानबूझकर आवेदिका को परेशान करने के लिए मीडिएशन हेतु उपस्थित नहीं हुआ. अनावेदक जानबूझकर प्रकरण को लंबित रखना चाहता है ताकि अनावेदिका को भरण पोषण की राशि प्राप्त नहीं हो सके. जवाब हेतु नियत किया जावे. न्यायालय द्वारा विचार किया गया. 24/3 को अनावेदक ने न्यायालय में निवेदन किया था कि वो चेन्नई में नौकरी करता है, लंबी तारीख दी जाए. उसके निवेदन पर दी गई.
बावजूद अनावेदक मीडिएशन कार्रवाई में उपस्थित नहीं है और न ही आज दिनांक कोई न्यायालय में उपस्थित है। प्रकरण को मूल आवेदन के जवाब हेतु नियत किया जाता है। प्रकरण जवाब दावा हेतु 15/6 जी and on 15/6 अनावेदक और उसके अधिवक्ता को तत्काल लाए जाने पर उपस्थित नहीं हुए। आवेदिका सहित हेमंत चौरसिया अधिवक्ता अनावेदक द्वारा इतना अधिवक्ता आपके अधिवक्ता इतने सिंसियर क्यों है? जब चाहे तब अनुपस्थित हो जाते हैं, जब चाहे तब उपस्थित हो जाते हैं। I had Why don't you take action against him before the bar council? प्रकरण में आज अनावेदक की उसे जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि प्रकरण आज जवाब दावा हेतु नियत है। अनावेदक ने एक आवेदन मूल आवेदन की प्रति और दस्तावेज दिलाए जाने के संबंध में प्रस्तुत किया। आवेदन की प्रतिलिपि आवेदिका अधिवक्ता को दी गई। आवेदिका अधिवक्ता का कहना है कि प्रकरण इस न्यायालय में 16/11/22 से लंबित है और पिछली किसी भी पेशी पर अनावेदक ने आवेदन की प्रति और दस्तावेज की मांग नहीं की, क्योंकि पूर्व में ही अनावेदक को मूल आवेदन और दस्तावेज की प्रति दी जा चुकी है। न्यायालय द्वारा विचार किया गया, अनावेदक ने पूर्व में किसी भी पेशी पर आवेदन के दस्तावेज की मांग नहीं की। प्रकरण जवाब दावा हेतु नियत है और इसी स्तर पे, जबकि आवेदिका के अधिवक्ता कहना है कि पूर्व में ठीक तो क्या गलत है इसमें? Malad, I would just like to refer to the Family Court Act under Section 9(2). इसको फिर आपको बहस करनी तो आइएगा, टाइम नहीं है। Malad, my only submission is that due to paucity of time, since there is possibility of this case taking longer time, list after 4 weeks. My lord, I just have one request. The matter is listed on 8th August before the Learned Family Court. If the matter is conducted and we are not allowed to file a written submission, which has already been denied, I'll grant you time subject to payment of cost to file written statement within 7 days from today. But this my lord, my humble submission is before filing the written submission, we have moved an application for mediation. The both that application is already, you failed to appear. Sorry. I'll on not show that any, day people no, I'll not show any indulgence in that. I grant you time subject to payment of cost to file reply, and let reply be filed within 7 days. My lord, I would like to submit the. फिर सुनना है तो अभी टाइम नहीं है, मेंशन में नहीं सुन पाऊंगा, यही बता रहा हूँ आपको। But my submission is that this matter may be listed tomorrow, this week. No, it is not possible. देखिएगा। My lord, I'm sorry. Due to paucity of time, since arguments are likely to take longer time, and this court, and I have a important meeting to attend, case is adjourned, list after 3 weeks. चलिए। आपको जो चीज अच्छी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो आपकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपको एडवोकेसी सिखाई नहीं गई है। आपको बोल रहे हैं आपको टाइम देते हैं जवाब दावा फाइल करने के लिए, आप जवाब दावा फाइल करिए कॉस्ट के साथ में 8 के पहले। When advocate is not interested in the welfare of the client but has other motives, then my interest is with the client. That's why I'm asking for the mediation, which is under the law. I offered you time to file written statement subject to payment of cost. This conduct which has come on record cannot allow you to go scot-free. And after having failed to attend the mediation, and the girl has refused to attend mediation, we cannot force mediation on her as per your request. But it's sorry, please. Now we'll hear you afterwards. इनका नाम लिख लीजिएगा। क्या शुभ नाम है आपका? सूरज बाजपेयी। हाँ, लिख लीजिएगा सूरज बाजपेयी फॉर द पिटिशनर। कमिश्नर के ऑर्डर में पेज 77 ऑर्डर मैं लिखा दूंगा इसमें। पेज 27। जी मैडम, क्या है ये? सब हमने कमिश्नर का ऑर्डर चैलेंज किया है। एनेक्सर P1 पेज 27 में काइंडली बी सीन पेज 20 लास्ट पैराग्राफ। इसमें कमिश्नर ने ये मानते हुए कि जो सिविल सूट है पार्टीशन को चैलेंज करते हुए पेश किया गया था, वो रजिस्टर्ड पार्टीशन, वो सिविल सूट डिक्री हुआ है। सब 4th 5वीं लाइन देख लें। कौशल प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत व्यवहारवाद पारित डिक्री एवं निर्णय दिनांक 20/12/18 को पंजीकृत विभाजन दिनांक 8/9/10 अवैध व शून्य होकर वादी पर बंधनकारी नहीं होता, इस आशय की डिक्री पारित की गई। जबकि सर ये डिक्री जो है पारित नहीं, ये सूट डिसमिस हुआ है। योर लॉर्डशिप में काइंडली टर्न टू पेज 62।
ठीक है. Issue notice to the respondents on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. List in the week commencing 28 अगस्त 2023. On the question of interim leave also, not Interim leave क्या है? notices. हाँ, notice issue notice on IR also. चल. My lord, the petitioner company being a sick unit applied for a loan got registered before PIFR. So the company applied for a loan from MP State Industrial Development for expansion and reconstruction of the company. The petitioner company. Can we direct them to withdraw their legal notice? You are entitled to file reply to the legal notice. We did. फिर उसके बाद क्या बचा? And we need to close the account and return back our collaterals. तो इस फाइनेंशियल मैटर्स में हाई कोर्ट क्या करेगा? इंटेलिजेंस क्या दिखाएगा बताइए? My lord, the entire loan has been repaid. My lords, read P1. P1, yes. It is P1, page number 13. Yes. They said that paragraph number 2. In this regard, it has been decided by us that your company should pay the balance due by advance check. Therefore, in order to consider your request, please remit postage check for a balance of 1056. P2, we have given the entire loan of 10,56,000. Right. P3. Now they say it's from a record a sum of 56,000. 0.056 lakhs is 56,000 towards installment principal and the current interest due. P4, we have paid the remaining 56,000. And the check was passed on 6/12/2006. And P5, they again ordered us to pay 1.31 lakhs. Issue notice to the respondents on payment of PF by registered AD post to show cause that when demand notice annexure P1 was issued in favor of the petitioner on 26/6/2001 and petitioner had deposited post-dated checks on 27/6/2001, which according to the petitioner have been cleared and credited to the accounts of the respondents. Then again a notice was issued on 28/1/2004 demanding balance sum of rupees 0.56 lakhs, which too was paid by the petitioner on 30/10/2006 annexure P4. According to the petitioner, even that outstanding amount was clear. Therefore, there was no occasion for the respondents to have issued notice annexure P5, especially looking to the fact that petitioner's unit is a sick unit. My lord. And the matter is pending before BIFR, and it is already. BIFR तो wind up हो गया. And it is by the company's company law board. Yeah, company law. Even company law board, it is pending nowhere. The company is not working as well. Company is closed. Technically, it is not closed on papers, but no working is going on. ठीक है. Company law board मत लिखना. Full stop. Nothing. कुछ नहीं. Full stop. Let reply be filed by the respondent within 2 weeks as to the averments made by the petitioner. Notice 3 days PF by registered by both modes, returnable 3 weeks, list in the week commencing 21 अगस्त 2023. कर दिया दे दीजिएगा. मैंने दे दीजिए उनको, दे दीजिएगा जो स्टेनो है उनको दे दीजिएगा. उनको बता देता हूँ. मतलब आई एम रिक्वेस्टिंग आइटम नंबर 27 पे विड्रा हो गया है. रिस्पोंडेंट नंबर 7 की तरफ से प्रेजेंट मार्क करना है. साइन नहीं हुए होंगे तो कर दिया ना. I am requesting item 123 may please be listed and next week. अरे आ जाएगा. नहीं आते आ जाए.